by now know that he wore many hats. He was a physicist, botanist, and he wrote science. Relevant to modern science, let us talk about that. You know, I had a very vague idea about Sir J.C. Bose. I had a vague idea that he proved that plants had feelings, plants have feelings. So when I was reading about him, because I was preparing for this oral presentation, I was reading about him, I was absolutely amazed. I was so inspired. You know, I became professor 5 days back, and a very cynical one at that, because you know, lack of space, funding, and red tapeism, so many problems are, we are facing so many problems. So a disheartened and disillusioned professor. But when I was reading about him, I was so inspired that here is a man who comes from abroad, a well-trained scientist, a brilliant mind, and he has to face racial discrimination here, but he doesn't give up. He doesn't get disheartened, he doesn't get disillusioned. He works for 3 years without taking his salary and you know, spending from his own pocket for his research, and in that sense, you know, he's a true satyagrahi. I am very I really am very impressed with this thing that you all have included, the organizers have included this satyagrahi name in the title of your conference. That is very good, because we scientists are actually, we should be satyagrahis. We are seekers of the truth, right? So we should be, हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए. So he was a true scientist in that sense, and this is something that I've learned from him. And so I am standing in front of you all. I am the example of his contemporary relevance, because he is relevant to us. We have not gone abroad, and sometimes you think that was it a mistake or all that, and then when you read about scientists like J.C. Bose, P.C. Ray, then that inspires you and fills your heart with hope and pride that yes, we should also do something for our country. Next thing that I would say we can learn from his life, and in terms for modern like Indian science scenario, is the concept of original thought. And you know what, I have to say this, I hate saying this, but see, India tops in the list of corresponding authors that are publishing in predatory journals, right? 27% of our corresponding authors are publishing in predatory journals. Now that is not something to be proud of, and original thought and is very important, and I'm not passing judgments on anyone. In fact, my student comes to me and says, ma'am, इसमें एक moiety change कर देंगे तो एक और paper publish हो जाएगा. This kind of thinking is plaguing us today, plaguing Indian science, and we must do something about that, and we should take inspiration. Scientists like, you know, we should look at our scientific heritage for inspiration, and the fact that at that time he could think that, you know, plants have feelings, I will prove this, and he built an instrument, crescograph. That was the example of original thought. So we should not be swayed with this publish or perish phenomena, and we should strive for you know, thinking something originally, because it is my belief, see, science is a global phenomena, that's right, but it's my belief that the problems of India, they can be solved. Indian scientists have to put their brilliant minds, and you know, they have to really work hard for solving Indian problems like scarcity of food, scarcity of water, or pollution is a big problem. So for that we have to look inwards, we have to be proud of our cultural, our scientific heritage, and then we should try to find answers. That won't be possible if we just follow the herd mentality. So we must take inspiration from people like J.C. Bose. He was very critical of patent system. His like under peer pressure he filed for a patent, but then he didn't follow that up. So he was very critical of it. He said knowledge should be free for all. So that kind of altruism is what is needed in today's science, especially with relevance to India also. Yeah, so this is also very important. I am not saying that every scientist can be a very good science communicator, but we must try to you know, engage our young audience. This is also a sad reality that the interest of students in pursuing higher education is dwindling, and that is also one of the worries of Indian government. So how to do that?
That is our responsibility, the responsibility of scientists. And here also, Acharya J.C. Bose is very relevant. He is known as the father of Indian Bengali fiction. So he wrote this story, Nirudeshar Kahini, and all these Palatak Tufan. So these kind of things, we should also, if we have a knack of this, I'm not saying every scientist can do this, but we must, try to develop this, and we must try to, in our classes, otherwise also, we must try to popularize science and be good at science communication. This is very relevant to modern Indian science. Plant science. He proved that plants have feelings. Now, this is slightly maybe you all may find it very emotional, but the thing is, yes, plants have feelings, and this is very, very contemporary, because if we do not save our plants, if we do not, we can't save our earth. And this is the need of the hour to understand the relationship between man and nature. He was really rooted in nature, prakriti ka, nature ka. J.C. Bose was very inspired from it, and he was deeply rooted in that. So we must also take inspiration from that. And for environment, we have to do something about it. We are living in one of the pollutest city of the world. So we have to, arise compassion for plants, for nature as such, and that is also one of the legacy of J.C. Bose that we can learn from. One thing, I may be not politically correct to say this, but we have to see scientists like P.C. Ray, scientists like J.C. Bose, they were true patriots, and they were not, they were not jingoistic, कि सब कुछ ancient technology में everything is good and all that. They were deeply rooted in their ancient philosophy. For example, J.C. Bose was his favorite character from Mahabharata was Karna, and all those things. But the thing is, there is a difference between patriotism and jingoism, and science should steer clear from this. For example, I hate saying this, but people are publishing now Gomutra, so many research projects on that. I'm not saying it is not important, and maybe there are some medicinal properties, but are we really, everyone is going, there were so many research projects on it, so is it really that important, or are we just going, as they say, jidhar ki hawa chali udhar ke hi ho liye? A scientist cannot be that. A scientist has to have conviction. So, so you should strive for that. So that real patriotism you should learn from scientists like J.C. Bose, and we should avoid jingoism. So these are the references, and contemporary relevance of J.C. Bose in his own words. He says, but the past shall be reborn in a yet nobler future. So let us strive for that nobler future. Thank you so much. Hello. Thank you, ma'am, for finishing in time. Thank you and so much. This now talk is open for question, comment from the students. Yes, you have a comment? Smriti, very good presentation. Thank actually. you so much, sir. And the way you have made is also pretty innovative, I would say. You have, this I asked yesterday also. People are writing and, I mean, reading and just writing without going into detail. You have also written that he also had interest in archaeology. So yes, yesterday you asked this Yeah, question, and I also looked for the answer. Yeah. I could not find it. I really looked for it. That how was, like there is nothing on Google, and I did not read any book on his jeevni, so I don't know. But you asked this, Yeah. and this I wanted to remove this, but then I thought it is written, so I should. That was not morally correct to remove it. That is why I did not remove it. But I know you asked, and I also looked for it. Could you please tell us, sir? No, I also don't know. That's what I am asking. That's what I am asking. Yeah, I really looked for it. If anyone knows about this, so they can enlighten. Hello, Dr. Smriti. It's a very nice presentation, I Thank would you so say. much, ma'am. I just want to know that you have just made a comment that as an Indian researcher, we should think of some, way where the research paper can come in Indian-based journals, and we will not, run after filing one paper after the other. So, in one or two lines, can you sum up what is your how can it be achieved? Ma'am, I think there is
self-regulation is very important in that. Because, say you are my friend and you are publishing in a predatory journal and I am on your promotion committee and मैं आंखें मूंद रही हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Personally, then it is not very fair to people who are who are really publishing in good journals. And this is not possible that being in this scientific community, you don't know that that particular person is publishing in predatory journals. So एक तो होता है कि पता ही नहीं था, ये भी होता है शुरू में हम publish कर सकते हैं because हमें पता नहीं था कि that is a predatory journal. But once we know it, so these things will come from self-regulation and we must discourage them. कुछ होना चाहिए because that is very discouraging for a scientist like me also, for you also, that you work very hard, you publish in a good journal and same marks are given to the other person also. So maybe some kind of regulation should be there. We have 27% of our corresponding authors in predatory journals. Yeah, of course, absolutely a very nice idea. I hope through online streaming, somebody in the higher authorities will listen to it and form some regulation on it. Yeah, I very also nice. hope that. Thank you. Acha, this slide in particular, this, is it the reflection of the previous slide? It is just You are standing with your I am parents. thanking all of you and I am also thanking all those people who are responsible for me being here, and that's my college, Miranda House, my daughters, my husband, my parents, so that is why, and all of you. So a big thank you slide. Rebirth, huh? Your parents and then. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring talk. And what ma'am said, I absolutely agree with her, that self-control is important. That is, we have to have that kind of passion for science, that we do good work. Publishing paper is one thing that is important as well, but still, just for the sake of publishing, we do something crap and we just try to publish. That's not the idea. The idea what J.C. Bose did is, which inspires us, that you do some original work, you do concentrate on your work, publication can come, it will follow. If the work is good, definitely you will have publications. So that we should not, from the beginning only, we should concentrate on the subject matter, on the depth of the subject and try to do something innovative, something new, something productive for the world as well as our own country. Now I'll go for the next speaker. And next speaker is Dr. Gauri Mishra. She will be talking about multifaceted science visionary Sir J.C. Bose, past and present. So Dr. Gauri Mishra, please. Am I audible? Hello, hello. Okay, thank you. Change करके देख लें एक बार. इससे change होगा. नमस्कार. सबसे पहले मैं आयोजकों का और विभाग का हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि मुझे ये अवसर दिया गया, एक सूर्य को दिया दिखाने समान, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगी. कल से हमने बहुत सारे प्रबुद्ध जनों को सुना, बहुत सारे जो आचार्य बसु के जो व्यक्तित्व हैं, उनके जो योगदान है उनके बारे में सुना. तो मैं भी अब अपना एक छोटा सा प्रयास करूंगी कि कुछ ऐसे पहलुओं को छू पाऊं जो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, जो आपको उनकी वैज्ञानिक विचारधारा से अवगत कराएं. इसी श्रृंखला में आई एम गोइंग टू टेक अप द मल्टीफेसेटेड साइंस विजनरी सर बोस, हिज पास्ट एंड द प्रेजेंट. So as you all know that he has been a pioneer scientist in the field of not only radio and microwave optics but also in the field of plant physiology and also Bengali science fiction. Although आपको ये पता है कि he was not very much in favor of patenting the things. Reason, he had this Vedantic outlook to his scientific philosophy. उन्होंने बहुत सारे, यही एक रीज़न था कि उन्होंने फिजिक्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब विभिन्न साइंटिफिक डोमेन्स में एक एकत्व देखा.
Still, to his credit goes to one of the first patent on detection for electrical disturbances that was granted to him on 29th March 1904. He is also considered as the father of Bengali science fiction, where his short story Nirudesh Kahani, the story of the missing one, which was later on expanded to his collection of book Abhyakta with a new title Platak Tufan. So there was his one statement during the opening ceremony of this very famous institute in Kolkata. He said, "Science is neither of the East nor of the West, but rather international in universality," and that is very true. And that is not was his statement, that is his scientific life, his works that speaks and reciprocates in this statement. Now this is one thing. What was his basic scientific philosophy? So Acharya Basu's scientific philosophy was very much indeed Vedantic and was very much indeed inspired by the Indian Vedantic culture. Yesterday we have heard उनके ऊपर अपने माँ बाप, अपने आचार्यों, the father he met in the college, इन सब का बहुत प्रभाव था. So basically when he started his research work and he presented his work to the international community, he could very well show that there is a unanimity, there is a similarity between the living and the non-living. When you talk of the living, he could show that the response curves of the organic material such as muscles and plant tissues and the response curves of the inorganic materials, iron oxide and tin, all these, the response curves of both the living and the non-living material, when they are subjected to the external stimuli of stress or strain, they actually respond in a similar fashion. Here I have taken in the blue, I have taken the excerpt from one of the chapter from the life of a yogic from Yoganand Acharya book. He has, I am just replicating his words. I have shown you this evening autographic records of the history of stress and strain in the living and non-living. How similar are the writings? So similar that you cannot tell one apart from the other. Among such phenomena, how can we draw a line of demarcation and say here the physical ends and there the physiological begins? Very true. You cannot say, okay, this is the physical dimension and your physics research is over here, and you cannot venture into the biological domain. Such absolute barriers do not exist actually. It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one face of a pervading unity that bears within it all things that I understand for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges 30 centuries ago. His address, this actually shows the unanimity, the multifaceted nature, his basic scientific philosophy of interdisciplinarity. That interdisciplinarity still holds true today. If you want, you children are there, you have a whole huge span of career lying ahead. Don't restrict to any particular domain. पढ़ना, सीखना, प्रत्येक दिन का सुबह से शाम तक हर चीज हमें सिखा सकती है, and that is what आचार्य बोस believed in. जो उनके माता पिता ने 30 साल पहले, that he has mentioned 30 साल पहले जो गंगा के किनारे उनके माता पिता ने जो एकत्व सिखाया, वो एकत्व उन्होंने अपनी वैज्ञानिक विचारधारा का समन्वय किया. उस एकत्व को उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग को साइंटिफिक बेसिस के बेस पे एक्सप्लोर किया. एंड he has established they who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else. जो भी व्यक्ति परिवर्तनशील ब्रह्मांड में एकत्व को देखता है, शाश्वत सत्य उसी का होता है. आप हर चीज में जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं, वेदर इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, you try to correlate them practically to what you are doing, to what you perceive. If you have that analytical power,
if you have that perception, if you have that attention to detail, certainly you can draw the logical conclusions. You can understand the science behind that. That attention to detail, that analysis, that perception is what is science made up of. That interdisciplinarity which Acharya Basu has visualized so many years back, it holds more relevance in today's world. You want to publish good papers? Good enough. But that interdisciplinary actually adds value to your publication. That interdisciplinarity adds potential to your work, to your scientific endeavors. 2 minutes more, ma'am. Again, his discourse, when he addressed in the opening lecture of the Bose Institute, he has emphasized, there was a time when Paramanand Yogi ji met him, and he was really amazed, and he said, yes, his experiments are still relevant to, today, whether it is the establishment of the ascent of step or his other theories. Even today, if they are relevant because the effect of fertilizers on plant, effect of medicines on plants and animals, all that can be studied even today. So all his experiments, all his theories that he has perceived at that time are relevant in today's world, where you can understand the effect of different chemicals, fertilizers on plants, animals and living systems. This is a brief that has already been covered yesterday. He has an extensive plethora of work he has done on plant physiology, where he has developed this Cresco graph, and this was the one famous theory that he has proposed, vital force theory or the pulsation theory, where he could actually capture after giving the external stimulus, he could actually capture the sensations in plants using the galvanometer. And thus he was the pioneer not only in the plant physiology, in the wireless technology, also he was the first who could establish the p-type and n-type semiconductors. Thus, I will conclude, this was a snapshot how he has developed. The basic difference between his Mercury coherer and which the Marconi has produced, the only difference was between the U-tube that was replaced by the straight tube. The only thing is that Acharya Basu believed in the universality. He never wanted to exploit his experimental outcomes in a commercial way. That was his Vedantic philosophy. And thus, his very good friend Rabindranath Tagore ji has spoken a few lines in the form of a poem in this, which has been translated from Bengali, where he has addressed him as a sant. Therefore, I would like to conclude over here. Basic considerations, learnings that you can have from his life is that he considers disciplinary boundaries between the sciences to be superfluous, and again he contextualizes this interdisciplinary approach in science in the context of Vedantic Hinduism, more specifically the monastic belief, unity in all things. Thank you so much. Thank you to everyone. Thank you very much, madam. Very inspiring talk. Thank you so much. Now I ask the students if they have any query, question, comment, or anything. Yes. Very nice presentation, Dr. Gauri. Thank you so much. I would like to ask only one question. You mentioned in the slide number 2 about the autographs of living and non-living. Yes. So is it taken from the work of J.C. Bose only? Yes, I have read 2 papers. One I have given in one of the references. There is a recent paper also who has captured and the entire work of Professor J.C. Bose, where exactly this has been mentioned. Yeah. So can you elaborate this point? The first point, ma'am? Yeah. Okay. Autographic records of the history of stress and strain in the living and non-living. So, living and non-living, how can the stress and strain be same? Okay. Actually, when he performed the experiments, he realized that when
in the plants, when the stress was given, when he has inserted the needle in the parenchyma cortex cells, and there was this peristaltic movement. He compared that peristaltic movement similar to the movement like in the circulatory system of the animal system. Actually, I think there is a small mistake. You should not have written living and non-living, because plants are also living. Yes. So No, non-living. that time, yeah, plants were considered as non-living. maybe. Non-living here, sir, he has mentioned, this has Achha, been he exactly proved that replicated on it is the living. tin. Okay. Tin and metal, he has done some experiments where he has used that stress and understood how the this ink was behaving in Yes, a yes. peristaltic No, I understand. movement. I know so that. this here non-living represents the experiments on Yeah, tin. what Pankaj has said is absolutely correct. I think in those days, plants were not considered that much as living. They were like non-living objects. So it was J.C. Bose who pioneered this work, and he proved to the world that indeed plants are living, and they have symptoms and all mechanisms which take place in the animal kingdom. So that was really a very, very good work to show the world that we should treat plants equally, respectably, as we treat all other animal kingdom. And Now- also, sir, he did worked on tin and other metals also, where he tried to bring the similarity with the plant system. Yes, those are non-living, yeah. Yeah. Tin and okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Next speaker is, I think you all know her by now, Dr. Anu Singh. She is an excellent orator and communicator and a very active member of Vigyan Bharati. And she will be speaking on Bose, who proved science fiction wasn't a white man's game. So I now request Dr. Anu Singh to give her presentation. आप शुरू कीजिए। हाँ, मेरी पीपीटी होगी इसमें। चेंज कैसे करना है? अनु। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले विद द परमिशन ऑफ चेयर 2 मिनट लेना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। हमारे बीच में जो आज ये सारे विद्यार्थी मौजूद हैं, ये कल नहीं थे, ये आज नए विद्यार्थी हैं जो दूसरे स्कूल से आए हैं, इसलिए ये 2 मिनट का समय मैं आपसे अलग ले रही हूँ। तो ये जो हमारे बीच में विद्यार्थी हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या कार्यक्रम हो रहा है जिसको हम सुन रहे हैं। आप ये पढ़ पा रहे हैं और आपने सुना भी कि हम यहाँ पे आचार्य जगदीश चंद्र बोस के विषय में बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम पिछले 1 वर्ष से स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष स्वतंत्रता का। हाँ जी, तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और याद करते हैं स्वतंत्रता के सेनानियों को, तो हमें लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत सारे नाम याद आते हैं, लेकिन अक्सर हमें कोई वैज्ञानिक या कोई प्रोफेसर का नाम याद नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे वैज्ञानिकों ने या हमारे सोशल एंड साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस स्वतंत्रता के महासंग्राम में। उनको याद करने के लिए विज्ञान भारती ने एक ही ऐसा कार्यक्रम बनाया कि हम हमारे वो सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जबकि भारत परतंत्र था, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमें वो महत्व नहीं मिल रहा था और ये कहा गया था कि भारतीयों को ना तो विज्ञान की समझ है ना वो विज्ञान कर सकते हैं। ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने ऐसे विज्ञान को करके दिखाया जिसने विश्व पटल पर भारत का और भारत के वैज्ञानिकों का नाम किया। तो कल 30 नवंबर को आचार्य सर जगदीश चंद्र बोस जी की 164वीं वर्षगांठ थी और आज़ादी के जो हम ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसमें कल के दिन को हमने उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया और हमने उन सभी बातों को यहाँ पे समन्वय करने का प्रयास किया आप लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, कि वो इस चीज़ को, इस बात को समझ सकें कि स्वतंत्रता पाने में विज्ञान ने और वैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया है। आप आज अगर विज्ञान के विषय में कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं,
तो वो कल हमारे देश को, हम लोगों को बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे परतंत्र भारत में किए हुए विज्ञान ने स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारत था उसको आगे बढ़ने में और अपना स्थान बनाने में विश्व में बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो मैं आशा करती हूँ इसके बाद अब से लेके और जब तक आप इस सभागार में बैठे हैं, जो भी विचार सुनेंगे वो शायद आप तक ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों हम आचार्य जी को सुन रहे हैं, क्यों उनके बारे में जान रहे हैं और हम उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक नमन कर रहे हैं। वैज्ञानिक वो थे, ये आप सब जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये सोच, ये विचार आप यहाँ से लेके जाएंगे। धन्यवाद। अब हम प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। अब आप मेरा समय काउंट कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टाइटल है बोस हु प्रूव्ड साइंस फिक्शन वाज़न्ट अ व्हाइट मैन्स गेम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिक्स करके अपनी बात कहूँगी। ये जो टाइटल और ये जो प्रेजेंटेशन है, खासतौर से मैंने जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ये साबित किया कि जो साइंस फिक्शन लिखना था वो व्हाइट मैन्स गेम सिर्फ नहीं था। ये आगे क्यों नहीं चल रहा? इधर चलाना है। तो हम यहाँ बहुत सारी बातों को नहीं लेंगे, हम एक मुख्य बात को लेके चलेंगे कि उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन, भारतीय साइंस फिक्शन का फादर कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? जब भी कोई खोज होती है तो ऐसा नहीं होता वो किसी एक दिन में हो जाती है। किसी भी विषय में हो, वो एक दिन में नहीं हो जाती, उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक मुख्य व्यक्ति होता है जो उसमें उतना इंपॉर्टेंट एक रोल निभाता है कि उसके नाम पे हम उस खोज को या उस बात को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि भारत में आचार्य जी ने जब कहानी लिखी, ये साइंस फिक्शन लिखी, तो इससे पहले किसी ने कहानी नहीं लिखी थी। कहानियां लिखी गई थी, लेकिन किया जितना इससे लोग, आम जनता जुड़ी और जितना सही विज्ञान इसमें इस्तेमाल किया गया था उतना उससे पहले की कहानियों में नहीं किया गया था। तो ये कहानी क्या थी? ये कहानी का बैकग्राउंड है निरुद्देश्वर काहिनी। एक हेयर ऑयल कंपनी थी कुंतलिन केसरी करके, और उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए, अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जैसे हम लोग कंपटीशन करते हैं, एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, जिसका क्राइटेरिया था कि उनका जो हेयर ऑयल है, जो प्रोडक्ट है, उसका नाम उसमें आना चाहिए। तो इस कहानी का जो कंपटीशन था उसमें आचार्य जी ने पार्टिसिपेट किया और एक कहानी लिखी। उस कहानी का नाम था निरुद्देश्वर कहानी। इस कहानी में उन्होंने क्या बताया, क्या इसके पीछे साइंस थी, हम यहाँ पे देखेंगे। एक साइंटिफिक मिस्ट्री उन्होंने इस कहानी में बताई। जैसे कि कलकत्ता बे ऑफ बंगाल के साइड में है, वहाँ अक्सर साइक्लोन यानी चक्रवात आते रहते हैं, बड़ी भारी समस्या उससे होती है। तो एक चक्रवात का अंदेशा था कि 2 दिन में कलकत्ता को एक चक्रवात छूने वाला है और जिससे बहुत भारी डैमेज होगा, लेकिन अचानक वो चक्रवात गायब हो गया, वो आया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? खबर पहुंची ब्रिटिश राजमहलों तक भी कि एक भयानक तूफान आने वाला है हार्ट ऑफ ब्रिटेन में, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। क्या उन्होंने कहानी उसके पीछे बनाई? पहले उन्होंने बताया चक्रवात क्या होता है, कैसे चक्रवात आता है, क्या हुआ, फिर उन्होंने कहानी कि वो गायब हो गया। अब जो गायब हो गया उसे सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, वो एक व्यक्ति जिसके सर पे कुछ कम बाल थे, वो हमारी कहानी का मुख्य पात्र था, जेसी बोस की कहानी का मुख्य पात्र था। उसने सीलोन के लिए यात्रा शुरू करी एक जहाज में। थोड़े समय बाद उसने महसूस किया कि हवाओं में एक तेजी आने लगी है, धीरे 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 एक हवाओं का मोशन, एक पानी के मोशन में चेंज आने लगा है, जिससे ये अंदाजा लगा कि शायद तूफान आने वाला है, इस चक्रवात में वो फंस जाएगा और शायद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब मृत्यु दिखाई देती है तो हमें अपने याद आते हैं। ऐसे में उसको याद आई अपनी बेटी, जिसने उसे घर से चलते समय एक हेयर ऑयल दिया था, क्योंकि उसके सर पे थोड़ी कम बाल थे। तो उसने कहा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करेगा, तो आपके बालों का ध्यान रखने के लिए आप इस हेयर ऑयल को ले जाइएगा। उसे अपनी बेटी याद आई, बेटी के द्वारा दिया गया हेयर ऑयल याद आया, और उसी समय उसे कहीं पढ़ा हुआ विज्ञान का एक नियम याद आया। क्या नियम था? कि ऑयल फ्लोट्स अबव वाटर। उससे क्या होता है कि वो जो पानी का मूवमेंट है उसको कम कर देता है, शांत कर देता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, जिसे हम यूरेका मोमेंट कहते हैं, उस यूरेका मोमेंट में उसने उस कुंतलिन की शीशी का ढक्कन खोला और उसको समंदर में डाल दिया। फिक्शन है, समंदर के पानी को एक छोटी सी तेल की शीशी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये फिक्शन है, कल्पना है। कल्पना में हम कोर विज्ञान की बात कर रहे हैं।
तो उन्होंने ऐसा दिखाया इस कहानी में कि जब उन्होंने उस तेल की शीशी को वहां पलट दिया तो उसकी वजह से जो समंदर में आया हुआ तूफान था, जो वाटर का मोशन था, वो थम गया, तूफान रुक गया, साइक्लोन नहीं आया, और ये उस व्यक्ति के सिवाय किसी को पता नहीं चला कि क्या मिस्ट्री, क्या साइंटिफिक मिस्ट्री थी इस तूफान के आने ना आने के पीछे। इस कहानी को 1896 में फर्स्ट प्राइज दिया गया। इस कहानी का या इस कंपटीशन का आउटकम क्या था? पहला आउटकम उनको फर्स्ट प्राइज मिला। वो एक साइंटिस्ट थे, फिर भी उनके अंदर एक कहानीकार का जज्बा था। उन्होंने साइंस और कहानी दोनों को मिला, विज्ञान और कहानी दोनों को मिलाकर एक वैज्ञानिक कहानी बनाई, एक साइंस फिक्शन बनाया, उसमें वो सक्सेसफुल हुए, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। दूसरा, इस कहानी कंपटीशन का आउटकम क्या हुआ? कुंतलिन, कुंतलिन जो ये प्रोडक्ट उस समय बन रहा था, उस समय हम लोग परतंत्र भारत में थे, स्वतंत्रता की हमारी इच्छा थी, तो स्वतंत्रता के लिए जरूरी था कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई कि भारत अपने खुद के उत्पाद बनाए, और ऐसा कुंतलिन जो है अपना उत्पाद था। कैसे आम जनता के बीच हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को छोड़ के हमारे अपने जो उत्पाद हैं उनको प्रमुखता से लाएं, इसके लिए कंपटीशन किया गया। और इसका ये फायदा हुआ कि पहले नेशनलिज्म अलग था, विज्ञान अलग था, लेकिन इस कहानी ने, आचार्य जी ने उन दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद को और विज्ञान को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे साथ ले आए, और जब दोनों साथ आके चलते हैं तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता की ओर चलने वाली जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज हो गई, और इसके बाद हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने और जोर पकड़ लिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बातें क्या हैं? बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊंगी, आई एम अ बायोलॉजी पर्सन। इससे पहले भी कहानियां थी, चंद्रकांता आप सब जानते हैं 1888 में लिखी गई, लेकिन उससे पहले जो कहानियां होती थी उनमें जो विज्ञान के नियम है वो सही तरह से, या पूरा विज्ञान को नहीं लिया जाता था, 100% कल्पना होती थी। लेकिन जब जेसी बोस जी ने कहानी लिखी तो वहां पे उन्होंने सही विज्ञान को इन्वॉल्व किया, इसलिए वो सही रूप से एक साइंस फिक्शन के कैटेगरी में, के जैनर में आता है। यहाँ पे उन्होंने एक बटरफ्लाई इफेक्ट की बात की। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? ये कहा जाता है कि कोई भी फिजिकल डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में शुरू में जो एक अंतर आना शुरू होता है, एकदम शुरुआत में जो चेंजेस आने लगते हैं, ऐसा हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे वो इतने वास्ट हो जाएं कि एक बहुत बड़ी समस्या को, बहुत बड़े डिफरेंस को जन्म दे सके। ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट था ये उस समय तक नोटिस में नहीं आया था, एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ये बटरफ्लाई इफेक्ट जो है 1972 में एडवर्ड लॉरेंस ने इस पे काम किया, और उसके बाद में ये नॉलेज में आया, अभी भी इस पे काम चल रहा है। केओस थ्योरी उन्होंने दी, केओस थ्योरी के मध्य में ये बटरफ्लाई इफेक्ट का टर्म उन्होंने कॉइन किया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि रे ब्रैडबरी ने जो कहानी लिखी थी अ साउंड ऑफ थंडर, वहाँ पे पहले बटरफ्लाई इफेक्ट की बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कहानी लिखने से बहुत समय पहले आचार्य जी ने अपनी कहानी में इस बटरफ्लाई इफेक्ट को यूज किया था। इस बात का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन की जो हम बात करते हैं तो हम ऐसे साइंस को तो लेते हैं जो इस समय एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन हम कल्पना करते हैं ऐसे विज्ञान की जो आज एक्सप्लोर नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में एक्सप्लोर होगा। ये डिफरेंस है हमारी एक स्टोरी में और एक साइंस फिक्शन में और कोर साइंस में। कहानी में आप कुछ भी कह सकते हैं, साइंस में प्योर साइंस की बात करेंगे, साइंस फिक्शन में ऐसे विज्ञान की बात करेंगे जो हम मान के चलते हैं कि शायद आने वाले समय में ऐसा हो जाए। तो ये प्रतीक था उनकी, इस तरह की साइंस फिक्शन उन्होंने लिखी, और जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली लैंग्वेज एंड इन इंडिया ऑल्सो ये कहा गया। हालांकि वो भारत में प्रथम नहीं थे, लेकिन नाम उन्हीं को दिया गया। हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि आज़ादी से पहले जब हमको ये कहा गया कि आप लोगों को साइंस ही नहीं आती, वहाँ उन्होंने ये प्रूफ किया कि हमको वो भी साइंस आती है जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। हम वहाँ से वो कल्पना से भी विज्ञान को ला सकते हैं, ना केवल कोर साइंस की बात हम कर रहे हैं। उन्होंने आप यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेंज हॉरिजॉन्स नाम का एक पब्लिकेशन हाउस है जिसने कहा कि बोस के लिए कहा है कि वंस इन अ जनरेशन साइंटिस्ट, एक ऐसे साइंटिस्ट है जो जनरेशन्स में कभी पैदा होते हैं, जिन्होंने जिस क्षेत्र में भी काम किया वहाँ पे अतुलनीय काम किया और भारत को गौरव प्रदान किया। और ये कहा गया है कि निरुद्देश्वर कहानी एक आइकॉनिक कहानी है और एक वैल्यूएबल साइंस फिक्शन है जिसने हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। आपने यहाँ नीचे देखेंगे ह्यूगो अवार्ड। ह्यूगो अवार्ड 1953 में शुरू किया गया। ये बेस्ट साइंस फिक्शन के लिए दिया जाता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ज्यादातर ये व्हाइट मेंस को दिया गया।
ये माना गया कि अंग्रेज ही विज्ञान सोच सकते हैं, अंग्रेज ही विज्ञान कर सकते हैं, तो अधिकतर ये अभी तक ये जो अवार्ड है ह्यूगो अवार्ड, ये वाइट लोगों को ही मिलता रहा। लेकिन पिछले कुछ समय में एक प्लेग ने एक वहाँ पे ये द्वंद्व शुरू हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट मैन ही साइंस फिक्शन लिख सकते हैं, और जो ब्लैक पीपल हैं या हमारे जैसे एशियन पीपल हैं, वो लोग भी ट्रू साइंस फिक्शन लिख सकते हैं। जब ये बात शुरू हुई और इसने एक बड़ी वाद विवाद का रूप ले लिया, तो उस समय जब ये देखा गया कि और कौन लोग हैं जिन्होंने विश्व पटल पे नॉन इंग्लिश नॉन वाइट होते हुए ऐसे साइंस फिक्शन लिखे हैं जो आइकॉनिक हैं, तब नाम निकल के आया जेसी बोस का और उनकी लिखी कहानी निरुद्देश्वर काहिनी का, जो उसमें एक साइक्लोन खो गया था, जिसको बाद में उन्होंने अपनी एक और डायरी में अव्यक्त में एक डिटेल कहानी के रूप में और अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका नाम वहाँ से हटाते हुए उसको वापस से छापा। तो हमको यहाँ पे ये सीखना है इस पूरी प्रेजेंटेशन का, जो मैं एंड यहाँ पे अपने बच्चों को मैसेज बस ये देना चाहती हूँ अंत में, कि आज यदि हम कुछ काम करने का सोचें तो ज़्यादा ये गणित ना लगाएं कि इसका हमें फल क्या मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो आज कर रहे हैं उसका फल आपको आज या कल ही मिल जाए। हो सकता है आने वाले समय में शायद नेक्स्ट जनरेशन आपके उस काम को पहचाने और उस समय भी इसकी वर्थ हो, और ना केवल आपका काम आपको विश्व पटल पर लेकर जाए बल्कि हमारे देश को भी विश्व पटल पर लेकर जाए। आप जब भी कोई काम करें ये सोच के करें कि हम जो भी करें देश के लिए कर रहे हैं, और पूरी तन्मयता के साथ करें और आचार्य जी के जीवन से कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you for an excellent presentation. I think she has touched on the topics which were not covered till now, the literary side of Jagdish Chandra Bose. Acharya ji बहुत अच्छा लिखते थे, and being a Bengali, I have read few of his books, little bit, not fully, but the language which he has used is excellent literary work. I mean, only one person from literature can write such good, excellent language. So that expression, so that communicating skill he also had. So this is one thing which I think all scientists and science pursuing students and all everyone have to develop, because science is not just in cannot be done in isolation. We have to communicate with the people. So that really, Professor Acharya Bose is a very good example of that. Thank you, ma'am. Any questions, queries, or comment? Anybody from the students? From the judges? So Dr. Anu, we are very impressed that it is actually an original idea. Not heard since yesterday in any of the oral presentations. Keep it up. I hope this inspired a lot of youngsters here. A big round of applause for her. Thank you very much. I think writing is a very good idea. Whatever you have in your mind, it may be very exotic or maybe something which is not, practicable also sometimes. But you can write them down, think about it, and discuss with your seniors or the experienced people. And then, ideas should always be written down, because great ideas come from, very young people. Young people come up with very exotic ideas, and that sometimes give us very good results. So thank you, ma'am, once again for your excellent presentation. Now I will move on to the next speaker, and Shri Amit Kumar Sharma is our next speaker. J.C. Bose, एक महान विज्ञान संचारक. I think you will continue with that communicating skills of J.C. Bose. Hello. कौन सा वाला? फोर्थ, थर्ड, नहीं, चारों में से कोई सा नहीं आपका? जेसी बोस अग्रीड साइंस क्या है ये? कम्युनिकेटर, हाँ ये तीसरा वाला होगा ना? हेलो, ऑडिबल? ठीक है.
एक बार क्लिक और करो, इफेक्ट डाल दिया ना, ये ठीक है कौन, एक बार नेक्स्ट कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ, इसका सिस्टम है ना, मुझे उसके बारे में खास नॉलेज नहीं है, वो आएगा वो ठीक है करो। A very good morning to all of you. Good morning. आप हमारे भविष्य के जेसी बोस हैं, एक बार अपने लिए क्लैपिंग हो जाए। आने वाला हमारा संपन्न भारत और उसके भावी जेसी बॉस हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं हमारे जो भी चेयरपर्सन हैं उनको प्रणाम करते हुए सबसे पहले माँ भारती को प्रणाम करूंगा। उसके बाद जो मुझे एक अभूतपूर्व अवसर दिया है विज्ञान भारती और संबंधित संस्थान है, उनको भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, ओके। हम सिंपल बात करेंगे, आपस में हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस, एक महान विज्ञान संचारक, बहुत कम्युनिकेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जीवनी के बारे में हमारे जो भी पूर्व वक्ता हैं उन्होंने बताया, ठीक है, हम जीवनी के बारे में लगभग जान चुके हैं। उसका एक छोटा सा कैसे जन्म हुआ, कैसे उन्होंने आगे पढ़ाई की, क्या उन्होंने चीजें करी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, एक ऋग्वेद का हमारा श्लोक है छोटा, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हमारे जो पौराणिक महाकाव्य हैं भरे हुए पड़े हैं ज्ञान के भंडार से। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला वेदों की ओर लौटो, वो महान विश्व की एक हैसियत से ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने। क्यों बोला वेदों की ओर लौटो? उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य था। Let noble thoughts come to us from all and every direction in the universe. That is the main important point. बोलचाल की भाषा में बात करूंगा, इस विश्व में जो भी हमारा समस्त यूनिवर्स है, वहां से जो भी विचार है हमारी तरफ आए, हम उसको सुने, सोचें, फिर उसको हम लोग प्रचार और प्रसारित करें। जीवनी के बारे में थोड़ा सा, जन्म हमारे आदरणीय आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी का 30 नवंबर कल उनका बर्थडे था। बिलेटेड बर्थडे में सभी आप जगदीश चंद्र बोस बैठे हुए हैं, सबको मैं बिलेटेड बर्थडे बोलता हूं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी जीवनी के बारे में सभी विषयों पे काम किया। अभी हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। एक बहुत अच्छा स्टेप, पहले साइंस वाला स्टूडेंट साइंस ही पढ़ पाता था, इतिहास नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब ये प्रावधान है, इतिहास वाला स्टूडेंट अगर उसको कहीं पे भी किक मिलती है या छोटा सा उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो साइंस पढ़ सकता है। साइंस वाला स्टूडेंट अगर कहीं पे इंटरेस्ट डेवलप होता है, मैं कल की बात करूंगा, हमारे आदरणीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित रानाडी जी ने बोला था कि हम लोग साइंस हैं तो साइंस के पीछे ही जाते हैं, नहीं, हमें इतिहास को भी टटोलना चाहिए। इतिहास में भी हमें ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं परिदृश्य जिनसे हमें अचानक विचार विमर्श, हमारे विचार बदल जाते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो कम्युनिकेशन, संचार हमारा शुरू हो जाता है। अब आवश्यकता है संचार की, कम्युनिकेशन की। हम लोग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बस मीडिया पर जाकर के लाइक कर देते हैं, फुल स्टॉप नहीं, उससे आगे भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम उस विश्व गुरु भारत में रहने वाले हैं जो प्रारंभ में समस्त विश्व का विश्व गुरु था, जहां बहुत सी जगहों पर पूरी मूल रूप से कपड़ा पहनना भी लोगों ने नहीं सीखा था। उस टाइम पर यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय चल रहे थे, और आपके पास इतना भरपूर एक अध्ययन सामग्री थी जिस पर हम लोग सभी हमेशा गर्व करते रहेंगे। बस हमें वहीं चलना है। कुछ प्रयोग और सफलताएं जो उन्होंने प्रयोग की, वनस्पति पर प्रयोग किए, उसके बाद केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, फिर वो फिजिक्स में गए। तो यानी ये देखिए ना, अलग अलग सब्जेक्ट थी, जो डिफरेंट स्ट्रीम थी, हर स्ट्रीम को उन्होंने टच किया, इसलिए इनको महान विभूति, महान संचारक बोला जाता है। एक विषय तक सीमित नहीं रहे। हम क्या होता है, हम हिस्ट्री ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, बस सिर्फ एक विषय तक सीमित रह जाते हैं। नहीं, हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए।
थोड़े से ये मेरे हिसाब से कल हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने जीवनी के बारे में बहुत कुछ बताया। तो मेन हमारा जो मेरा मकसद है वो है आपसे बात करना और सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में, विज्ञान संचार के बारे में। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान विज्ञान का होता है और हम विज्ञान में सबके गुरु रहे हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को भूल गए हैं? बस इतनी सी बात है। उस स्वयं को जागृत करने के लिए हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा और विज्ञान संचारक बनना होगा। हमारे विज्ञान को हमें चारों ओर फैलाना पड़ेगा यूनिवर्स में कि यस, हम लोग विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। और ये आपके ऊपर दायित्व है, हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दायित्व है। सीख करके ये छोटी सी बात हमारी हो गई विज्ञान संचार के बारे में। एक आपके लिए कोई मैं स्पेशली लेके आया हूं। समुद्री जहाज किनारों पर खड़े सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन क्या बताइए वो किनारों पर खड़े रहने के लिए बनाए गए हैं? नहीं। यस या नो? उनका असली काम क्या है कि लहरों पर कूद करके उनको चीड़ फाड़ के रख देना और आगे बढ़ते रहना अपना रास्ता बना के रहते हुए। तो यही उम्मीद हमारी भावी जो पीढ़ी आने वाली है, जो हमारे भविष्य के आधार कारण हमारे हैं देश के, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्यशालाओं में, ऐसी गोष्ठियों में हम सीख के जाएं, लेकिन सर अब तक सीमित ना रख लें। हम इस चीज को जितना हो सके उतना आगे तक कम्युनिकेट करें। ठीक है, विज्ञान संचार स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश काल में जब विज्ञान को केवल व्हाइट पर्सन, सफेद लोगों का ही क्षेत्र माना जाता था, करके दिखा दिया कि नहीं, हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं। जगदीश चंद्र बोस जी का एक चीज मुझे याद आती है, उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद लिखा कि 36 वर्ष की आयु के बाद कि अब मेरा बाकी का जीवन सिर्फ अनुसंधानों में गुजरेगा। दैट इज दृढ़ निश्चय। ये चीज होती है और सामने वाले को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर देती है कि यस, ये पर्सन है, और उनको पहचाना गया, उनके बहुत सारे अलंकारों से, पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि 3 क्वालिटी स्पेशली उनके अंदर हमें देखी: समर्पण, अपने हितों की रक्षा और दृढ़ निश्चय। ये 3 चीज अगर आप जीवन में अपना लोगे तो आपको कोई पीछे नहीं धकेल सकता, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। सफलता 100% आपके कदम चूमेगी, जो कि ये उनकी जीवनी आज हमें जेसी बोस जी की जीवनी से 3 चीज स्पेशली निकल करके आई। उन्होंने समर्पण दिखाया अपना पूरा, गरीब परिवार से होते हुए भी बहुत हिम्मत करके उनकी मां ने गहने बेचे उनको विदेश भेजने के लिए कि वहां पर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए। वो थोड़ा सा उनको जो केमिकल यूज करते हैं डिसेक्शन सेंटर पर, वो उसकी महक अच्छी नहीं लगी, उस वजह से वो वापस भारत में आकर के उन्होंने दूसरी विधाओं का अध्ययन किया। ये आपके लिए है कि मेरा काम केवल कम्युनिकेशन का है, आपको ये चीज आगे कैसे लेके जानी है। हमारे जो भी इस तरह की कार्यशालाएं हो रही हैं देश विदेश में, हमारे वैज्ञानिकों को जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, उनसे आप कुछ सीखें और उसको इस समाज में, इस विश्व में आगे तक प्रचारित प्रसारित करें। युवाओं की वैज्ञानिक सोच देश को नई दिशा देती है और अब आवश्यकता है, अब हम उस पटल पर आकर के खड़े हो गए हैं कि सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है कि हम कब इस ग्लोब का प्रतिनिधित्व करें, और उसकी डोर बागडोर आप लोगों के हाथ में है। ये एक अगेन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। 2 minutes more, 2 minutes और बचे। विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्यते सद्गुणातस्य ना साध्यामति वर्तते। ये 6 चीज अगर आपके पास हैं, विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, तो विश्व की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपसे आपका उद्देश्य छीन सके, आपको पीछे धकेल सके। अब मैं स्वयं आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी को लेकर के आ रखा हूं। मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, परंतु अभी बहुत कुछ करना है शेष। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने किया, उनको हम किस प्रकार आगे लेकर के समस्त विश्व तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर कि हम लोग ऐसी कार्यशाला में गए, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने हमारे भारत को एक विश्व पटल पर रखने के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। हमारा क्या दायित्व है?
सोचें हम भागदौड़ की जिंदगी में से वक्त निकालें, सोचें क्या ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमारा असली उद्देश्य है? नहीं, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारा क्या दायित्व है, तो इसको हम बिल्कुल सोचेंगे। बस मेरा इतना ही से आपको लिए कहने वाला था। हार्दिक आभार, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बोला और प्रोत्साहित किया हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? आई डोंट सी एनी कमेंट। एक सवाल। अमित जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। एक बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट शायद ना पूछे। आपने कहा हिस्ट्री पे फोकस करना, हिस्ट्री भी पढ़ी जा सकती है जैसा कि एनईपी में है साइंस के साथ, तो हिस्ट्री के बहुत सारे पहलू हैं। जी बिल्कुल। तो जो साइंस पढ़ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा साइंटिफिक हिस्ट्री, है ना, बिल्कुल। ऑफ इंडिया। तो क्या अभी हमारे पास ऐसा कोई सोर्स स्टूडेंट्स के लिए या कुछ कोर्स ऐसा कुछ अवेलेबल है जहाँ पे ये जाके पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकें? बिल्कुल मैम, In a बिल्कुल आना compiled चाहूँगा, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कि हमारे विज्ञान, जैसे हम बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारा विज्ञान किस प्रकार का था, तो उसके लिए हिस्ट्री की बुक में 11th-12th की जो हमारी सीबीएसई की किताब है उसके अंदर कई सारे चैप्टर्स इस प्रकार दिए हुए हैं कि आपको जाकर के उनको पढ़ें कि किस प्रकार हमारा भारत के जो लोग थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो संघर्ष कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्वतंत्रता प्राप्ति का सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो और वैज्ञानिक क्षेत्र हो। अगर हम वैज्ञानिक पहलू पर जानना चाहते हैं तो वैज्ञानिक जो क्षेत्र है उसको हम जरूर पढ़ें, वहाँ से अलग अलग सीखें। अगर आप देखेंगे भी तो लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बहुत सारा हमारा जैसे एनबीटी का है, नेशनल लाइब्रेरी है, इनमें कई सारी किताबें ऐसी हैं जिन पर अगर आप जिस सुविधा में हिस्ट्री को देखना चाहेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा विचार आपका। या आई थिंक those who are doing science, we don't have much time to do other things, to read history or other, but it's now time. What he's saying is absolutely correct, that we will do our work, major work, but at the same time we should have a feel for the history, because from there we can get inspiration. That is the main thing. We should keep our roots deep rooted. I mean, we should keep our feet deep rooted in our culture and traditions. And you know, the past we had enormous knowledge, absolutely रत्न भंडार जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो कुछ कुछ कभी कभी पढ़ना अच्छा होता है, so that you can get inspired in your life. Next speaker, I think this will be an online presentation. This is by a very famous physicist, Dr. Shibaji Raha. He will be talking about contemporary relevance of works of J.C. Bose. I'll just give a brief introduction of this. This is a plenary speaker, so I'll just give a brief introduction about him. Please do the needful to get him online. I will just, in the meantime, give a brief introduction of Dr. Raha. It is my great honor and pleasure to introduce Dr. Shibaji Raha, a physicist specializing in high energy particle and nuclear physics, astrophysics, astroparticle physics, cosmology, as well as a multitude of areas related to the global change scenario. Next speaker? Okay. I think there's some problem. He's not joined yet online. So I will postpone his talk. I mean, a little later we'll have this talk, next talk. So we will have another talk in place of Dr. Raha. So we will move on to the next speaker actually. He's Professor Y.K. Vijay, and he's present here in the audience. I can see. He's a very well-known face at IUSC. Namaskar. Aapko swagat hai. He's a very well-known physicist, director, CIST, the IIS University, Jaipur. I'll just give a brief introduction, sir. He's a passionate science teacher who has led the development of many innovative working models for teaching and learning physics through simple instruments as innovation hub. I mean, talking about him, it will take 10 minutes if I can give his full credentials. But he's an excellent teacher,
professor and he is a researcher. He has been working for a long time and wide experience in material science and other fields. I would request, it's my pleasure and honor to invite Professor Y.K. Vijay on stage. And his topic is, as I told, what's the topic? Science of waves. Science of waves, generation and detection. This is his topic. So now over to Dr. Vijay. यस, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? सबसे पहले नमस्कार। हम ग्रेट फिजिसिस्ट जेसी बोस साहब की जन्म तिथि के ऊपर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम से हम सीखते क्या हैं। ओके, तो एक वीडियो आपको छोटा सा शेयर करूं जो याद रहेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, तो मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं, सारे तो नहीं दिखा सकता यहाँ, बट आई विल शेयर द लिंक जिससे आप घर बैठे देख सकते हैं। ओके, एंड यदि वीडियो पसंद नहीं आता है देन वी कैन हैव ए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं कुछ एपरेटस लेके आया हूँ, तो इफ़ आई एम गिवन ए टाइम 10-15 मिनट का बच गया तो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लाइव कर दूँगा। ओके, बिफोर टी ब्रेक आई सपोज। ठीक है, सो वेल, या थैंक यू। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा जल्दी करूँगा, कहीं ज़रूरत होगी तो रोकेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तो देख लेंगे। ओके, हम क्या कर रहे हैं? साइंस फॉर एवरीवन, play, enjoy and learn. Okay, this is one of the theme. Most of the big scientists क्या कहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं या जो भी हमने किया वो किसके लिए किया? एक तो होता है अपने लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, सोसाइटी में अर्न करने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम सोसाइटी को रिटर्न करने के लिए। ओके, काम किया जाता है। ठीक है, तो हमने, मैडम ने भी बताया कि ही वॉज ए वेरी नाइस स्टोरी राइटर। ओके, सो साइंस यदि हमने की तो सोसाइटी में कैसे पहुंचे? ओके, यदि हम कहें कि बेतार का तार का आविष्कार किया जेसी बॉस ने, ठीक है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वो आप लोग तो कैसे पहुंचे? ओके, उस थीम को मैं पकड़ूंगा, waves, generation and detection. ओके, तो आप लोग यदि एक दो मेरे पास आएंगे तो आई विल गिव यू द डिटेक्टर टू चेक कि वेव्स आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, विद द सेम थीम विच जेसी बोस वर्कड अपॉन। ओके, एंड वी से कि ही मिस द नोबेल प्राइज, बट नेवर माइंड, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ है। ओके, बिकॉज वी आर बिलीविंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अपने हाथ से काम करो, एंजॉय करो और सोसाइटी के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करो। जो भी मेरे अर्लियर स्पीकर ने कोविड टाइम में जस्टिफाई किया, इंडिया हैज़ ए शाइनिंग फ्यूचर, ओके, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर विद यू द कंट्रीब्यूशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा लाइव। ओके, दिस इज़ नॉट माई एरिया, ठीक है, और लोगों ने शेयर किया होगा। कल कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, उनके साथ शायद एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कुछ काम किया होगा। मेरे को थोड़ा सा लेट मिला इंफॉर्मेशन यहाँ आने के लिए, अदरवाइज आई कुड हैव बॉट समथिंग एल्स। ओके, वेल, मैं जस्ट एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये जो प्री इंडिपेंडेंट साइंस है, ठीक है ना, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है जेसी बोस के साथ। कुछ समय पहले हम सीवी रमन,
मेघनाथ शाह एंड एस.एन. बोस, इनकी भी बात करते थे, बिकॉज दिस इज अ सेंटेनरी ईयर. ओके, 21 से लेके 30 तक जो लोगों ने इंडिपेंडेंस के पहले काम किया, वो भारतीय साइंस की, इंडियन साइंस की नींव रखता है. ओके, फंडामेंटल्स रखता है, और उसके आधार पे वी हैव गॉट सेवरल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. आपको पता है बोस के नाम से क्या जाना जाता है? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. जब अभी भी गोड पार्टिकल की खोज होती है तो आइंस्टाइन के पहले बोस का नाम जोड़ा जाता है. ओके, यदि कहीं स्टार से लाइट की बात होती है, हबल टेलीस्कोप या अभी जो एक और रिसेंट टेलीस्कोप जो कि और भी दूर देख सकता है, ठीक है ना, तो लाइट आती कहाँ से है? द ओरिजिन ऑफ लाइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय मेघनाथ शाह. ओके, लाइट फ्रॉम सन, थर्मोनिक आयनाइजेशन. ओके, एंड इन द सेम वे सीवी रमन ने जो कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, दिस इज एनॉर्मस. क्या कंट्रीब्यूट किया है? कुछ नहीं किया. फोटोन एटम से कैसे बात करता है, ये किया उन्होंने काम. हाउ फोटोन इंटरेक्ट्स विद एटम, दिस वाज द वेरी फंडामेंटल. सारी दुनिया उसी पे चलती है. ओके, सनलाइट से जो रोशनी आती है, मदर अर्थ के ऊपर डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उस रोशनी को एब्सॉर्ब करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं. ओके, सो दिस फंडामेंटल वर्क वाज ड्यू टू रमन. और आज रमन स्पेक्ट्रोमीटर ग्लोबली मोस्ट सेलिंग इंस्ट्रूमेंट है, अपार्ट फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ऑफ कोर्स सैम. हम इसको थोड़ा सा जल्दी से करेंगे. मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, IIPT, जो कि एक नेशनल बॉडी है नाउ एंड ऑल ओवर द कंट्री काम कर रही है. DP खंडेलवाल वाज आल्सो कंटेम्प्रेरी. ओके, इनकी भी शताब्दी मनाई गई. 1920 में इनका जन्म हुआ था. ओके, ऑलमोस्ट द सेम टाइम, एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट फिजिक्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ से मज़ा शुरू करें. ये चलती है क्या वीडियो? देखें, लेट मी सी वेदर इट वर्क्स. अपनी ये लैपटॉप लगाना पड़ेगा, पेन ड्राइव में फाइल है, इसको प्ले कर दीजिए वीडियो. आवाज़ भी आ जाएगी. ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है जो कि जेसी बोस साहब ने किया होगा कि आर्क करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है. तो क्या हम आज नहीं कर सकते? वीडियो इनोवेशन वाली जो चैप्टर है, सॉरी, हाँ, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं. अच्छा, वो सब हट गए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला दिखाइए, और नीचे EM, हाँ, EM फील्ड बाय स्पार्क, या हाँ, प्ले कर दीजिए. तो ये छोटे छोटे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से साइंस सीखी जाती है. ओके, ऑडियो नहीं है. हाँ, आप एपरेटस को देखेंगे. इट इज सिंपल. आई हैव बॉट इट हियर. I'm showing you an experimental setup. या तो पूरा ही ले आइए, पूरा ही ले आइए, या सभी चीज़ें ले आई. यस, यू वांट टू सी इट फिजिकली. इट लुक्स लाइक दिस. वीडियो देखनी है, वीडियो देखिए, क्योंकि ये मैं ला सकता हूँ. एंड दिस इज हाउ द स्पार्क्स आर जनरेटेड. ओके, अब ये स्पार्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आसपास फैल रहा है. इज इट ओके? विजिबल? कैसे हो रहा है? यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 3.7 वोल्ट. उसी से हाई वोल्टेज जनरेट किया गया है, और वो हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आ रहा है. ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए डेमोन्स्ट्रेशन. ऑलराइट. तो जो ग्रेट साइंस है, ग्रेट साइंटिस्ट है, जो काम करते हैं
ठीक है ना, ये आम पब्लिक तक कैसे पहुंचे, आसानी से कम्युनिकेशन हो। तो जो हमारे फ्रेंड बात कर रहे थे साइंस कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट IUAC वी डू वंडरफुल थिंग्स इनसाइड अ बिग मशीन, ओके, बट वो बच्चों तक कैसे पहुंचे कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो कहते थे ये बम फैक्ट्री है, न्यूक्लियर फिजिक्स का काम होता है, अब कहते हैं यहाँ मटेरियल साइंस होती है, ओके। तो जहाँ तक बच्चों को पता नहीं चले कि इट्स अ वेरी सिंपल साइंस जो यहाँ करते हैं, ओके। चलिए दिखा दीजिए। तो ये I'm showing you a experimental setup which consists of okay. a high voltage discharge Okay, good. and ऊपर रख लीजिए। produces arc and in air using DC to DC converter, and when we produce arc at the two wires, one of them is positive, another is negative, and there is an acceleration of charges when the ionization is produced in this arc, and electromagnetic field is produced all around, and that is what we call it as a Hertz experiment. In order to realize the electromagnetic field around, I have got a CRO, cathode ray oscilloscope, with the probe open. Okay, this is a DC power supply around 2 volts given to a DC to DC converter which generates a high voltage, and the two spheres are separated. They can be changed distance from 5 mm to something like 10 mm. We can have spark, and in order to see the electromagnetic field around, we have got a search coil. About 50 number of turns are there, and a LED is connected to check the induced EMF. Let me see when I start. You see the sparks are generated. And as the spark is generated at CRO, you see the डन, वेरी गुड, थैंक यू। मैं इसी को सप्लीमेंट कर देता हूँ आगे। व्हेन आई सेड इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं आसपास, हाउ डू यू नो? ओके, कोई चीज़ इफेक्ट होनी चाहिए। ही डिस्कवर्ड द सेमीकंडक्टर, ओके। तो सेमीकंडक्टर बाजार में मिलते हैं क्या? डू यू नो LED? मिलते हैं भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? लाइट एमिटिंग डायोड सेमीकंडक्टर से बनती है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यदि किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरे, ठीक है, तो करंट फ्लो हो सकता है, करेक्ट। दिस इज व्हाट वी विल ट्राई। उस इलस्ट्रेशन में भी किया। ये इन बच्चों के पास है। वी हैव गॉट ए स्मॉल कॉइल, ओके, इसको हम सर्च कॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या है? वाइंडिंग वायर है, इसके 50 टर्न इस तरह से रोल कर दिए और उनके एंड के ऊपर एक LED लगा दिया, ओके, दैट्स ऑल। सो दिस विल एक्ट एज ए डिटेक्टर, ओके। ये तो समझ में आया। इससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग स्पार्क, ठीक है। स्पार्क नहीं प्रोड्यूस करना है तो डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, ओके। अब स्पार्क नहीं आ रहा, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज वेरी हाई। जितना हमने वोल्टेज लगा रखा है उतना है। पता है यहाँ कितना वोल्टेज है IUAC में? 32,000 वोल्ट, 32 kV, उतना टर्मिनल पोटेंशियल है। तो अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन कहीं से निकले तो इट कैन हैव दैट मच एनर्जी व्हेन इट कम्स डाउन, ओके, आयन सोर्स के पास। यहाँ मेरे पास जो सेटअप है, जो बाजार में मिल गया, मैंने 50,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लगा रखी है इसमें,
50,000 वोल्ट। ओके, आपको चाहिए टेस्ट करना तो टेस्ट कर सकते हैं उंगली लगा के, ठीक है, बट मैं उंगली नहीं लगाने दूंगा। मैं क्या करूंगा, ये दो तार लूंगा, एक रेड प्लस और एक माइनस। इस प्लस को, ठीक है, अभी ऑफ है। यहां कैंडल दिख रही है क्या? कैन यू सी द कैंडल? ओके, ये इस प्लेट को लगा देता हूं, ठीक है, रहने दीजिए, और माइनस को दूसरी प्लेट से। ओके, ठीक है। अब यदि मैं यहां स्विच ऑन करता हूं तो हाई वोल्टेज जनरेट होती है। यदि मैं अंदर बैठा होता तो पता नहीं क्या होता, ठीक है ना, बट मैंने क्या कर रखा है, एक कैंडल रख रखी है, ठीक है ना, कैंडल फ्लेम है, ठीक है ना। कुछ होता है क्या? फ्लेम इफेक्ट होती है। इसको नजदीक करता हूं तो दोनों इफेक्ट देख पाएंगे हम। नजदीक कर दें, ठीक है। तो जब ये स्पार्क होता है उस समय फ्लेम में असर होता है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। ओके, अब कैन यू सी लेफ्ट या राइट किधर डिफ्लेक्शन हो रहा है? दे आर विटनेसिंग कि ये इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं ये टर्मिनल चेंज कर देता हूं। ओके, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू द एक्सपेरिमेंट। तो स्पार्क तो फिर भी हो रहा है। सो व्हाट शी इज सेइंग कि जो फ्लेम है इसका डिफ्लेक्शन बदल गया। सो दीज आर द प्रिटी ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है साइंस में जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। आप प्रयोग करते हैं तो ये जो बड़े लोग हैं तभी बड़े बनते हैं। दे डू द एक्सपेरिमेंट, डेवलप सम कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अब वो फिक्टिशियस कहानी तो लिख दी कि तेल डालने से टॉर्नेडो बंद हो गया, बट व्हाई नॉट यू डू दैट, ठीक है। वॉशिंग मशीन में टॉर्नेडो बनता कि नहीं? नहीं बनता है, देखा या नहीं? कोई वॉशिंग मशीन खुली हो तो चलाना नहीं है, उसको इंटरलॉक रहता है, बट उसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन रहता है। ओके, उसको यदि आप ठीक से खोलेंगे तो कर सकते हैं। मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन कर दूं, मेरे पास 3-4 है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास भी है, ठीक है। देखो यहाँ पास में लाओ। यदि आप लाइट कम करेंगे तो पता चलेगा ये एलईडी ग्लो होता है क्या। ग्रीन लाइट आ रही है इस एलईडी के अंदर। द गर्ल इज सेइंग ग्रीन लाइट आ रही है। ओके, आ रही है, दिख गई? ओह ग्रेट, आपके उसमें भी दिख रही होगी। दीज आर ऑल लो कॉस्ट डिटेक्टर्स। पास में नजदीक रखेंगे, आ रही है, ग्रीन है। ओके, सो in the market we are having different color LED, all right. You can try out and do your own experiment and understand the science with confidence. Okay, आ जाइए, don't hesitate. Okay, मैंने डायरेक्शन फ्लेम चेंज करके दिखा One or दिया two आपको। students can come up on stage. 1 or 2 students, or 1 girl student. Yeah. आपको पता तो लग गया ग्रीन एलईडी है, ठीक है। आपको देखो, उसको छूना नहीं है। एलईडी दिख रहा है क्या आपको? लाइट दिख रही है उसमें? हल्की सी आ रही है। हाँ, उसके हाथ मत लगाना। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, बैटरी कुछ नहीं लगी है ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बाहर फैल रहा है उसको हम बोलते हैं वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो असर है वो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है,
ठीक है ना, कॉइल में, ओके, और उससे ये जलती है, ओके। यू वांट टू चेक, इनको दीजिए, ठीक है, इसको दबाओ, हाँ, तो फ्लेम में भी पता लगता है और यहां भी पता लगता है। फ्लेम देखो फ्लैटर करती है। नाउ फ्लेम क्यों फ्लैटर करती है? बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज। वाई? वी से कि जो मेघनाथ शाह ने बोला कि व्हाट इज अ फ्लेम? फ्लेम फायर ही तो है ना, ठीक है ना, तो गैस है, हवा है, जो कि हाई टेम्परेचर पे है, ओके। तो जब हवा हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाती है तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाते हैं, ओके, और उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो द फ्लेम इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये आप पढ़ते हैं कहीं न कहीं, तो दिस इज विजिबल, ओके, वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा क्वासी न्यूट्रल होता है। क्वासी न्यूट्रल मीन्स कहीं न कहीं पॉजिटिव, कहीं न कहीं नेगेटिव, और फोटोन भी होते हैं उसमें, लाइट। तो लाइट दिख रही है अपने को, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो वो दूर भाग जाता है, ओके, बट आयन भारी होता है इसलिए वो कन्फाइंड रहता है, ठीक है ना, और उस आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरता है तो रिकम्बिनेशन होता है, तो रिकम्बिनेशन होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ओके। इस हाई वोल्टेज से तो आयनाइज हुआ या हीट से आयनाइज हुआ, ओके, एंड रिकम्बिनेशन से लाइट प्रोड्यूस हुई। सो दिस वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेघनाथ शाह, ओके, जो हम लोगों को पता नहीं है, ऑलराइट, आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट, तो आप नया कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, ओके। सो हमारे जो स्पीकर्स हैं वो यही कह रहे थे कि हिस्ट्री सीखना चाहिए, ओके, साइंटिफिक हिस्ट्री, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। थैंक यू। आई गॉट लिमिटेड टाइम, मैं पीपीटी पे वापस चला जाऊँ, चलाइए, आ जाइए। नहीं नहीं, यहीं रखो, ये तो हम परमिशन लेंगे चेयरमैन साहब से कि इन सामानों को भी दिखाना है तो दिखाएंगे, हाँ, ये दिखा, हाँ, ओके ओके, यस। तो मेरे को मैंडेट आया कि हमें ये डेमोन्स्ट्रेशंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। इज दैट ओके सर? Yeah, absolutely okay. ओके, अभी मैंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात की, तो हम लेबोरेटरी में प्लाज्मा बना लेते हैं, नो डिफ़िकल्टी, बट उसको लाने ले जाने में दिक्कत है, ओके। तो व्हाट वी डू इज़ वी कैरी दिस काइंड ऑफ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा ग्लोब। यदि आप थोड़ा सा लाइट कम करेंगे, लाइट्स थोड़ा ऑडिटोरियम के लाइट्स थोड़ा डिम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो अभी मैंने प्लाज्मा के बारे में जो भी शब्द बोले, ऑफ भी कर सकते हैं लाइट्स फॉर सम टाइम, या साइड वाला भी। तो ये हाई वोल्टेज से एक्साइटेड प्लाज्मा है, ठीक है ना, क्योंकि बिजली लगाई उससे हाई वोल्टेज आया तो गैस के एटम्स आयनाइज हो गए और वो रैंडमली कहीं भी चल रहे हैं, तो जहां रिकम्बिनेशन हो रहा है वहां से लाइट आ रही है, ओके। तो सन की सरफेस के ऊपर मोस्ट ऑफ द गैसेस इन दी फोर्थ स्टेट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, ओके। तो प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन भी है और आयन भी है, और जहां से रिकम्बिनेशन होते हैं वहीं से लाइट निकलती है, ओके। तो रिकम्बिनेशन मैं हाथ लगाऊं तो रिकम्बिनेशन पॉइंट चेंज हो जाते हैं, दो लगा दो, यस, तो दो जगह से रिकम्बिनेशन बढ़ गया। या ओके, नाउ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गैस है एट लो प्रेशर, ओके।
Please go back to your seats. We'll call. ओके Please go back to your seats. नीचे रख दूं? आप लोग अपने जगह पर बैठे रहें प्लीज. ठीक है. डॉक्टर विजय विल शो अस एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन टू अस. हमको सब कुछ बताएंगे, हमको सबको पता चलेगा. साइड वाली ये भी देखा होगा आपने, ये CFL लैंप है, इसमें से लाइट नहीं निकल रही है. ओके, क्योंकि इसके एटम्स सब ग्राउंड स्टेट में है. क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एक. बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठ आई जाएं. विल बी अराउंड. आप ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे. व्हेन आई सेड कि एटम्स है मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, मिस उत्तेजित नहीं है. ओके, और इसको यदि मैं इसके पास लाता हूं तो इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी उत्तेजित हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. ओके, इसके आसपास तरंगे हैं और वो तरंगों से ऊर्जा ट्रांसफर होती है. प्लीज प्लीज जब ये एटम्स बाद में एंड फोटो लेना, मॉलिक्यूल्स प्लीज आप लोग बैठ एक्साइटेड जाइए. स्टेट में चले जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा आयनाइड स्टेट. ओके, और वो जब रिकम्बाइन होती है तो लाइट देती है. हाँ, ये अच्छा लगा. दूर से. हाँ, क्लैप कीजिए प्लीज. गिव हिम अ बिग applause. ठीक है, तो ये जो साइंस की किताबों में लिखा है वो चीजें करके देखने में अलग मजा आता है. ओके, और उसके लिए संसाधन जुटाना ये आपका प्रयास होना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग पीपल दे हैड देयर ओन लेबोरेटरी इन देयर गैरेज. CV रमन साहब ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा. ओके, ठीक है. तो आपको यदि काम करने की लगन है तो चीजें आपके पास होनी चाहिए. यू शुड बी पॉजिटिव. ओके, ये चीज होनी चाहिए. मोमबत्ती होनी चाहिए, तब उसमें प्लाज्मा आप देख सकते हो. ओके, हाई वोल्टेज होनी चाहिए तो उससे आप डिफ्लेक्ट होती कि नहीं प्लाज्मा वो पता लगता है. ओके, अच्छा, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में नहीं जाएगी. ऑर्गेनाइज वे में नहीं जाएगी, वहाँ क्राउड कर क्राउड हो जाएगा. मैं लिमिटेड यही दिखाता. ठीक है. ओके, थैंक यू. आपको वेव प्रोपोगेशन, दो तरह की वेव होती है, आपने सुना है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. उनको फील करना है, देखना है. यहां ओके, लाइट कम ही रखिए. हाँ, अभी हम एक और डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं, अभी पता लग जाएगा. मेरे पास एक स्पेशल ट्रे है. क्या ट्रे है? कांच की बनी हुई ट्रे है. ओके, इस कांच की बनी हुई ट्रे को यहाँ रख देता हूँ. नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्शन देखेंगे हम तो. वी विल सी द रिफ्लेक्शन. ओके, और इसमें पानी भर दिया हमने. मैंने क्या किया है अभी पता चलेगा आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो भी सब जवाब मिलेंगे. ओके, ठीक है. अब मेरे पास एक लैंप है. ओके सर, विल यू हेल्प मी टू कनेक्ट दिस लैंप. ये LED लैंप है. आपको रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं दिखी या छत पे दिख गई? छत पे दिख गई. यहाँ पे देखिए, छत पे देखिए सब लोग. What is this phenomena? This is a wave propagation. हाँ?
ओके और इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल वेव्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके तो कहीं भी पॉइंट सोर्स होता है उससे लाइट चारों तरफ फैलती है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, साइलेंट कर दीजिए। अभी मैं यहाँ से आपने सुनामी जैसी देखी है, समुद्र पर जो वेव देखी है वो लाइन वेव जैसी होती है। कैन यू होल्ड? हैंड से रिफ्लेक्ट होके और वापस आती है। इसको ठीक से रखें। इस पे रख दीजिए। कैन यू सी वेयर इज द रिफ्लेक्टेड लाइट गोइंग? यहीं पे है। ठीक है, तो समुद्र के ऊपर पानी काफ़ी फैला हुआ है, सो वी गेट अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके ठीक है, सरफेस के ऊपर इट्स लाइक दिस, राइट। और इसकी जगह यदि हम छोटी छोटी बूंदों से पानी डालें, ओके इस सरफेस के ऊपर या कोई टैपिंग करें, then you get a spherical wave front. okay circular wave front 3 डायमेंशन में ये spherical wave front कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर पर सेकेंड वेव कहाँ पहुँचती है, इसको बंद कर दीजिए। ओके वेल लेट मी गो टू द प्रेजेंटेशन। Okay. तो हमारा जो मदर अर्थ है ग्लोब, ओके इसके अंदर जो मेजर ऑब्जर्वेशन है ह्यूमन बीइंग का उसको बोलते हैं हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ओके बट सारे मैक्रोस्कोपिक डायनेमिक्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है क्वांटम वर्ल्ड, हाउ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्टिंग। ओके आपने बॉल फेंकी, बॉल रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके ठीक है, आप कोई चीज़ ऊपर फेंको वापस नीचे आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। ओके एंड ग्रेविटेशन, सो इन सब के पीछे जो फंडामेंटल साइंस है वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। ये सारे क्वांटम वर्ल्ड कहलाते हैं, क्वांटम साइंस। एटॉमिक कन्फिग्रेशन से जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ओके वांडरवाल फोर्स क्या होता है, लेज़र लाइट कैसे चलती है, हाउ द लेज़र ट्रेवल्स, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ। स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन होते हुए देखी है, कर्व्ड पाथ देखना है तो वी कैन शो यू लाइट कर्व्ड पाथ में भी चलती है। ओके वी हैव गॉट अ डिवाइस, एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, इसमें पानी भरना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा एंड जब लेज़र बीम डालेंगे तो इट विल बाउंस। ओके सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन। बोर ऑर्बिटल का नाम सुना है? ठीक है, कभी देखे नहीं हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके सो ऑल दीज फिनोमिना, इवन द रमन इफेक्ट, ओके रमन इफेक्ट मैंने बोला, हाँ पानी डाल दीजिए, नहीं वैसे तो दिखी जाएगी, पानी भर दीजिए, ठीक है अभी दिखाएंगे। वेल एटॉमिक कन्फिग्रेशन इस तरह से देखते हैं, ये क्या है, खिलौना। ओके इसमें बॉल हैं
और ये बॉल सिस्टमेटिक अरेंज हैं, 6 बॉल 7 बॉल, हेक्सागन सिमेट्री है। ओके, ऐसा कैसे हो जाता है? हर एक बॉल के नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो ये वीडियो है, आसानी से इसको चला के देख सकते हैं एंड आप खुद बना सकते हैं एट होम। ओके, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग डाइपोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग डाइपोल यदि आप पानी के ऊपर छोड़ेंगे तो दे विल अरेंज। ओके, थैंक यू सर। मैं यहाँ रख दूँ, आई होप इट विल बी विजिबल। हाँ ठीक है, लेज़र टॉर्च निकालता हूँ। वेल, इसको रोक देते हैं। वे गोट लेज़र बीम, ठीक है, दिख रहा है? दिखा दें। ओके, ये वाली, ठीक। लेज़र बीम सीधी जाती हुई दिख रही है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हम कहते हैं इस पानी की डेंसिटी एक सी है, वाटर हैज़ गॉट डेंसिटी 1 और यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, इसलिए डेंसिटी में वेरिएशन नहीं है। लेकिन हवा का क्या होता है? हवा पृथ्वी की सरफेस के ऊपर डेंस होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। आप यदि 10 किलोमीटर ऊपर चल जाओ तो जहाँ हवाई जहाज उड़ता है तो वहाँ डेंसिटी बहुत कम है, हवाई जहाज को बंद रखना पड़ता है, ठीक है ना, और अंदर हवा भर के रखना पड़ता है। ओके, यदि गेट खुल जाए तो अपन सांस भी नहीं ले सकते। ओके, दैट्स द सिचुएशन। सो देयर इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट हम यहाँ कैसे करेंगे? ओके, ओके, जुड़ चुके हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, ये दिखा, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आई नीड 1 or 2 वॉलंटियर्स। आ जाओ। हाँ, स्टूडेंट्स ओनली 2। ओके, ये लेज़र बीम है, चलती है, देख लो, है ना। इस पानी पे डालो, ऊपर जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ओके, ठीक है। यह रास्ते में दिखती है? नहीं, नहीं, यहाँ दिखती है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, वे आई हैव गॉट अ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। खुशबू आ रही है शरबत जैसी आ रही? यस, शुगर सॉल्यूशन है। ओके, शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे और इसको यदि इस पॉट में डालेंगे तो क्या होगा, शुगर धीरे धीरे डिजोल्व होगी, ठीक है ना। आप यदि चीनी भी डाल देते हो कप में और फिर पीने बैठ जाते हो, जहाँ तक आप नहीं हिलाते वहाँ तक यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं आती, ठीक है ना, चीनी की। तो लेट्स डू दैट डेलिबरेटली। इसमें छेद कर रखे हैं हमने, यहाँ छेद है ना, इस छेद में से ये शुगर सॉल्यूशन डालेंगे। डालिए, ठीक है, केयरफुली। आप ध्यान से देखेंगे शुगर सॉल्यूशन नीचे नीचे जा रहा है, हाँ, ओके। और धीरे धीरे शुगर के मॉलिक्यूल ऊपर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। सो देयर विल बी ए डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके, अब लेजर बीम डालो, नहीं यहीं से डालो। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ये लेजर बीम स्ट्रेट जाने की जगह बाउंस होती है, इट ट्रेवल्स इन ए नॉन लीनियर पाथ। तो नेचर में भी ऐसा ही होता है, हॉरिजन से नीचे यदि सन आ जाता है तो भी दिखता है हमको। लाइट तो स्ट्रेट होती है ना, और मदर अर्थ गोल है, ओके। तो एक हॉरिजन से नीचे जाते ही नहीं दिखना चाहिए, राइट, बट फिर भी सन की रोशनी मुड़ के हमारे पास आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, कैन यू ऑब्जर्व दिस? हाँ, ये बाउंस होके वापस जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नाउ दीज आर ओपन एंडेड एक्सपेरिमेंट। आप पोटेशियम आयोडाइड से क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड से क्यों नहीं करते हो? मैं शुगर सॉल्यूशन से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किस में बाउंसिंग इफेक्ट ज़्यादा है, नॉन लीनियर
जो डायनेमिक्स है, ऑयल तो सरफेस पे रहता है, इट डजंट डिजॉल्व, बट यदि डाइक्लोरोमेथेन डालेंगे तो डेफिनेटली इट डिजॉल्व्स. ओके, सो इस एक्सप्लोरेटरी साइंस करने के साथ साथ हमें हमारे दिमाग के दरवाजे खोलती है. ठीक है ना, जो हम काम करने लगते हैं नया आइडिया आता है. ओके, सो दैट इज द मेजर मैसेज ओके वी आर गेटिंग फ्रॉम द लाइफ हिस्ट्री ऑफ J.C. Bose. ओके, तो बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. ओके, आपको वन ऑफ द लेक्चर में बोला गया कि नॉलेज कहीं से भी लीजिए, गूगल से भी ले लीजिए, ठीक है ना, लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी. हमारे वीडियोस काफ़ी अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा. हाँ, वाई के विजय के नाम से है. ओके, बता दें, ठीक है. तो मेरा तो दूसरा मैसेज ये है, करके देखो, साइंस को अपना लो. ओके, यदि साइंस के फील्ड में रहना है तो कोई न कोई प्रयोग शुरू करो. एक प्रयोग करोगे तो दूसरे के लिए अपने आप तैयार हो जाओगे. ठीक है ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट इकट्ठा किया, दूसरा इकट्ठा किया, तीसरा इकट्ठा किया. आई गॉट अ बिग लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच आर इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है. ओके, उनके ऑपरेटर्स हमारे साथ रहते हैं और वही हम कई स्कूलों में, कॉलेजेस में लगाते हैं. ओके, सर का एक YouTube चैनल है सर, उसका लिंक हाँ, please आप बताइए. लोगों को बताएंगे. YouTube channel. Write it I down. think you can visit the experiments I there, think in the okay? tea time you can give them physically, you can tell them. वेल आपको वेव्स के लिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन लेके आया था, क्विकली हम कर दें, एक मिनट में कर दें. 2 मिनट, हाँ, 2 मिनट, लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके खत्म कर दीजिए. हैं? हाँ, ठीक है. क्योंकि अब लेके आए तो कर दें, ठीक है. नहीं तो कोई बात नहीं. नहीं, कर दीजिए. We'll go for tea after this because there was one more talk in this session, but I think it's now 11:45, so I think. बच्चों को सीखने के लिए है, आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएं. ओके, वो बाद में बोल देंगे. बता देंगे, खोल के दिखा देंगे. देखिए, We'll announce the YouTube channel. We'll take it from sir and we'll announce it next time. एक दो स्टूडेंट्स को बुला लीजिए. Students only two. No. 2 students, 2. स्कूल के बच्चे 2 बच्चे आ जाइए इधर. हाँ, लगाओ. आ गए बच्चे. हाँ, ऑन कर दो. देखिए, आप इनमें से क्या क्या चीज़ पहचानते हो. बोतल का ढक्कन है, ठीक है, और ये स्पीकर है, बाजार में मिल जाता है. स्पीकर पे बोतल का ढक्कन लगा दिया. ओके, स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, देखो कर रहा है. इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, अब नहीं कर रहा. तो एनी सोर्स विच इज वाइब्रेटिंग कैन जनरेट वेव्स आउटसाइड. हाँ, फील कर लो. हाँ, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. ओके, तो इसमें सीधी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते. ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम करना पड़ता है. 220 वोल्ट आती है, तो 220 वोल्ट स्पीकर को कनेक्ट कर दिया तो खराब हो जाएगा. बट उससे 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बाजार में मिलता है, ठीक है ना. सो दिस यू कैन मेक एज ए प्रोजेक्ट. ओके, अब इस वाइब्रेशन से वेव्स कैसे जनरेट करनी है, लेट अस सी दैट. ठीक है, इसको तो यहाँ रख देते हैं. तो दिस इज अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन. नाउ वेव्स देखने के लिए यू नीड अ स्ट्रिंग. क्या चाहिए, धागा चाहिए. ओके, और धागे में क्या जुगाड़, एक बॉल लटका रखिए. खोलो इसको. हाँ, खोल दो. इससे वाइब्रेशन निकल रहे हैं ना, ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको यहाँ रखते हैं स्टैंड पे. एक पुली है, धागा दो, ठीक है. इसको तो उस पर लगा दो, ढक्कन को.
ये धागा इस पुली से जा रहा है, ओके, ढक गया है, ऊंचा कर लेंगे। हाँ, बिजली का नहीं है ना अभी, वो तो बच्चे ये देख के बता देंगे। व्हाट इज हैपनिंग? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कहीं नोड एंटी नोड दिख रहा है, ओके, सो दिस इज अ प्लेजर। क्या खुशी होती है साइंस का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हम समझ के कोई चीज़ हमने की, क्या की कि एक वाइब्रेशन का सोर्स चाहिए हमें, तो स्पीकर को एक सोर्स ऑफ वाइब्रेशन यूज़ किया और उससे वेव जनरेट हो रही है नहीं, उनको देखने के लिए एक धागा ही तो चाहिए और उसको वहाँ लटका दिया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द अरेंजमेंट। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो सो दैट इट बिकम्स फर्म। ओके, देन यू कैन सी द वेव प्रॉपर्टीज इन द स्ट्रिंग जिसमें नोड एंड एंटी नोड होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किताबों में लिखे हुए हैं, डायग्राम बने हुए हैं, बट उनका रियलाइजेशन नहीं देख पाते इन द लेबोरेटरी, ओके। तो साइंस सीखने के लिए रोल ऑफ लेबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जेसी बोस साहब ने क्या किया, घर पे ही एक प्लांट लिया, उससे धागा लगाया और किसको बनाया, ठीक है ना। तो टू डू द एक्सपेरिमेंट यू नीड टू वर्क, okay, then you can generalize, all right. So वाइब्रेशन एंड वेव्स का एक सिंपल एग्जांपल है। स्पीकर बाजार में मिल जाते हैं, ट्रांसफार्मर बाजार से मिल जाते हैं, उनको इंटीग्रेट कीजिए एंड एज आई एक्सप्लेन, एसी सीधी आपने लगा दी तो स्पीकर ख़राब करोगे 50 रुपये का, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज से चलाओगे, चल जाएगा, ओके। दिस इज हाउ इट इज डन। I think we should give him a big round of applause, please. An excellent demonstration. Beautiful. I think, standing ovation. That's really good. Thank you so much. Momento. Thank you. Thank you so much. Great. It's a pleasure. Very good, very excellent demonstrations he has given today. I think all the students will be benefited by this because this is just an example, he said, that few things which we study in the books of physics, general rules and laws, which can be demonstrated by very easy means. Settle down immediately. Please settle down. हम लोग कर सकते हैं लेबोरेटरी में। आजकल आई थिंक स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट दिया जाता है कि कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट करो, तो आप लोग, ये तो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था, आप लोग भी अलग, ठीक है। Yeah, in many schools have got Atal Tinkering Lab. आप जाइए वहाँ अटल टिंकरिंग लैब में, क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें वहाँ दी हुई है, ओके। उनको यूज़ कीजिए एंड एन्जॉय इट, ओके। क्योंकि स्कूल वाले अटल टिंकरिंग लैब में अलग से पीरियड नहीं लगाते, दैट्स द प्रॉब्लम, सिस्टम की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपको होमवर्क मिलता है, अटल टिंकरिंग लैब में होमवर्क नहीं मिलता, ऑलराइट। आप खुद कर सकते हैं ये सब, एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है ना। बट आपका जो क्यूरोसिटी है वो डेवलप होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, आपका विज़न डेवलप होता है, आप एक्सप्लोर करते हो कई चीज़ों को। तो कई तरह के सेंसर, कई तरह के कंपोनेंट्स, स्पीकर, वायर, ये सारी चीज़ें अटल टिंकरिंग लैब में आपको मिली हुई है, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर दैट, नहीं तो ये सब चीज़ें बाज़ार में मिलती है, ठीक है ना। आप खिलौने भी तो खरीदते हो ना, तो ट्राई टू बाय फ्यू थिंग्स। अभी ये लेज़र आराम से 500 रुपये का बाज़ार में मिलता है एंड यू कैन प्ले विद इट, वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू, ओके। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, अटेन्यूएशन एंड मैनी थिंग्स, ओके, स्कैटरिंग, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों से, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, ओके। एंड यदि आप सीख गए तो डेफिनेटली वो वेस्ट नहीं जाता, ओके। आप किसी न किसी को ज़रूर बताते हैं, शेयर करते हैं, ओके। सो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ शेयरिंग वॉट एवर गुड थिंग्स यू लर्न, ओके। एंड दैट इज़ वॉट जेसी बोस सर सेड। और कुछ नहीं, जिनको नॉन साइंस नहीं आती, कहानी के थ्रू कोई चीज़ बोलें, ओके, so that it becomes attractive. All right? True. So thank you for your attention. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much sir.
for an Be in excellent touch. presentation and demonstration. And we have all really very Yes. excited by seeing your demonstrations. Now, on behalf For, of for benefit of all of you, I am equally young. ठीक है, मेरा 53 का बर्थ है, alright, so I am approaching 70 now. Okay, लेकिन अभी भी मेरे को एक्सपेरिमेंट करने में उतना ही मजा आता है जितना बचपन में किया जितना बचपन में आता है. Okay, we are always young. And, Scientists never age. when you do such interesting things, you always Remain young. remain young. That's Okay. true. Absolutely, I agree with you. ठीक है. 100%. Thank you. धन्यवाद. That was the message. तो अपना बचपन मत भूलिए. Enjoy learning. Okay. खेल खेल में सीख लीजिए and take the message कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है. ठीक है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करोगे तो ये देश की बाउंड्री क्या है, ठीक है ना, पूरा ग्लोब का भला होगा. ओके, इट्स अ ग्लोबल वर्ड नाउ. ठीक है ना, पूरा ग्लोब हमारा ही देश है, ये मान के चलो आप. देश कुछ नहीं है, पूरी सोसाइटी को आपको सर्व करना है. ओके सर, बच्चे आपको सुन के बहुत ही एक्साइटेड है. मैं उनके चेहरों से और उनके एक्टिविटीज से देख पा रही हूँ, पर हमें समय का थोड़ा ध्यान रखना है. और हम सर को एज अ token of appreciation from the conference organizers, we would like to present him a memento. So I would like to request Dr. Abhijit Sarkar to kindly facilitate him. A big round of applause. Thank you so much. Thank you very much. It's memorable. It was great. Yeah, Excellent. great. IUAC में मैंने करीब 20 साल काम किया यहाँ. जब ये बनी थी तब हम आते थे, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है ना, तो उसमें भी मज़ा आता था. अंबुज सर और पांडे जी सब कंटेम्प्रेरी हैं हम लोग. ओके, सो लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब सीख जाते हो और वो जब बच्चों को सिखाना होता है ना, तो दैट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. उसको हम बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हमें कोई टेंशन नहीं है, पेंशन आती है, ठीक है ना, घर बैठे रहें हम, ओके, सरकारी नौकरी करके रिटायर करके, लेकिन नहीं, एक आनंद आता है, प्लेजर आता है. ओके, ठीक है ना, टू डू समथिंग गुड एंड टू इंटरेक्ट विद यंग वन. ओके, सो एन्जॉय दैट एंड आई थिंक द कॉन्फ्रेंस वाज हाँ वाइंड अप चलो. ओके, हाँ और क्या, ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स doable चीज़ तो हमारा लेक्चर एक अभी ऑनलाइन लेक्चर होना था, तो वो टी ब्रेक के बाद डिसाइड हुआ है कि टी ब्रेक के बाद आफ्टर 25 मिनट्स अनाउंस we करें. will continue with this lecture. Before it, again, a very good afternoon to all. On behalf of the organizers, I am glad to be standing here to express my word of thanks for this session. इसमें नेट है क्या? A special thanks to our chairman, Dr. Sarkar, खोल के दिखाओ ना, all speakers एक and दो. listeners तो पता लगे for accepting our invitation and for being here us today on this session. Now I welcome to Dr. Abhijit Sarkar. Abhijit Sarkar, come on the stage, and Manish sir, Dr. Professor Manish Kumar Kashyap, वो उन्हें एक मोमेंटो से थैंक्स करेंगे. प्लीज Thank you, sir. Thank you so much, Professor Manish and Dr. Abhijit Sarkar. Now we will meet after a tea session, 20 to 25 minutes. So please, 20 minutes. Maximum 20 minutes. After this tea break, we will again meet here for an online lecture, a plenary talk, and next session. After 20 minutes, टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे. सब लोगों को 12:15 पे यहाँ पे वापस आना है ऑनलाइन लेक्चर के लिए. स्कूल के बच्चे क्रेस्कोग्राफ एक्टिविटी के लिए रिस्पेक्टिव सेमिनार हॉल्स में चले जाएंगे. थैंक यू.
प्रोफेसर शिवाजी राहा, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो डॉक्टर शिवाजी राहा जी, आप हमें सुन सकते हैं? सर आप माइक पर देखिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने का, आपका स्पीकर जो है म्यूटेड दिख रहा है। हाँ हाँ, जुड़ तो गए। ओके ओके, बोल के देखना। सर आप सुन सकते हैं हमें? नहीं सर, इसमें फ़ोन पे नहीं, उसमें माइक से बोलिए। ये ऑफ करता हूँ मैं सर, ये मैं व्हाट्सएप कॉल बंद करता हूँ, आप उससे बोलिए जी। सर आप हमें सुन सकते हैं शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी राहा जी? आवाज़ नहीं आ रहा। कंप्यूटर का ऑडियो दो। ओके, शिवाजी सर, मे आई ऑडिएबल? शिवाजी सर, सम प्लीज स्पीक। उधर से ठीक है मैम। मैक्सिमम है ये। अच्छा अच्छा, जॉइन ऑडियो कराना है क्या? ठीक है। हेलो, या सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अनिकेत। स्पीकर सेलेक्ट करो। ठीक है। स्पीकर हेडफोन्स? नहीं नीचे 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 से। यही ना? हाँ हाँ तो ऑडियो ओके।
शिवाजी सर एक बार टेस्ट कर लो ना. जल्दी अपलोड कर दिया समझिए ना, समझिए मैम. मैम 4 बजे हमें डायस चाहिए. आप चलिए इसके शिवाजी का वो तो स्टार्ट करो उनको वो बोल दें. Please assemble back to the main auditorium. It's request. We are going to start the technical session. Speaker is waiting for us. देखिए शिवाजी का वो तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ. बोलो. सर का ऑडियो नहीं आ रहा ना. Professor Shivaji, could you? Hello, Professor Shivaji Raha, could you hear us? कैसे तो who will do the? Yeah. ऑडियो ज्वाइन है क्या हमारा? ऑडियो ज्वाइन नहीं है यहाँ से. सर उधर से खुला हुआ है होस्ट कौन होस्ट कौन है? हाँ. अच्छा आप होस्ट हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. तो हाँ ठीक है. ये देखो ये ज्वाइन ऑडियो यहाँ से आप ज्वाइन करो. Hello. Professor Raha, can you hear us? Okay. But we can't hear you. So is there any problem with your microphone? Shouldn't be. My audio seems to be working fine. Now I can't hear you. Why don't I log off and log back in again? Okay. ये नहीं आ रहा. हाँ. Very good afternoon, friends. Now, in the next session, we have a very distinguished speaker, Professor Shivaji Raha, in the Department of Physics, Centenary Campus, Bose Institute, Kolkata. He is going to speak on contemporary relevance of works of J.C. Bose. So, Professor Raha, please continue. Please start your talk. No, he is not connected. Can you hear me now? Hello. Okay. Yes, sir, we can hear you. Okay. Yes, sir. Very good. Yes, sir, please start your talk, sir. Okay. Very good. Yeah, sir, take around 15 minutes, sir, since we are already running late. Yeah, so please start your talk, sir.
everybody present here, online or offline. My apologies that I could not be with you in person. Uh, I would not have missed this opportunity to propagate the message propounded by the illustrious doyen of Indian physics, Indian science, Acharya Jagdish Chandra Bose. But what can one do? There are other calls, so I have to be satisfied with talking to you over the net. But this is a topic very, very close to my heart. That is because J.C. Bose was not only the father figure of Indian modern science, but he also did not get the recognition that was due to him as a truly remarkable and fundamental scientist who did many seminal works, the relevance of which are only becoming now. Today, if somebody asks, what do you know J.C. Bose for? Most of the people give two very simplified answers. One is that he discovered radio, which was stolen by Marconi. And the other is that he had discovered that plants have life. Both of those statements are unworthy of a scientifically inclined person, let alone from students of science. Why do we say that? In fact, J.C. Bose was the very first person to initiate the tradition of design experiments to establish concepts and products. I just listened to part of the previous demonstration talk where the speaker very rightly pointed out that the object of science, understanding of scientific principles, is through experiments. Yeah, there seems to be a very strong echo in the line. Am I audible or? Hello? Sir, Hello? online you are perfectly audible. Okay, okay. There was a very strong echo, so that's what troubled me. Okay, J.C. Bose was the very first Indian scientist who brought in this concept of experimentation, designed experimentation, with the aid of equipments which either can be designed or manufactured, and with them to understand basic facts of nature. See, one talks about the difference between Eastern science and Western science. Eastern science traditionally has always been based on observation, intuition, and logical analysis. The Western science went a bit further than that. The Western science adopted these principles and included the idea of falsifiability. Today we understand that every physical law is valid in the domain in which it is discovered. There is a law to the limit of validity of every single principle.
For example, in high school, you hear about conservation of energy. You know that kinetic energy gets converted into potential energy. There are various other kinds of energy like heat and so on. And all of these together, the total energy content of the system is conserved. That's fine. But only when this is true for systems which obey Newtonian mechanics, Galilean principles. When you go to very, very high velocities, you know that is the Newton's laws of motion get replaced by the Lorentzian laws of motion, the special theory of relativity of Einstein. And that's how the limit of non-relativistic dynamics goes over to relativistic dynamics. And then, in order to conserve, then mass and energy become convertible. So that when one talks of conservation of energy, one also has to worry about the mass, the energy equivalent of the rest mass of the bodies. So that's the kind of observation. There are things that do not necessarily come out of observations. They come out of experiments and deductions. So that is where the confluence between classical and non-relativistic and relativistic dynamics. In more general terms, the confluence between the Eastern approach to science of logic and observation to Western approach to science of designed experiments and measurements. And J.C. Bose was the very first Indian scientist who made this marriage possible. This is a very brief talk. I won't be able to do justice to everything that I wanted to say, but I will just try to enlighten you with a few anecdotes how J.C. Bose was truly a seminal scientist, and the approach that he employed should be a guiding principle for the new generations, your US students. J.C. Bose's first claim to fame was the discovery of the wireless signaling through millimeter waves. Millimeter waves means the light waves of which the wavelength is of the order of millimeters. Now, you have probably heard that in the 1860s, 1864 to be exact, James Clerk Maxwell presented a theory by which he showed that electricity and magnetism are not two different forces, but actually they are the manifestation of the same force. The first example of the unification of physical laws. And what he showed is that this Maxwell's equation, through this Maxwell's equation, he showed that this admitted electromagnetic waves, the velocity of which was the same as the velocity of light. Well, he couldn't show that it was the velocity of light, but that came out to be correct through observations and experiments. Now, in order to show that the electromagnetic waves also have the property of light, you need to produce electromagnetic waves and show that they also have properties of reflection, refraction, polarization, and so on. Okay. Now, James Clerk Maxwell
Maxwell's equations in various forms, in all kinds of fields, is valid even today. And in fact, it is the basis of the foundations of modern physics. The entire field theory rests on Maxwell's equation. And okay, so in order to prove that Maxwell's theory was right, the the electromagnetic waves needed to be produced, and also one had to find detectors, suitable detectors with which put these waves into evidence. The first time such an electromagnetic wave was produced was in 1888, and that was by, and so that's why these were called Hertzian waves. But these waves had wavelength of 66 centimeters, almost a meter long. Okay. Now, if the basic wavelength of a wave is 66 centimeters, then to reflect it, to show its refraction, and so on, you need lenses or prisms or mirrors, which are the size of walls, okay, size of a room. And so that's why it was very, very difficult to conclusively establish that there was birefringence properties, that is, these electromagnetic waves did behave like light waves. And the entire world was at that time trying to produce Hertzian waves much smaller than these 66 centimeters. The entire world was really struggling to make short wavelength light waves, electromagnetic waves. And sitting in Calcutta, without the aid of any experimental laboratory, J.C. Bose managed to shock the world, the entire scientific world, by producing waves of the order of 5 millimeter. So these were the very first examples of a millimeter, which he could show the existence of reflection properties, refraction properties, polarization of the electromagnetic waves. And so that was the clinching proof of Maxwell's equations. He demonstrated it in the Royal Institution. Now, the two features that he employed that were his novel introduction into this study, which are in use till today, are the use of a waveguide. If I let me just allow me to share the screen and see if I can. Okay, I'm assuming the screen is visible. This is a schematic design of the experiment that Sir J.C. showed at the Royal Institution. And this is where the microwave, this 5 millimeter wave, is generated. It's propagated essentially through a tube, which is a waveguide. And this was done at a time when the theory of waveguide was with which he wanted to diffract the signal.
And this is the receiver. Okay? And this is what is now known as a horn antenna. It's a collecting funnel. Professor Raha? Yes. Sir, we are short of time, and if you can please wrap up your talk, it will be a help to us, sir. I'm extremely, I apologize for interfering in your talk. Yeah, let me try. How Yeah. much time do I have? Sir, if you can just wrap up in next 5 minutes. Right. Okay, in that sir. case, Okay. Thank you. Thank you. Yeah, I'll just say 2 or 3 words and be done with it. He used a design of a collecting funnel, which is now called the horn antenna. These are in use today in astronomy. Waveguides are widely known, and in fact, it was the design of the horn antenna which allowed Marconi to make a success of his radio transmission experiments. The application of microwave research that J.C. Bose started was primarily the reason for which the development of radar and the microwave technology, the use of mobiles has been made possible through those discoveries. In fact, one of the bandwidths that is used in the mobiles today was the one that J.C. Bose had first established, 900 megahertz. Now, the notable feature of the detector that J.C. Bose designed was the use of its lead sulfide crystal, galena, which was the first example of a semiconducting device. And as you all know, semiconductors are essentially the primary feature of the electronics industry today. Without them, the chips or the entire electronic industry would come to a halt. So J.C. Bose was the very first person to use the semiconducting device, and he even studied the physical characteristics of the response function of the semiconductors. Now, semiconductors really were understood by the community only in the 1950s. So Sir Neville Mott, one of the most respected solid-state physicists of the world, a Nobel laureate, said that J.C. Bose was at least 50 to 60 years ahead of his time. He anticipated the existence of N-type and P-type semiconductors. He made the first example of the use of a semiconductor in an electrical device. And if that is true, that J.C. Bose was 60 years ahead of his times, he shifted his attention to biological systems and look at the electrical responses in biological systems using the same kind of detector that he had used for millimeter wave research, and showed that there was a very strong similarity between the responses of living and non-living objects. This was not really taken very kindly by the society, by the scientific society then. But that was J.C. Bose's philosophy, that he established his viewpoint through more and more detailed experimentation, through better data and better observations. And he essentially established the tradition of making accurate physical measurements in biological systems. So in that sense,
J.C. Bose is truly the father of biophysics in some sense. Now, since there is no time, I will just conclude with one anecdote, and that is during the celebration of the 150th year of J.C. Bose's birth anniversary in 2008, there was an international conference held at the University of Cambridge, which I had the fortune of being invited to and attending, because I happened to be the director of Bose Institute at that time. And in that conference, which was titled A Journey from Physics to Biology, international experts from all the continents attended. And after taking stock of J.C. Bose's plant physiological investigations and their impacts, the consensus emerged that the observations that J.C. Bose had made more than 100 years ago were only now being appreciated and validated. And so if J.C. Bose in microwave semiconductor physics research was 60 years ahead of his time, in plant physiology and plant consciousness studies, J.C. Bose was a century ahead of his times. This was internationally acclaimed, and I will conclude with one sentence, that it is not enough to rest on the laurels that J.C. Bose or other such stalwarts brought to us. J.C. Bose and Rabindranath Tagore were very close friends, and they exchanged a number of letters, in one of which J.C. Bose lamented to Rabindranath that we always talk about our ancient traditions, we boast of our great legacy, but what are we ourselves doing to be worthy of that legacy? I think that is a question we need to ponder on. Thank you for your attention. Yeah, I'm done. You, Professor Raha. Yeah. I don't know if there is any question to him. Otherwise, we will proceed to the next session. So, so post tea session, I request Professor Vibha Tandon, she is from JNU. I don't think that she needs any introduction, to chair this session. And in this session, we will have one plenary lecture by Professor C.M. Nautiyal and 5 oral presentations. So request to Professor Vibha Tandon to kindly chair the session. I have to speak from here. No, you can just be there also. Hand mic. Okay. Hello, Niket. Very good afternoon to all of you. आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार. First of all, I would like to thank organizers, Professor Avinash Pandey,
Professor Madhav Govind and everybody from the organizing committee to giving me opportunity to chair a session. And in this session, there are 5 lectures will be there. And the first lecture is being given by Professor C.M. Nautiyal, who was earlier a scientist in charge, Birbal Saini Institute of Paleosciences, Lucknow. Currently, Professor Chandramohan Nautiyal is working as a scientist in science and communication in INSA. And he has he's a master's in physics, and he has done PhD and postdoc from PRL Ahmedabad, and later on he joined the Birbal Saini Institute Sciences Lucknow, and later on, since 2018, he has moved to INSA for science and communication. I would like to call upon Professor Chandramohan Nautiyal to deliver his plenary talk, and please call him with big round of applause. Yes, quite another. I think it's off, yeah. Yeah, okay. Thank you, Professor Tandon, for the kind introduction. I thank Vibha and the other organizing agencies, Ministry of Culture and IUAC for this invitation to me. I'll be talking about Professor J.C. Bose's life and how he turned a new leaf in his life. I think a lot has been said about what Professor Bose had been doing, and that was something really wonderful which he did during that period of slavery. Also to raise the morale of a country which was under subjugation. So his contribution should not be just valued in terms of the physics or botany that he produced, but also in terms of the great respect that he brought to this nation. What he achieved can be summed up in terms of Patrick Geddes, who said, I have been asked whether the title of the book, he wrote a book, Lehen und Werk done Sir Jagdish C. Bose, Life and Works of Sir Jagdish C. Bose. He was asked whether the title of the book is really on the groundbreaker of science, who is by chance an Indian, or groundbreaker of the Indian science. And he replied, both. What he meant was that J.C. Bose was important not only to the Indian science, but also to the world science, because he made a very great contribution. I will not go into his details. I think you all have heard about them. Where he was born, his father was a deputy magistrate, but his father chose to put him in a school which was a Pathshala, a Bengali medium, a vernacular school, which was usually below the dignity of a civil officer.
But his father felt that Jagdish Chandra Basu should know about the country, its people, so that he becomes also a nationalist and he knows this country. And therefore, early years, J.C. Bose earned his education at a local school, which was not an English medium school. Of course, later he switched over to St. Xavier's School. J.C. Bose himself has remembered this. He said, at that time, sending children to English schools was an aristocratic status symbol. In the vernacular school to which I was sent, the son of the Muslim attendant of my father sat on my right side, and the son of a fisherman sat on my left. They were my playmates. I listened spellbound to their stories of birds, animals, and aquatic creatures. Perhaps these stories created in my mind a keen interest in investigating the working of nature. I remember when I was in the 8th standard, we had a textbook by name, Easy English Prose, and one of there was, Is Not Beauty Enough? It was written by Lucia Turnbull, perhaps a Britisher. And I very distinctly recall that the theme of that chapter was, J.C. Bose was looking at these fireflies, and then a question came into his mind, why do they glow? And then another question cropped up in his mind, is it really important to know why they glow, or this is good enough to understand that they glow and watch and enjoy the beauty? Now, this is what differs a poet from a scientist. Everyone, every poet, a common man, everyone looks at the rainbow, appreciates its colors, its beauty. But a scientist thinks why there are colors in this rainbow. Why do we watch this rainbow only around a particular time when there is moisture in the air? Or why this is of this particular shape? So that, I think, appreciates and distinguishes a poet from a scientist. A poet looks and appreciates the beauty, everybody does, and a scientist goes one step beyond that and wants to understand why. So this why remained ever alive in the life of J.C. Bose, and that's the reason, despite being basically a person who was perhaps initially destined to be a doctor, did not continue that, and because of a professor of physics at St. Xavier's, he started studying physics and did a tremendous job in physics, and later he switched over to the biological sciences, and there too he did a tremendous job. Now, there are some Indian authors too. I have been told about the 4 authors who wrote about J.C. Bose. And what they said was that J.C. Bose was a failure in physics. I'm quoting from a book. And they said that 4 of the Indian authors felt that J.C. Bose was a failure in physics, so he switched over to biology. There can be nothing which is farther from the truth. What he did in those times brought Nobel Prize for Marconi. So he was a success in physics, but he was a person who always remained curious. Einstein has said that curiosity is one of the most important traits of human character, and people who remain curious are the only ones who try to answer the questions which crop up in the mind. Higher education, again, I think people have told you since yesterday about that. He went to the Christ College in Cambridge, one of the very prestigious colleges, and there he was taught by people like Rayleigh and Francis Darwin. Darwin was Darwin's son. This is an important point in his life, because if you are taught by good people, if you are taught by great people, then there are chances that you will try to emulate them. And this, I feel, is something very important when you choose an institution of learning for yourself or for your children or for anybody. He completed his typos in natural sciences, and then he came to Kolkata, and then he was offered a job. But the irony was that unlike the British people who were getting the full salary and a federal appointment, he was treated as a state government employee, and he was given 2 versions I have read, half the salary or 1/3 of the salary. So let us say 2.5 times less than his British counterpart. Now, this was something extremely derogatory, and Professor Jagdish Chandra Basu refused to accept his salary for 3 full years. His father had been a senior officer, so perhaps he could survive. His wife must have been very understanding, but for 3 years he survived without salary.
He even bought the instruments from his own money because there was hardly any money for research. But the result was that after 3 years, the government had to buckle under the moral pressure, and that's why we say the first satyagrahi of this country in the last few centuries was Jagdish Chandra Bose. This insistence, this agraha for satya or for truth was his characteristic trait, which he continued to have whole his life. When his 150th birthday was celebrated, his institution, the Christ College in Cambridge, celebrated it, and they really credited him with the discovery or the invention of the millimeter waves, or establishing a new cornerstone in the radio communication. And what was said by Professor Martin Johnson in his website for the symposium on his 150th birthday, he said that pioneer of electromagnetic waves and widely regarded as the first modern Indian scientist, Jagdish Chandra Bose was a far-sighted visionary and gifted experimentalist. In 1895, in electromagnetic waves, in Calcutta, he publicly demonstrated wireless transmission of electromagnetic waves for the first time anywhere in the world, using the waves to ring a distant bell to thereby explode some gunpowder. The Daily Chronicle of England noted in 1896 that the inventor J.C. Bose has transmitted signals to a distance of about a mile, and herein lies the first and obvious, exceedingly valuable application of this new theoretical marvel. Bose was also the first to use a semiconducting crystal as a detector of radio waves, as Professor Raha just pointed out. He used galena or lead sulfide as a detector. And this was something very new. In fact, at the end of the lecture, I'll tell you some other compliments he got, some of the new things which he did, which even after 150 years after he was born, they are being used by places like Kitt Peak Observatory. As Professor Raha just mentioned, J.C. Bose was said to be at least 60 years ahead of his time. This was said by none other than Nobel laureate Neville Mott. In fact, he said that he had anticipated the existence of P-type and N-type semiconductors. And you know that semiconductors is the foundation of modern electronics. Earlier, we used to have radios this size in our houses. Many of you may not have seen them, and now we have something within our mobile phone or this small transistors. He used waveguides, horn antennas, dielectric lenses, various polarizers, and even semiconductors at frequency as high as 60 gigahertz. Much of his original equipment is still in existence in the museum of that institution, Bose Institute in Kolkata. Some concepts from his original 1897 papers have been incorporated into a new 1.3 millimeter multi-beam receiver now in use at an observatory at Kitt Peak in a 12-meter telescope, a really very huge telescope. That shows that the basic ideas never get obsolete. Even today, he is relevant. He was one person who always believed in the true Indian rishis traditions that knowledge is for the benefit of the mankind or the humankind. It should not be commercialized. But there was one occasion in 1899 when he was thinking of establishing the Basu Vigyan Mandir or the Bose Institute. He was pressurized by somebody known to him, Sarah Chapman Bull, Britisher, and she said that if you want to raise some money for your institution, you have to have it patented, one of your discoveries, and then you can earn some money. So under that pressure, he did that, but after 1 year, he did not renew it. In fact, even the 80 sterling pounds which were to be paid as fee for this patent were given by Sarah Chapman Bull. And later, when Jagdish Chandra Basu, he returned that 80 sterling pounds, writing a check to her. She never encashed it. In fact, she gave it to Abla, that is Lady Abla, wife of Jagdish Chandra Bose. He believed patents should never be the goal of a scientist's invention or discoveries. Well, this is different from what we have begun to think now. Patents should never be the goal of a scientist's inventions or discoveries. The fruits of science should be available to the entire mankind. And like Marie Curie, like Madame Curie, he never believed in patenting, and all his inventions and discoveries were sometimes commercialized by other people. They earned a lot of profit out of that, but he never did that.
This is the photograph of his equipment, and he used galena, as I told you earlier, lead sulfide crystals contacted by a metal point for detecting. At that time, you know that the other people who had used wavelengths of 5 meters or even longer, he was able to generate millimeter waves, just 5 millimeter wavelength radio waves, which was the smallest for some time. And in fact, several other things, one for which he got DSc from the London University in 1896, he got it even without being physically present for any examination, any interview or anything. So much was the impression made by his work. As for the facilities, he had very little. He had a room which had a floor area of 24 square feet, which is approximately 6 by 4 or 8 by 3. If he wanted to go by the conventional method, a huge crystal would have been required, and it was not possible to have to accommodate that big an instrument inside the space which he had. Therefore, by compulsion, he had to devise something which would be very small in size. And he toiled really hard to find a very, very small detector which could fit into a small suitcase which was portable, which he could carry with him. He has invented many things: an horn antenna, electromagnetic waves of 5 millimeter wavelength, and then he did experiments in biological sciences, pulse growth of plants, and he made a demo using it, using an indigenous crescograph. Now, there is another story about crescograph. This was never accepted by the European people, that somebody in India was able to detect such small growth of plants with any instrument. Germany, as you know, was and is a world leader in mechanical things. The trick which J.C. Bose applied was very genuine. In India, particularly in those days, we used to have traditions in the family that a person would go for doing the same job again and again for his whole life. If somebody is working with gold fiber or gold string, whole life he would keep working with gold string. He won't even switch over to silver. And this tradition would go on generation after generation. And those people had tremendous mechanical skill. And this is which Bose exploited. He went around searching for such talented people who were very good at mechanical jobs. He searched them, paid them, and put them on the job, and finally was able to make this crescograph where lever system was used. Now, another thing was what European people said. They said if you use lever so as to get 1:10 advantage in the displacement, this is fine. But if you go for 1:100, there will be a lot of instability, and no system can be made with this kind of lever. But Bose did that. But I'll tell you that there had been some criticism, particularly by some German people. This is the line diagram of the automatic recorder for photosynthesis. He also worked on the ascent of sap in the plants. But then, initially, most of these things were dismissed by the European counterparts, but history judges for itself. And an Australian biophysicist, V.A. Shefford, has written, contention that coupled electrical and mechanical pulsation or oscillations are fundamental to life processes in plants seems far less far-fetched in 1999 than in the decades after his death. That means 60 years before, when the discovery of chemical signaling through auxin and wide acceptance of the tension cohesion theory pushed Bose's work to the far fringes of orthodox plant physiology. The classical botanist never accepted his views. Even those who were expert in engineering and physics refused to accept that somebody could make an instrument which was able to sense those small incremental growth in the plants or small movement of the plant parts. They didn't accept it, but 60 years after his death, this is what an Australian biophysicist said. The most important characteristic traits of Bose were independent thinking, originality, and self-reliance. And he said, the true laboratory is the mind where behind the illusions we uncover the laws of science. We have seen this working of brain in the case of famous mathematician Ramanujan. I will not go into that story, that's a different story. But then this is true that most of the things are worked out here. And as he said, that the other things are just mechanical manifestations of the thoughts. This is a very complex looking instrument.
for millimeter wave generation and detection. Before that, nobody had generated waves, electromagnetic waves of 5 millimeter. These are some of the photographs. I will not dwell much upon them. At the right, you see, is the horn antenna, which Professor Raha also talked about. He designed and fabricated a new type of radiator for generating radio waves. He also built a unique and highly sensitive coherer, which is a detector or the receiver, radio receiver for receiving radio waves. And this coherer was far more compact, efficient, and effective than those being used in the European labs. This was so small that he could put it in a suitcase, carry it with him to England, and make a demo in 2 years after he made it in India. I am showing you some close-ups of parts of his instrument to show you that these details were really done by them. And today, most of us who are working, on the press button machines, we press the button and everything comes as a digitized version, not even as a graph, as a digitized version. We cannot imagine how much work must have been involved for Bose to do all these things with his own hands. This is one of the Bose transmitter antennas seen at the right. And you can see that behind the grid, those spark gaps are there. Where high voltage is applied, spark is produced, therefore electromagnetic waves are produced, which are detected by the detector. If you want to read more about this, there is a paper by Emerson in 1997. You can refer to that. These spark gaps normally are mounted inside a transmission antenna, and these are the two views of the same thing. And you could see that all these things had been fabricated in-house in Kolkata, and they were not imported from UK or USA or Germany. And he was really indigenous. Frankly speaking, I don't understand how he made this polarimeter, and he used jute. Jute was used in making the polarimeter, and he used, in fact, a timetable for making a grating. Metal leaves were there, and these are the pages which you see of a timetable, and he used that to make a polarimeter. And this is the third one is a photograph of the original double prism attenuator for his experiment. Demo of his wireless microwave experiment was first made in India in Kolkata, and then also held at the Royal Institute London in 1897. The interesting fact, as you all know, is that Marconi was given the Nobel Prize for this work, even though he made his demo more than 2 years after Bose has done. But when Bose was told about this fact that he has got the Nobel Prize, he said, doesn't matter. As long as the discovery is done and the invention is done, it doesn't matter who gets the credit for that. About 2 decades ago at the National Radio Astronomy Observatory in Tucson, Arizona, a new multiple feed receiver, which is operating at 1.3 millimeter wavelength, was built and installed for the 12-meter telescope at Kitt Peak Observatory. I will not go into the detail, but this is a big receiver. But even here, 100-year-old idea of Bose was used. This is what great work means. Not that he was not criticized. I think this will be a lesson to all of us, particularly to young people who are hearing that be ready for criticism whenever you do something new. He survived brickbats. Von Ubist, a German scientist, what was said by von Ubist was, it must be our duty to stop mixing of exact science research with the nice, wonderful fantasies. That was so critical. We want to have fairy tale books and science books, but we don't want that the popular science literature becomes a hybrid between the two. Even then not, if for the time being it increases the interest in science. So Europeans in general were very critical. The reason Bose did not oppose them so vehemently was because at that time the friendship with Germany was very important from the nationalistic point of view. As you know that in the world geopolitics, Germany was the only country perhaps which would be helping, or maybe Japan, which were helping India against the British. So he kept quiet, he went to Germany, he made friends people, he gave lectures there, tried to explain to people what his science was all about. The fact was that Ubist tried to replicate the experiment, tried to make the instrument which J.C. Bose had made, the crescograph, but was not able to do that, so did not believe that anyone else could do it. Just now we heard Professor Shivaji Raha, and in an article which he published about 1 year ago, at the November issue of Dream 2047 published by Vigyan Prasar. You must read that article, it's available on net.
He wrote he made several extremely sophisticated and sensitive equipments using his own designs out of materials locally available and got them made with the local artisans. This essentially started the traditions of developing sophisticated yet affordable machine in India, which has been the hallmark of Indian science since then. Professor C.N. Rao says about J.C. Bose, he's my icon because he created science in India at a time when there was hardly any science. He built instruments when instrumentation was not heard of. He researched on problems related to transmission of radio waves when radios did not exist. He worked on aspects of plant biology which were unknown at that time. Jagdish Chandra Bose, he said, is a superb example of a very creative individual. The great contribution of Bose was he linked physics and plant sciences. He has been called the first modern experimental scientist of India, very rightly, and he did interdisciplinary science. Plant electrophysiology was a term which not many people know about, and at a time when people had not heard this concept. And then he has left an imprint, a stamp on the sands of time. What you see here is the upper crater is a crater on Moon, and it has been named after J.C. Bose. At the right, you see the stamp. At his 100th birth anniversary, India issued a postal stamp in memory of Jagdish Chandra Bose. But then he has a few lessons to give to us. He says, we must face life. Like that of my boyhood's hero, Karna. Karna is the famous Mahabharata character. He said, like that of my boyhood's hero, Karna, my life has been ever one of comet and must be to the last. It is not for the man to complain of circumstances, but bravely to accept, to confront, and to dominate them. And this is the principle he followed his whole life. According to 1997 Microwave Symposium Digest publication, finally, officially, his claim to the invention of radio communication was accepted in USA. And it was said that he developed an elegant millimeter wave spark transmitter, self-recovering Kohler detector. Until that time, after use, every time the detector had to be, jugged, somebody had to tap it so that it starts detecting the wave again. I don't know why, but this is how it was. He made a self-recovering detector. So he developed an elegant millimeter wave spark transmitter, self-recovering Kohler or detector, wire grid polarizer, cylindrical diffraction grating, dielectric lens, and horn antenna, and microwave absorber for the studies of reflection, absorption, and polarization of millimeter waves and its application to wireless remote control. Actually, in the first 6 or 7 years, he did not publish papers, and then in the next 5 years, he published about 15 papers, and all those papers were widely referred and appreciated. And Professor Raha has mentioned somewhere that in the year, I think in 2009, one visitor visited the Bose Institute, went to the museum, and after seeing the museum and the documents there, he came to the officers there, and then he said, having been here and seen, please listen to it very carefully because the suspense breaks at the end. This person said, having been here and seen the records, I am now convinced that Sir J.C. Bose had done the experiment on wireless transmission before that by my grandfather, G. Marconi. He was maternal grandson of Marconi, and he wrote in the visitor's book there that I accept that before my grandfather did it, J.C. Bose had done it. And he's not a mean scientist. He's with the European Space Agency, and he has done some important. He unfortunately passed away last year in December. But this is what he wrote in the visitor's book. So Bose did have brickbats from Germany, but he also has a lot of bouquets, and they speak a lot about his contribution. Kelvin, Lord Kelvin, you all have heard of. Anyone who talks of temperature would know Kelvin. He said, I am literally filled with wonder and admiration for so much success in the novel and difficult problems which you have attempted. There cannot be a greater certificate than one coming from Kelvin. The president of the French Academy at that time said, by your discovery, you greatly furthered the cause of science. You tried to revive the grand traditions of your race, which bore aloft the torchlight of art and science, which was the leader of civilization 2,000 years ago. We in France applaud you. And then
a journal electrician wrote, "It's remarkable that no secret was at any time kept as to the construction of his apparatus, so that it has been open to all the world to adopt it for practical and possibility of money making." So he was a true worshipper of Saraswati and not of Lakshmi so much. And that's why the message he gave was, rise from your depression, cast off your weaknesses. Let's think. We often forget that the real laboratory is one's own mind. The room and the instruments only externalize that. Every experiment has first to be carried out in the inner region, that is in the brain. To keep that mental vision clear, great struggle has to be undergone. This is it in Bangladesh during a lecture. And then during a lecture at Presidency College in Kolkata, he said it was not for the man to quarrel with circumstances, but bravely to accept, to confront, dominate over them. And we belong to a race which had accomplished great things with little means. So thank you very much for a very patient time. These are some of the references. If you want, you can just click and. So, thank you very much, Professor Nautiyal, for your wonderful lecture, and starting from his birth and taking and giving us a complete journey of his scientific work. And we have been hearing about Professor Bose from yesterday. So, is there any question from any of the student? कुछ अच्छा नहीं लगा या सब कुछ आता है या कोई इंटरेस्ट नहीं है? Yes, please. Although I am reporting this session, but मेरे मन में एक सवाल है सर इसको लेके कि जेसी बोस सर वहाँ से इंडिया आए बाहर से जब, तो उनको कोलकाता में जॉब मिल गया था, तो वो सैलरी अपनी नहीं ले रहे थे वहाँ से. सो इसके पीछे क्या कारण, अगर आप इसको बता पाएँ कि वो अंग्रेज़ किस बात से लेके मजबूर थे कि वो इनको हटा नहीं सकते थे, कि आप जॉब से इनको वो हटा भी सकते थे क्योंकि इतने अत्याचार उस समय हो रहे थे भारतीयों के ऊपर, तो वो मैं थोड़ा सा सर जानना चाहता हूँ. इसमें मैं ये गेस कर सकता हूँ कि if someone does not accept the salary, that cannot be a reason for dismissing someone from the service. They fully understood, and the country understood, that this was a kind of satyagraha. But there was nothing they could do about it because he was not asking for anything. He simply said, I will not accept the salary in the present conditions because this is discrimination. His point was that I am doing the same job. In fact, he was doing better than anybody else. A Britisher is being treated as a government employee of the central government. I am being treated as a state government employee. I am getting 1/3 salary of what he is getting, so this is not fair. But he did not stop teaching. He did not stop researching. In fact, he published 14 to 15 papers during 5 years, that period. And even initially 6-7 years, he taught and he kept on doing his experiments. So I think there is something called moral pressure which worked. Okay, thank you very much. And because of the shortage of time, we have to say, so we can just thank, say, Professor Nautiyal. And I will request Dr. Punita Verma to give say, a token of appreciation from the side of organizing committee to Professor Nautiyal. It's okay, it's okay. नहीं सर, मुझे अनाउंस करना नेक्स्ट. So I know
that I'm standing between the lunch and you. But I would say that I don't know about all of you. मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैंने 91 में PhD की थी और तब से लेके आज तक बहुत बार सुना है मैंने साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिली कभी. तो अगर आपको लंच थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए, बिकॉज शायद ऐसी पहल आपको नॉर्मल सिम्पोजियम्स में नहीं मिलती, ऐसी बातें आपको सुनने के लिए नहीं मिलती जो आज आपके लिए विभा ने जो है कोशिश किया है और आपके लिए स्पीकर्स बुलाए हैं. तो आई थिंक यू शुड गिव योर से माइंड एंड योर हार्ट टू दिस सेशन. सो now I would like to introduce the second speaker, Professor Punita Verma. Professor Punita Verma is a professor of physics in Kalindi College University, and she has been a worker of say Vibha, and she has been she herself has written here, and I agree to this because I have very recently met her in another program that was Istri, which was being organized by Vigyan Bharati and Shakti, that she is a learner at heart and she is a Vibha Karyakarta and devoted to service of nation. Welcome, Dr. Punita, and I will request to finish it in 4 to 5 minutes. I'm really sorry. Please go ahead. Yeah, please, please. She will manage. That's better. She's a professor. She'll manage. That's better than 2. So we all know how to do our lectures. Yeah. So, yeah. One thing good about giving a talk after all the eminent speakers is that most of the work is already done. So I proceed now quickly to finish my talk within 4 minutes. I'm going to speak about J.C. Bose, a nationalist icon of selfless versatility. As we have already known, he has been spoken of by everybody since yesterday. What really struck me was that Tagore's praise about him, from the temple of science in the west far across the Indus, oh my friend, you've brought the garland of victory, decorated the humbled head of the poor mother. Today the mother has sent blessings in words of tears of this unknown poet. Amidst the great scholars of the west, brother, these words will reach only your ears. This was the praise of Tagore, and we have already listened to Professor Nautiyal mentioning that when he set up the Bose Institute in Kolkata, he called it a Bose Vigyan Mandir, a temple of science. How many of us think of our institutes as temples of science? We have to think. And let's not forget the contribution of his wife, who must have been a stalwart to him in every aspect that he did. We all know about the various aspects of Professor J.C. Bose, what a versatile person he was. He discovered electromagnetic waves, optics, botanist, he was a scientist, he had engineering capabilities, he discovered polarization, he was a zoologist without a degree in zoology. And he was a lover of plant kingdom, he was a scientific fiction writer, a lover of animals since childhood. He used to catch water snakes and used to catch fireflies, and he used to spend all his pocket money, whatever he used to get, on the care of animals, even during his school and college at St. Xavier's. He was a nationalist, and above all, he was a compassionate person. Are we thinking of him as that kind of a person? Let's see. I have just included one side about him, which fortunately has been already included by Professor Nautiyal. I was impressed by the fact that he actually thought that he could use jute, a rassi, to just show what polarization can be done with. This is an example for the students who are the larger part of the audience today, that very simple things around us convey the possibilities of physics and the phenomena of nature. Only we have to have an observational eye for it. So are we here just to sing praises of a great scientist we have lost now? Or let's see. Now you know the students' condition, they're always burdened with books, and now is the situation that if we want to tell a student what is reading, we have to say it's how people install new software in their brains. That's called reading. This is the situation, and I'm sure if Dronacharya was born today, and if he would have asked his Eklavya, can you give me your thumb? He would have said, sorry, I have to type text on my mobile, on WhatsApp and so many other things. I cannot give you my thumb. Ask for some other finger, maybe the little finger. So this is the situation, and then
What is it? What is it? What have we learned in 1.5 days? Almost everything has been spoken about. Everything has been spoken about Professor J.C. Bose. Am I here to repeat? No. I quickly think and share some thoughts of mine. So a student's perspective could be, why should I read the biography of a scientist who died long ago? What does it matter whether he was born in Bangladesh or East Bengal? What difference does it make to me? Every scientist is born somewhere. All students study, so he must have also studied somewhere. Why should I study whether he studied this place, that place, his graduation, his post-graduation? What difference does it make to my life? These are probably the perspective of the students of today. Many Indian scientists hail from Calcutta University. Does studying there ensure making of a great scientist? Well, should I try to go to Calcutta University? He must be lucky to have great teachers of science. I wonder whether I'm that lucky. Most probably not. Certainly, I cannot become a great scientist. I am filled with awe. This is the feeling that a student gets when repeatedly he is told about a great scientist who has done thousands and thousands of inventions. Now, a school teacher's perspectives could be, not all, but could be, these biographies are very difficult to be memorized by students. If history of science becomes part of syllabus, then it's basically a memorizing exercise and there is nothing in it to be taught. There will not be any question on it in final question paper as it is extra reading. Let's leave it to the students to read themselves. And therefore, the scientist biography in the pink box in the NCERT syllabus prevalent all over India is not read either by the teachers or by the students. So are we here just to sing praises of a great scientist we have lost now, or in science we start first with the background of the phenomena. We talk about assumptions and we talk about how something became something. And so what made Bose a great Indian scientist? Bose, childhood impressions. Professor Nautiyal mentioned his quote on Karna. Bose read the Bengali translations of Ramayana and Mahabharata and his mother made him read those texts. Let's not forget the mother. She's got a very important part. He was inspired by these tales of sacrifice and heroism. I'm quoting from a textbook already published. Probably they remained embedded somewhere in his mind. In a letter to Tagore, he wrote, I am alive with the life force of the Mother Earth. In no other country do we call our earth the Mother Earth. Okay? I have prospered with the help of the love of my countrymen. He gave credit to his countrymen who actually did nothing. For ages, the sacrificial fire of India's enlightenment has been kept burning. Millions of Indians are protecting it with their lives, a small spark of which has reached its country through me. So humble was he. And in the end, when he established the Bose Institute, he said that so far as the limited accommodation permits of the Bose Institute, the facilities of the institute should be available to workers from all the countries. In this, I am attempting to carry out the tradition of my country, which so far back as 25 centuries ago welcomed all scholars from different parts of the world within the presence of the ancient seats of learning like Nalanda and Takshashila. I'm sure he had good lessons of history in Calcutta University. So the question that comes to my mind is, should we not enrich our students with the stories of national pride, whether it is through religious texts or through our rich history? I just happened to catch hold of a book and I'm just quickly giving you a glimpse. In Vedas, you have shlokas which actually talk about the feelings of the plants. So much has been talked about feelings of the plants. So it talks about osmosis and there are shlokas and you can see the quotation is clearly telling the shloka number of that book, Mahabharata Shanti Parva 184.16. As one draws water up with the mouth by suction through a lotus stalk, the plant endowed with air, pressure, drinks with its feet. I go on for the paucity of time. Photosynthesis, Mahabharata, Shantipura again. Water is drawn by the roots. It reacts with heat and light, air of atmosphere, and the combinations of water and air, heat, light makes the body fluid. And go on and on and on. The plants respond to light, trees can see, treatment of trees, tree dosha of the trees are also falling sick. So there is a lot of discussion in the Vedas over the behavior and the nature of the plants. Somewhere it makes me think, this is from that book, somewhere it makes me think that his mother must have shared with him some of the teachings of the Vedas where he got the idea that there is life everywhere around us. And now with quantum entanglement being so much in fashion in the physics field, what are we talking about? We're talking about one single particle conveying to the other particle without actual communication, because every single particle or the smallest particle has its own sense on how to do, what to do and how to convey without actual connection through wires. And the whole world is busy with quantum entanglement, as we know. So what do we learn out of this whole 2 days workshop? Can I become a great personality like Bose? I ask myself. Can I make my students a versatile personality like Bose? Can I instill the feelings of nationalism in the hearts of independent India born students? If the students today are unaware of the work of our great scientists, who is responsible?
What can I do about it? Is it really difficult to study so many subjects together? Bose did. And if Darwin's theory of evolution is correct, the present generation must be smarter and more intelligent than us. And I'm sure you all are more intelligent than us. Then why do we deprive our students from learning biology and mathematics together? Isn't it then the national education policy the answer to the required interdisciplinarity of the students? In the pre-British area, the Gurukuls in our country taught science and did not have forced medical and non-medical streams. Calcutta University did not have zoology at that time. So Bose was forced to take up physics, which was at that time a very famous subject. But his love of plant and animal kingdom resurfaced itself in his quest for knowledge and research. His interdisciplinary skills fills us with awe, but then that was the normal thing even before the British era started. So as a teacher, can I make another Bose is the one question which I take home from this conference. What ambience should I create for the metamorphosis of my student into another Bose? Am I making students like Meghnad Saha and Satyendranath Bose, the teachers of Professor J.C. Bose? Both of them had identical qualities. And if the audience here today is filled with the hall of students, you should study about Meghnad Saha and Satyendranath Bose, and you will find that, oh my God, Professor J.C. Bose made 2 mirror replicas of himself, and both of them were identical in many respects to Professor J.C. Bose. So the key lie, I think, in kindling the fire of quest in the brains of our students, discover the beauty of science, but this is not such a simple thing. So are we here just to sing praises of a great scientist we have lost now, or are we here to introspect on how we ourselves can reach the same heights? So I think let's all search for the Sir J.C. Bose within us, a selfless, versatile, nationalist scientist, teacher, and a compassionate human being. Thanks for your attention. Did I finish in time? So this is called a professor and this is called a teacher. She can do whatever you want from her. And nobody else can do it, I tell you. And this is the specific quality and which more or less other people who are in other profession, they're actually jealous of us. So yeah, it was a wonderful talk by her. And so she has asked that can we make our own students just like a Jagdish Chandra Bose, or we can go ourselves, try to become a 1% or maybe 5% of the Jagdish Chandra Bose. So can I ask this question from one of the students? Middle में third, yeah, you said no. Can I ask you why? No. Do you want to become Jagdish Chandra Bose? Can you stand up and introduce yourself? Yeah, please. So did you like it? Are you liking this conference? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लगा ये बताइए. बेटा थोड़ा आगे आइए. बताइए. जोर से बोलो. हम लोग को बहुत सीखने को मिल रहा है जेसी बोस के बारे में. काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जेसी बोस के बारे में. तो अगर मैं पूछूं कि तुम यहाँ से जाने के बाद इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो वो क्या है? जैसे मैम जेसी बोस ने बचपन से काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन रखे नेचर को लेके, और उसी से उन्होंने आगे चल के प्रेरणा ली, तो वो इतना बड़ा इन्वेंशंस कर पाए. तो यही सोच रहा हूँ मैं कि कीन ऑब्जर्वेशन मैं भी करना सीख लूँ थोड़ा बहुत नेचर के बारे में, जो अभी तक शायद मैंने नहीं किया, जो छूट गया मुझसे शायद. तो वही मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशंस अपनी बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं नेचर को लेके. So let's give a big round of applause for him. So thank you, Professor Punita, and I would like to call Pankaj to hand over say token to her. No, ma'am. We are the host. You're the host. Okay. Okay. Thank you. Fine. So now the next speaker in this session is another faculty from Delhi University, Dr. Rajni Grover. And Dr. Rajni Grover is a faculty in the Rajdhani College. Two of you are there. Okay. So Dr. Rajni Grover and Dr. Harish Kumar,
and they are the faculty in Rajdhani College, and they are teaching chemistry. And to both of you, I will again request that please try to finish in next 4 minutes. Thank you very much. So am I audible? Okay. So good afternoon one and all. I, Harish Kumar and Dr. Rajni will going to present the presentation title Runaway Cyclone, a Magical Realism by Acharya J.C. Bose. So from yesterday till now we have seen so many presentation about the J.C. Bose, and we have learned so much things about the J.C. Bose, that how many contribution he has made in the field of science. But we are not going to tell you about the science. We are going to tell you about a story because he is regarded as the father of Bengali science fiction also, and he has contributed a lot in science fiction writing also. So he has published one writing with the name of, I think the name is Palatuk Tufan, in the book Nirdeshar Kahini, which later on published in its English version by the writer Bodhisattva Chattopadhyay as Runaway Cyclone, and that is the title of our story. But as told by the organizer that we don't have so much time that we can tell you the whole story in detail. So with that limitation of time, we try to tell you the actual science behind that, how that little bottle of oil can stop that big storm or cyclone. And before going to hand over this mic to the Dr. Rajni, I would like to mention and would like to give thanks to Dr. Rajesh and Dr. Anu, as they both have also taken up the same topic in their respective presentation also, and they explain their version of science. So we will try to explain our version of science, that how that bottle of oil help in reducing or in making the storm calm. So over to you, ma'am. So, hello everyone. Yes, so J.C. Bose, a multifaceted individual who is not bound to the restrictions of the subject. So, today we will discuss his contribution to literature, because he had written a very beautiful story, a science fiction story, that was Nirdeshar Kahini. In 1896, he hit upon a novel marketing idea to promote a Swadeshi product, Kuntalin hair oil. Actually, the company organized a story writing competition, and the only condition of that competition was the story submitted for the award must feature their product, Kuntalin oil. And one of the entrant, the J.C. Bose, an eventual winner, who wrote the story of weather control in the form of Nirdeshar Kahini, which means the story of the missing one or the story of the untraceable. This story actually has two threads. One of the thread is a scientific mystery and the scientific puzzle. What is this? A mysterious supernatural occurrence was observed a few years ago by the science community, which and it shocked the science community by this mystery, that suddenly a cyclone which was heading towards the Kolkata abruptly disappeared without leaving a trace. How it happened? It happens like on 28th of September, the Meteorological Department Shimla published that in 2 days the cyclone in the Bay of Bengal is imminent.
On 29th of September, the frightening news was that they declared by 4 o'clock tomorrow, the Kolkata people will face the most destructive and the most dangerous cyclone. And all of a sudden, on 30th of September, the sky was dark in the morning. The cyclone was so massive that a newspaper published that the heart of a British Empire is in danger. But after pouring down a few drops of rain, the sky suddenly became clear. The storm vanished. No satisfactory explanation for the event has been found till now. This was the first part of his imagination. The second strand of the story, which is a sci-fi story of the Kuntal Keshri, this is a story of the author who faced severe illness years ago and faced baldness. So in order to overcome the stress, overcome the depression, he made the decision to travel to Ceylon. And on voyage to Ceylon, the ship is threatened by large waves because of rising cyclone. Staring at the imminent death, he remembers his loved ones, especially his 8 years old daughter. Daughter, yes, who had put a bottle of hair oil in his bag as a token of care. In a eureka moment, he remembered the scientific piece of information from Benjamin Franklin. Oil can float very rapidly on water. Oil can calm the moving surface of the water. Gravity acts differently on different objects. Without wasting time, in a mood of trying to do anything, he empties a bottle of Kuntalin oil into the sea. And voila, sea calms. Calcutta is saved. So how beautifully J.C. Bose presented in his literature through a sci-fi story, a scientific fact that when the oil is added to the water, it is not the friction of the air, it is not the grip of the air, it is not the bite of the air, it is the surface tension that reduces and that creates a net force that flows from the lower surface tension area to higher surface tension area. And the water will move in the direction opposite to that of the breeze. That calms the surface of the water. That calms the waves of the water. Now, how much oil is required to change the direction of the cyclone, to how much of extent is another topic of discussion. We are not going to discuss it over here, but yes, the scientific explanation behind this is a surface tension, and later on it was mentioned as the butterfly effect. So many publications are there on this topic, like the calming effect of oil on water, the effect of surface active material on the damping of gravity waves, and the waves can be subsided by oil. So many publications are available on this topic. So through literature, through the beauty of the literature, this story conveyed a very important scientific fact that never ever can forget. Thank you. Okay, where it is? So thank you, Rajni and Dr. Harish. For me, sci-fi is always sci-fi bond and peptide bond, and we always talk about the sci-fi in terms of the sci-fi single bond, C single bond, N double bond O. So I only knew this, and today I came to know another thing, that is sci-fi is scientist and fiction, scientific story and fiction. So it was a wonderful thing, and although organizers have told me not to ask a question, but if I don't involve the audience, it is of no use. So anybody wants to ask anything from Rajni? Anyone? Yes, please come forward. Run, run. तो कल पुनीता मैम ने एक सवाल जो है वो उठाया था, उसको अब तक हम लोगों ने पूछा नहीं है, तो आज वही पूछूंगा। विस्कोसिटी क्या थी वो ऑयल की जो उसने पूरा शांत कर दिया? क्या थी उस ऑयल की जिसने पूरे तूफान को शांत कर दिया? It is a sci-fi story. It is just based on a concept that yes, oil can calm waves. I have told that yes, how
how much amount of oil, of which viscosity can change the direction of the cyclone, to which extent. This is another topic of discussion. Yes, the research is going on. In the first publication, the oil in calm base in Asian Journal of Physics, they have published that 1 tablespoon of olive oil even is enough to cover the half-acre of the lake to calm waves. इसको कहते हैं कि स्टूडेंट कैसे टीचर से क्वेश्चन पूछता है. ओके, प्लीज कम. जब आप लेक्चर हॉल में जाते हैं तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं. तो सर ने भी मेंशन किया कि जब भी कोई हम नया वर्क करते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म Maybe I can summarize this answer in this way that हम ये जगदीश चंद्र बोस या इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन राइटर्स के बारे में ये प्रोग्राम जो DST ने भी शुरू किया है, बहुत सारी साइंटिफिक बॉडीज़ ने शुरू किया है, वो इसीलिए शुरू किया है कि हमको अपने ऊपर गर्व होने की आदत डालनी पड़ेगी जो हमें नहीं है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स सर. वंस अगेन. So in the same series, the third speaker is, speakers are Sahar Kazi, Sanju Sharma, Bimal Jeet and Ashok Sharma. And they are going to speak about the father of Bengali science fiction, Sir J.C. Bose. Please finish within 4 minutes. Within 4 minutes. Thank you. यहाँ से स्लाइड्स मूव हो जाएंगी क्या? यहाँ से आगे जाएंगे. वहाँ से पीछे. थैंक यू. ओके, इसी का इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू. A very good afternoon to everyone present here. Myself, Dr. Sahar Kazi. I am currently working in the Department of Biochemistry, All India Institute of Medical Sciences, under the supervision of Dr. Ashok Sharma. So, since my mates, Ms. Sanju Sharma, Dr. Bimal Jeet and Dr. Ashok Sharma, they are present in the audience, so I'll be the one who will be presenting here this talk. And my talk is you know, for the next 5 minutes or 7 minutes, I'll be talking about father of Bengal science fiction, that is Sir J.C. Bose. So I have been fortunate enough that my fellow candidates who have already talked about him, they have already elaborated a lot on the scientific story that
he penned back then in 1896. But just to summarize all that we have known, come to know, since yesterday. So a little about J.C. Bose. So he was a multifaceted personality, right? Why? Because he was a biologist, a physicist, a botanist, a science fiction writer, a satyagrahi scientist, and of course, a rebel, right? And that is why we call him as a multifaceted personality. So just to summarize Bose's life in the form of a timeline, so he was born on November 30th, 1858. He then studied in Calcutta from 1869 to 1879. He went for higher education in Cambridge back then in 1883 to 84. He came back and joined as a professor at the Presidency College in 1885, and then he died on 23rd of November 1937. So that's basic a summary of J.C. Bose's life, right? So just a short fact file. So the full name, Jagdish Chandra Bose, date of birth, date of death, that we should know actually, because he is one of the pioneers of science, and he has excelled in so many different domains of scientific studies, be it physics, biology, biochemistry, in fact archaeology, so on and so forth. And he is famous as the Satyagrahi scientist of India. So these are the two snaps of the famous inventions by Professor Bose. So just to, some of the significant contributions of Sir Bose were the millimeter waves. Already many people have talked about him. I won't go into the details. Radio, crescograph, plant biology, crystal radio, crystal detector. So I just want to ask one question to my audience here. So, ek aadmi, one man, he has excelled in different domains of science. Why do you think? Why has he excelled? How he was, curious, and whatever he touched, he explored. He was able to get the best out of that. So, can anyone answer? What do you think? Yes, please. I think because he was a good observer. Because if you observe everything seems to be interesting. Right. Even history seems to be interesting. Even flowers seem to be interesting. True. I think he may be a good observer. That's why. A good observer, yes. Yes. Anyone would like to try? A good observer, yes, of course he was. But while exploring about Sir J.C. Bose, I came to know that he was highly inspired by the character of Karna from Mahabharata. We all know about Karna, the character, right? So while talking about Karna, Sir Bose said he always played and fought fair. So his life, through a series of disappointments and defeats to the very end, in fact, his slaying by Arjuna, all of these appealed me as a boy as the greatest of triumphs. So Karna was his inspiration, his life was his inspiration, right? So while he was young, he formulated 3 personal ideas that helped him achieve what he was in his lifetime. So the 3 personal ideas or personal beliefs of J.C. Bose were to fight fair and of course to play fair, to uplift people. That means he worked in the, be it science, be it archaeology, be it any domain, he wanted to work for the people, right? So that is for the upliftment of his nation, of his people, right? And finally, no matter if you get, if you succeed or if you get defeated in your life, life is full of ups and downs. So no matter if you are getting succeeded, if you get successful or you don't get, if you have some failures in your life, don't get disappointed. You just have to keep working hard and everything will fall into the right place. So these were the 3 personal beliefs of Professor J.C. Bose, and these 3 personal beliefs were actually taken up by the character of Karna that he read about. So coming to the Nirdeshar Kahani, that is the story of the missing one, just to summarize, because already my fellow mates have already talked about him and about the story in detail. So just to summarize, it was a short scientific story, and the story was basically, it revolved around a cyclone and how
one of the hero, the pivotal character of that story, was saved from the cyclone. He saved Calcutta using Kuntal Keshari. That was the very famous hair growth oil back then in 1800s and 1896, right? And this story was later included in the collection of essays entitled as Abhayakta. I am not sure if I am pronouncing it right because I am not a Bengali, so yeah. And eventually what's the crux here of the story is that Kuntal Keshari, the hair oil, right? That hair oil is basically the pioneer, the crux of, you know, the hero, main lead hero of his story. And how that oil, because oil floats on water, so when the hero of that story, the sci-fi story, he, yes ma'am, yes. So how that hair oil was able to save the people of Calcutta, and just to apprise you, this story was later translated, Nirdeshar Kahani, into English by Bodhisattva Chattopadhyay back then in 2013, and this story actually bagged him the title of Father of Bengali Science Fiction in 1896. So I would just like to grab your attention if I could. So the man you see here on the slide, Hemendra Mohan Bose, he was the first Bengali entrepreneur, and he had this factory, and he was a manufacturer of Kuntal Keshari and several other perfumes which were very famous back then. And he had this idea in his mind that let me just try one, because he was part of the Swadeshi movement. Hemendra Mohan Bose was the part of the Swadeshi movement, and he had this idea that let me just you know, try to bring in the literature culture that we have in Bengal, and I'll also get my product, that is Kuntal Keshari, you know, promoted in general public. So that is when he had actually this propagated the idea of the competition, the sci-fi competition, wherein Professor Bose had won the first prize, and back then for his story he got the prize of ₹50. So back then 50 rupees was a big amount, right? So yeah, you can see here the snapshot of the story, and I would just like to conclude with a personal favorite quote by Professor Bose, that is, the poet is intimate with truth while the scientist approaches awkwardly, which is veritable because poets often use their hearts while they are writing poetry, while scientists, I myself being a scientist, I use my brain. So since Professor Bose was both a writer and a scientist, why not merge the heart and the brain and do the excel that he was able to achieve in his lifetime? So thank you so much. And if you wish to get in touch with us, you can you know, just follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Thank you. Thank you, Seher, for a wonderful presentation. And I won't ask any question for you because you have taken more time. Yeah, so I would like. Okay, thank you, Seher. And now you may leave, please. Thanks a lot. And Seher has done a wonderful job of, I would say that summarizing everything else and trying to tell us that once again about the Professor Jagdish Bose work on different points. Yeah, I would like to call upon the last, speaker of this session, Dr. Namita Gandhi, and she's a professor in, Deshbandhu College, and interestingly, she's also a chemist, and she's going to talk about, I would say from the organizers to open their talk. The title of her talk is Acharya J.C. Bose, Inspiration for the Indian Youth. So while her talk is getting opened, I have certain announcement to make on the, behalf of the organizing committee, that there is a Vibha membership stall, life membership stall outside, and so please try to become the life member of Vibha. It's a very small amount. And then there is a NBT stall also there. And please stay with us for the valedictory session in the IUAC itself, and that is planned around 4 p.m. Thank you very much.
A very good afternoon to all of you, and as we are rushing through the oral presentations, I'll not take much of the time as I have been asked. The title of my talk is Acharya J.C. Bose, Inspiration for the Indian Youth. Since yesterday, we have been talking about the life and works of Professor J.C. Bose. I'll not go into that. I'll directly come to consolidate his life and work as an inspiration for the Indian youth. Overall, his life journey has shown us his greatness, his vision, and his talent in many fields. Starting his journey from physics, he unraveled many mysteries of biology, botany, biophysics as well. He was a great writer of science fiction, as we have just heard the two presentations. His life and works are the inspiration for today's Indian youth. I'll give a very brief insight into some of the take-home lessons from his life and works. First is the importance of the vernacular language. As we have all heard about him, that he studied his early education was in the vernacular school. And C, to bridge the language gap between a child's home language and the language of instruction, NEP 2020 emphasizes the importance of local languages. And in the coming few years, we can hope to see many more vernacular, content-driven education by educational institutions and progressive edtech platforms. Moving on to the interdisciplinary research, Bose was one of the first to employ an interdisciplinary approach combining botany with physics to prove that plant also has life. He was a pioneer in earlier radio technology and also made other important contributions to our understanding of nature. Now, as per the National Education Policy 2020, evaluation has to move away from the rote learning assessment to a more dynamic and inquiry-based one to rightly assess the skills and learning capabilities of the students. Moving on to the scientific temper in the society. Scientific temper refers to the attitude of logical, rational, and scientific thinking. An individual is considered to have a scientific temper if he employs a scientific method of decision-making in everyday life. Article 51A of the 42nd Amendment of the Constitution of India says that it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, but humanism and the spirit of inquiry and reform. The objective is to create awareness that future of the country is based on science. Bose was an extraordinary man of science, working in a difficult socio-political environment and in the scarcity of the equipment and funding. Sir Jagdish Chandra Bose continued to do pioneering work in several fields. Bose was against the patenting. ज्ञान किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती है. He had invented the wireless telegraphy, as we have all heard the story, but he was against the patenting because he believed that knowledge should be available to everyone and not constrained by patenting. Nature around us, all around us, the plants are communicating, we just don't notice it. गेहूं की जगह धान और धान की जगह गेहूं उगाकर शायद हमने ही उस सिस्टम को कहीं खराब किया है. To spread the knowledge from his learnings to the world, Bose also described his experiments and their results in his 1902 publications. Moving on, under the effect of stimuli like pleasant and gentle music, the speed of growth of plant increased and decreased when exposed to harsh or loud music. Similarly, plants, when they were spoken to as one would with babies and pets, would be happier than others. And if we all observe, during the winters, we cover tulsi with a cloth, usually of a red or a saffron color. They all have a scientific temperament along with it in our society, but somewhere we were forgetting it. He credited the Pathshala as the place where he developed a keen interest in the workings of the nature. Now, Bose Institute, as he called it, not merely a laboratory, but a temple. A sketch of double Vajra, fashioned out of Rishi Dadhichi's bones, was said to be the emblem of the Bose Institute. It was aptly designed by Sister Nivedita, symbolizing the purity and firmness of Bose
a modern day Dadhij. Now, we can have some take-home points for the youth. Have some life purpose. Do not be dismayed by difficulties. We have to rise above them. There is no credit in succeeding when everything is favorable. We have to make situations work for us. Look around, find and create something for the benefit of the mankind. Have thoughts and translate thoughts into actions. Determination and not only talk. Integrity between words and action. Kathni or karni mein antar na ho. Whatever you do, give your best to it. Need to feel your passion. Let your work speak for you, lead the way you live. But there are 3 C's: conviction, credibility and character. नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा का कोई आधार नहीं है. टिकटॉक या इंस्टा रील से ऊपर उठकर ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास देखें, अपने आसपास खोजें, जानें और बताएं. Youth today should work in the field of science, not for the monetary benefit, but to benefit the mankind. This will certainly be a milestone in making India Atmanirbhar in the field of science. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. औरों का भी हित हो जिससे, ऐसा भी कुछ करना सीखें. Thank you very much. Thank you very much. We can have a quick question and then we can disperse for the lunch. One good question, one quick question. Anybody? No one. कुछ नहीं. नहीं मैं ही पूछ. So Namita ji, in this world of distractions, J.C. Bose became a Bose because he had fewer distractions than what our present day generation face. They have too many distractions. So I think you should comment upon that part. He could observe nature because he did not have a mobile in his hand. That is what I'm saying, that TikTok और Insta Reels के बजाय ये जो किसी का 4 इंच का और किसी का 6 इंच का मोबाइल और स्मार्टफोन है, ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ रहा है. I'll tell you one thing, मेरे साथ के जो टीचर्स और कंटेम्पररीज यहाँ पर बैठे हैं, हमने घंटों लाइब्रेरी में बिताए हैं. हमने उस एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए या लिटरेचर सर्वे करने के लिए कितने रजिस्टर भरे हैं, पेन से नोट करते थे. वी वर नॉट हैविंग यूजुअल फोटोकॉपी फैसिलिटी ऑल्सो इन सम ऑफ द लाइब्रेरीज. कई बार हम पूसा इंस्टीट्यूट से बुक इशू कराते थे, रिक्शा करते थे, बाहर जाते थे, वहाँ से हम फोटोकॉपी कराते थे, फिर वापस आते थे. आपको सिर्फ एक उंगली चलाकर दुनिया देखनी है. तो जब तक वो चीज़ अपने आप में नहीं लाएंगे, हम न बोस बन पाएंगे. और एज टीचर्स वी ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू इम्पार्ट द बेस्ट ऑफ नॉलेज टू यू सो दैट यू कैन वर्क एंड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम. थैंक यू. So very truly said, and on the behalf of once again, I would like to thank all my speakers and apologize for rushing them. And I would like to thank my co-host and rapporteur for successful running of this session. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Let's give big round of applause for Bibha, Professor Bibha Tandon, for conducting this session so nicely. And hey. And may I request volunteers to kindly, yes. On behalf of organizers. Let's any other announcement? Yeah, let's break for lunch now. 2:45 we have to be back. 2:45, let's come back. Only half an hour lunch. So kindly be back at 2:45 sharp in the main auditorium. Thank you.
kindly assemble back to the main auditorium. The speaker is waiting.
हेलो, हाँ ठीक है। मैम ने तो हाँ हो गया आपका? email, so can I log in? आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे को नहीं पता इसमें। और एक बार फिर से ये चेक करके देख। क्या pen drive? Maybe once again you can check if it's working now. This is your turn. No, after this. But I think yeah. Escape कर दीजिए। Escape कीजिए। Escape करने वाला है। Okay? यहाँ। हाँ। मिनिमाइज Minimize कर दीजिए। ये रिफ्लेक्शन है। हाँ, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। और मिनिमाइज कीजिए। इसको कट कर दीजिए। क्या है? अच्छा यहाँ का ये। ठीक है। आपका कौन सा है? उसमें जाइए। It's still not working. नहीं यार, आपका नहीं आ रहा। ये डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है? So it's in my email ID. I can log अच्छा, into okay, my okay. email. Yes, you can log in with your email, new account. हाँ, okay. Just do it. Thank you. आपने डाल दिया उसमें? हाँ. So and my introduction. Do you have my introduction now? No. आप सभी से अनुरोध है कि सभागार में उपस्थित हो जाएं। हमारा अगला कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। फिर कल आप नहीं थे? इसमें क्या पेन ड्राइव पे डालें कैसे? क्लिकर था ना ये? नहीं है क्लिकर तो। हेलो, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सभागार में उपस्थित हो जाएं।
A very good afternoon to all of you. A warm welcome in the last session of the 2 days conference. In this session, we have 1 plenary talk and 3 oral presentation. Now, I request Professor Madhav Govindji, Chairperson Center for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, to chair this session. Welcome, sir. Thank you, Ambika ji. Very good afternoon, colleagues. Now we are going to start this session, and in this session we have a very distinguished scholar and science communicator. Yes, he is Dr. Manas Pratim Das. Dr. Manas Pratim Das is a renowned scholar in the field of science communication. He has been active in the field of science communication for last 3 decades. He excels in writing about the history of science in a lucid manner that inform and entertain one and all. He is a program executive at All India Radio Kolkata and looks after several programs. He coordinates Akashvani Maitri channel, a radio channel dedicated toward cultural exchanges between India and Bangladesh. He is also in charge of science broadcast. He is credited with hosting the live show Vigyan Rasikar Darbare on FM Rainbow for 20 long years since 1999. This is unparalleled in South Asia. He is a recipient of National Award for Outstanding Contribution in Science Communication given by the DST. Indeed, it is a great privilege for us to be you here, and I hope that our audience will enjoy your talk on science communication. Dr. Manas Pratim Das. सर कॉलर माइक यूज़ करेंगे हैंड माइक? हैंड माइक सही रहेगा मुझे लगता है। अच्छा, और इसके लिए ये और तब तो वो लेना सही रहेगा कॉलर माइक। हाँ, क्योंकि इसको ऑपरेट करना है ना। ये वाला दे दीजिए मुझे नीचे से, ठीक है? हाँ हाँ, नीचे रहने नीचे से पॉकेट में रख लीजिए। Okay. And this one, how does it appear? Yeah, like this, na? For pointer, this one. Okay, right. Yeah. Good afternoon, one and all. A new experience for me to speak in an empty hall room almost. But yeah. Of course, but at the same time, I can understand the fatigue of listening to lecture after lecture over the 2 days, and the students have gone through a crash course already, and next morning when mom calls and taps on the shoulder, suddenly he or she wakes up and the first word to utter would be both. Not ma or papa, nothing, but both. So they are fully filled with all these sessions now, and they will of course say, oh, one more speaker. But anyway, I have a duty to discharge, and so will I go about my discussion. Now, my topic is both as a science communicator. I have been listening to the presentations in the earlier session, which extended till lunch, and in fact overlapped with lunch, sort of encroached in the holy area of lunch. But anyway, those were interesting, those were absorbing, and
we had nice information to pick from those presentations. But at the same time, I would also say that there were some mistakes as well. These mistakes happen because we depend on internet websites. Of course, someone has created the website, someone has created the blog, and if they haven't done their research well, they are, it's obvious that they will come up with wrong information. But anyway, let's not make a big fuss over it. The point is that we have got 2 complete days to talk about J.C. Bose and his contribution. Naturally, my duty is not to elaborate on his scientific achievements, but at the same time, the scientific work, the scientific research that he did cannot be delinked from his science communication process. Now, one question came up. One lady, I don't recall her name, in the last session she asked, why could Jagadish Bose be successful in so many disciplines of science? And she invited answers from the audience. There were 1 or 2 answers, but as you can understand, one who asks the question has the answer always. He or she is not satisfied with any answer. She will say, no, no, this is okay, this is close to the point, but this is the answer. That happens always. Now, the point is actually Jagadish Bose didn't try to be successful in many disciplines. He didn't regard anything as a separate discipline in science. He went about doing science. Remember, he did a tripos at England in natural science. And one would always love to link that his study with his following nature in his childhood. And of course, the inspiration came from Bhagwan Chandra Bosu, his father, who never said, don't touch this, don't do that. See, too many reservations, too many restrictions actually hinder the path of science, actually put obstacles in the path of science. If you stick to too many reservations, you are unlikely to be successful as a scientist. Go about the whole nature is in front of you, touch anything that interests you, but of course, don't try to touch a snake and see how it can bite, no. But there are so many opportunities that you can avail of, and that gives you the strength, the inner strength, to then do science, make instruments, create a field that is totally new, totally fresh. That comes from the inner strength. So, Professor Govind has reminded me that time is very short, and I agree. I have also organized conferences like that, part of the organizing body. And I know what it takes to organize such a conference. And towards the end, it is so, random. So many things come up, such a responsibility. So, I won't take much of your time. Let's see, this is the old building of the Bose Institute. As you can understand, I start from there. The life story has been narrated time and again through these 2 days. Born 1858, went to England in 1880, tried to study medicine, then switched to Cambridge, studied natural science, completed it in 1884, got a double degree, a BA and a BSc both. Came back to India, went to the Presidency College, got an appointment because his teacher Lord Raleigh has recommended it to the Viceroy, and in British India no one could ignore the Viceroy's recommendation. So he got an appointment, but he was not given the proper salary for first 3 years. He didn't accept the salary. Then the British agreed to his conditions that you have to pay me full salary like that of an European professor. All these things you know. Now, the first experiment that he made was again in 1894 at Presidency College. 1885 to 1894, he was not in research, so to say. He was teaching. He was a popular teacher. He was liked by his pupils. And the pupils have also, their names have been mentioned and their work has also been discussed to some extent. Of course, one is S.N. Bose, Satyendranath Bose. Another is Meghnad Saha. But S.N. Bose and Meghnad Saha actually drifted apart. They studied mixed mathematics. So, at that point of time, had there been a lot of time, I could have delved into this. At that point of time, there were two
stalwarts teaching science, or maybe 2 avenues for gaining a PhD, and the 2 avenues were named J.C. Bose and C.V. Raman. So they both were experimental scientists, experimental physicists. But Meghnad Shah and S.N. Bose, they studied mixed mathematics. Ganesh Prasad from Uttar Pradesh was there, but Ganesh Prasad didn't want to take them as fellows because he didn't like the rebel nature of S.N. Bose, so he refused. But anyway, those were the students of J.C. Bose at Presidency College. Now, in 1917, the Bose Institute came up, the first national institute, I would say, because though the Indian Association for the Cultivation of Science has been established in 1876, it was not a national institute per se, it was a local institute. But why I call Bose Institute a national one? Because everyone of importance, of significance in that period of time contributed to its development, contributed to its establishment. Take Mahatma Gandhi. When Bose went to Bombay, Mahatma Gandhi wrote in his Young India that here is a scientist from Bengal who is asking for your help to construct, to build an institute for scientific research and to show to the world that Indians can do science at par with the Europeans. So that was Mahatma Gandhi writing in his Young India. Take Tagore. Tagore had a very cordial relationship with the Princess of Agartala, of Tripura. He asked Raja Veer Vikram Dev to donate money for this. Bose went to Gujarat. That was almost breakaway audience. The hall was full. They had to make special arrangements for his lecture, and they donated money as much as they could. So that was a national institute in its true sense. That came up in 1917. Now in 2017, we had the centenary of this institute, and I had a very small role to play in that program. Anyway, so at the opening of the institute, Tagore could not remain present because he was ill, but he had composed a song for this, and he had sent that. The song was Matri Mondira Punno Angano Karo Mahojjalo Ajo He. So in that very song, in that lyrics, he had written down the very essence of the Bose Institute. Now I am using Amar Chitra Katha. You might have seen a glimpse of this. Gautam Da was using it last day, and I told Gautam Da, see Gautam Da, Amar Chitra Katha is not your copyright. I am going to use it. He cannot deny this. So Amar Chitra Katha, in fact this came out in 1985. So we need to highlight Amar Chitra Katha. Professor Govind, I would also request that Amar Chitra Katha, if that can be reformatted, redesigned, or in the same text can be distributed among the children, they would be learn more, I think. So here it's easy to follow. Here he says, I dedicate today this institute to the feet of God for bringing honor to India and happiness to the world. This is the patriot J.C. Bose. Now 30th November on his birthday, 58th birthday, at that point of time 58 was the age of retirement. Now again at the auditorium, not like this one. I will tell how the auditorium was built. It had a different sculpture, it had a different design, the frescoes were different. And he says, welcome to all who seek knowledge. This text you have seen in other presentations as well. So I won't dwell much on this. I will go over to somewhere else where I need the light needs to shine. Dr. Arvind Ranare, we had been colleagues in exercises of science communication for a long time, and when I sat beside him and said, Dr. Ranare, do you remember me? Well, of course, Mazda, here is your phone number still with me. So why I say this, Dr. Ranare had mentioned that everything has to come to India, and India is a place of confluence, a place of synthesis. And he also mentioned that with due importance, the birthday of Acharya Prafulla Chandra Ray was celebrated here. And since the name of Ray has been mentioned, I would like to quote him when he said, in fact, he was actually taking the quote from Emerson. He said, that man or that person who is most accomplished is the most indebted.
you have to borrow from nature, you have to borrow from others, the children of nature. You cannot sit tight in a compartment and say, I will develop everything, I will create everything. No. That's why I bring before you the building of the Royal Institution. Everything is there for you to read. The Royal Institution, when he was studying, remember he was studying in 1880. The Royal Institution has been created much earlier. See, 1800, Humphrey Davy had already joined, and they attached a lot of importance to science communication. I'm afraid to, I'm a bit hesitant in saying that though there are several projects on science communication going on in full throttle, still science communication is sort of, I have been in this field for 3 decades, I know, sort of looked down. People will say, acha wo banda ye bhi kar lete hai. No, this is a separate discipline. This is a art and a craft as well. You have to practice it. Without practice, you are not a science communicator. Given a microphone, you won't be able to deliver, never. Be it a poster, be it a lecture, never. It's a separate discipline, and you have to learn how to communicate, putting your vision straight to straight with the audience. You have to understand what they are expecting from you, where they get bored, and where they are trying to drift away. Now, here Sir Humphrey Davy, the Royal Institution, he delivered lectures, those were very popular lectures, and due to the huge crowd assembled there and due to the huge traffic coming there, the Albemarle Street had to be made the first one-way street in England. So, this piece of history is associated with the Royal Institution. Now, along with Humphrey Davy, there are others. There were, of course, Michael Faraday, and Jagadish Bose did the same thing here in India when he established the Bose Institute. The lectures that he gave, you could attend only after paying a sum of money, and you could understand that at that point of time, if you ask someone to pay for a lecture, that lecture meant something. That lecture held a lot of potential in it, otherwise people wouldn't have paid. So, Jagadish Chandra Bose sort of, I won't say copy paste, sort of went on the lines of the science communication activities in England, particularly in London and at the Royal Institute. So, that's why I said, as Prafulla Chandra Ray quoted Emerson, that person who is most accomplished is the most indebted. You have to have debt of knowledge. You keep paying it through your life, through your activities. Now, this is from France. I mean, England and France, sparring partners all over the period of history. They also had their own style of science communication. This was the American edition. I won't go deep into this, of course. Coming back to the auditorium of the Bose Institute, this was designed on the style of the Royal Institution. That's why I said he didn't copy paste, but he took the inspiration from the Royal Institution. That is where England not only gave him knowledge, not only gave him degree, gave him a spirit of science communication that he carried with him all through his life. And the frescoes, those are very important. Those were designed by Nandalal Bose, one of the pioneers of Indian art. That's a different story altogether. Now, coming to his teachers, other than Lord Raleigh in England, one more person should be mentioned. He is a Belgian father, a Jesuit father, who came to India and took up teaching at the St. Xavier's Institute. Now, Eugene Lafaux, you have there the Indo-European correspondence. Here you see at the St. Xavier's College, here, see the date, 1897, okay? 1897, St. Xavier's College, Father Lafaux, assisted by J.C. Bose, will be giving, or is it in the next year? No, this one. Will giving a lecture demonstration. Father Eugene Lafaux, in fact, instilled the spirit of inquiry into J.C. Bose. He was a very good instrument maker. And later on, Jagadish Chandra Bose followed in his footsteps. The place where he lived is Raja Bazar. The main building is at Raja Bazar, main building of the Bose Institute as well as his later residence. There he found out
a few very well efficient craftsperson who were able to make those instruments. The first instrument that he made for millimeter wave generation, detection, polarization, everything into one, with the help of the craftsman that he found at Rajabadaya. So that is Swadeshi. That is where our strength comes from. That is the place we should be cultivating. We have the gems strewn all over. We need to identify them. And Eugene Lafaux told that my student's achievement is far better than that of Marconi. A Belgian father, naturally Indianized, telling the whole world, Marconi cannot be compared with J.C. Bose, my student. I will show you why. And he arranged some experiments at the St. Xavier's Institute. Now we all know these things, but just repeating it, he learned some very crucial, important lessons, demonstrative pedagogy. Now this is the book that we have been discussing, Abbakto. There are two books actually penned by Jagadish Chandra Bose. One is Abbakto, a collection of 20 articles as well as Palatak Tufan, the science fiction. That came out in 1921. Another edition, which is here, was during his birth centenary, brought out by Bongyo Bigyan Parishad, another institution made by his student S.N. Bose, who is again the pioneer of science popularization through vernacular medium. So that institution brought out in 1958. Abbakto is a collection of 20 articles. Another book, she meaning Abula Bose, in fact pestered her husband, why don't you bring out this book? It contains it contains about 30 articles. It came out in 1933. It contains about 10 articles on travel. And you can pretty well imagine Jagadish Bose won't be telling you which hotel to stay in, which food to take, not just that. He will tell you the very interesting natural features of that place. See, he passed away at Giridih. Giridih was his abode. He used to stay there often because again he loved to remain with nature. Now Abbakto, as I said, is a collection of 20 articles, but the Palatak Tufan, that has been discussed in, I believe, at least 6 or 7 presentations here. Palatak Tufan was of course inspired by Hemendra Kumar Bose. Now who was Hemendra Kumar Bose? He was somehow connected to J.C. Bose. See, when we say, why don't we have a J.C. Bose? Why don't we have a Birbal Sahani now? See, the atmosphere should be there. And you cannot predict when Birbal Sahani will come up, when J.C. Bose will come up, you cannot predict. Your duty or my duty could be only to create the ambience wherefrom it would sprout. The natural vegetation would sprout. The natural talent would come up. Hemendra Kumar Bose, in his initial years of his career, was stuck to the legal profession. Then he departed from there and invested his time and money to every sort of engineering things, photography, bicycle, and then of course chemistry. See, the first recordings of Tagore were done by Hemendra Mohan Bose at the residence of the Bose Institute. The very first slide that I had shown, that was the place where Tagore's song was first recorded. And if you listen to the recording is not very good because Tagore had a very, the warmth is missing. It is something like a very sick person trying to sing something. No, because the speed of the record was not proper. So that's why the frequency has been changed. That is not the real voice of Tagore. Okay, but anyway, he was the first and he took the opportunity to advertise that we had done the first recording of Tagore. He was a business person and one of his products was of course Kuntolin. That has also been mentioned. Other perfumes, Dilkhush, Tambulin was always there. Kuntolin, he tried to make it popular through literature. He announced that competition would be there
where you have to write a story where Kuntulin would figure, but not as advertisement. Kuntulin would integrate with the text, not as an advertisement. Jagadish Chandra Bose, because he was related to H. Bose, Hemendra Mohan Bose, he said, okay, I will write something but under a pseudonym. In fact, H. Bose didn't know that Jagadish Chandra Bose was writing Palatak Tufan. So, but there was no other story parallel to this one, couldn't match this, his style or its essence, and that's why Palatak Tufan was selected as the first entry, first prize it got. And this again has been dwelt on several times. Bodhisattva Chatterjee, this translation he has done, we should be crediting him with the translation. It first appeared as Niruddeshar Kahini. Okay, it had a longer version, and at the end of it, the explanation, not the possible, the plausible explanation was given, and was said that it appeared in Scientific American. But he did away with that explanation in the 1921 edition, and Palatak Tufan came out. So that was the winning entry in the Kuntulin story competition. This was the explanation given in 1896. The film of oil spread rapidly over the troubled waters and produced a wave of condensation, thus counteracting the wave of rarefaction. Someone asked, what is the viscosity of that oil? Now, naturally, if you ask that question, we, being an interested student of science fiction, I will have to go deep into it, because there are two branches of science fiction. One can be called fantasy, where you don't really attach much importance to the scientific facts. You take whatever is there in the scientific domain, or what could happen say 30 years, 40 years from now, and create a story of your own. But take a story which attaches more importance to the scientific facts, the science that is there, you will create a science fiction. So there are two branches of science. What Jagadish Chandra Bose actually wrote was science fantasy. So if you ask from a fantasy author what was the viscosity of the oil, he won't be agreeable to answering that. So this is science fantasy. But science fantasy can ignite your imagination, can take you further. Can it really happen? Or was it just a flash of a moment? What is the real story? That will make you think, tinker with other objects, come up with other solutions, even create a problem which can be of interest in the coming years. So he was actually writing science fiction. In fact, Satyajit Ray, one of the leading science fiction writer, is again a fantasy author. But at the same time, take Professor Narlikar, he is a fiction author. And I had the opportunity to discuss with him this, how this things unfolded in India, how this came about. And he said, I don't like science fantasy. I think fiction authors should stick to the knowledge already in the science domain. And I said, sir, why? What about the future? You are not igniting the imagination. But wrong. You read my story, Vaman. It sticks to the scientific domain, but at the same time, it tries to tell you what can happen 30 years, 40 years, 50 years from now. So these are different ideas, different concepts, different debating points. Now, in Abbakto, apart from the story, the way Jagadish Chandra Bose describes nature has a romanticism to it. There is a dimension of romanticism which you won't be able to find in other writings. Forget about the authors at his time, even in the later years, you won't be able to find such. Only one person had that feature in his writing, that was Gopal Chandra Bhattacharya, who came from now Bangladesh and was trained under Jagadish Chandra Bose, but he again shifted to entomology. First he started doing research in botany, then he shifted to entomology. Only Gopal Chandra Bhattacharya had that style. And Gopal Chandra Bhattacharya is compared with Jean-Henri Fabre of France, who is again a naturalist and a wonderful author.
Now, the way he described how a small plant raises its head above the soil, how it blooms, and tells the children, haven't you seen those seeds with wings? When you try to catch them, they fly away. Haven't you seen those? Okay, today children might answer with a proud no. We haven't seen them, because those are afraid of entering the urban domain, crossing the urban boundary. But the way he described, he could describe that because in early childhood, his father, Bhagwan Chandra Bosu, made him study in Maimansingh Jila school, the district school, where he was once a headmaster, and allowed him to mix with students, people of several layers, several economic status. That's why he could sort of bath in nature. Now, I won't go into these things. This is again not needed. Already you had done a lot of things. J.C. Bose was primarily a physicist. So, if you say that most of his writings are on plants, no. Abhakto contains 20 articles and quite a number are dedicated to physics. And this is again for Amar Chitra Katha, where we can see that the authorities of the Presidency College didn't like his research. They used to say that your classes are more important than your research, because they couldn't see any utility in that. And remember, in 1977, Neville Mott, the Nobel Prize winner, had said J.C. Bose was ahead of his time by at least 60 years. Why did he say that? One reason being, after the use of microwaves by J.C. Bose in 1894 to 97, there was a lull of around 6 decades before it could be taken up in earnest. Okay, that's why he said that. This is again how he describes his confusion, how he should go about discovering the light that is not seen. He calls it invisible light. Now, I had the time to go around this campus and with some permission enter the Pelletron area, and I had the opportunity to talk to a couple of young scientists. They took me for a scientist again, and they started telling me what is there, what is not there. And then when they discovered that I am a layperson, it's their term, not my term, they said, okay, you are a layperson, not a scientist, then we would be describing it in a different way. But the different way was as similar to what he or she had said earlier. That shows science communication had not really started its journey on the Indian soil. Scientists still think the person who is coming to me for trying to understand our instruments, our discovery, is already educated. We need to supply some more information on that. Jagadish Bose took a completely different path. He used to tell, what are you seeing? What can you imagine? What can be made out of this? The most basic question. That is the hallmark of a great scientist. Great scientists we don't come across great scientists very often. That is the way. These are again, all has already been spoken. In his article, the way he tells people about the similarity of a sitar, of a standing wave, and he doesn't mention standing wave, he just says a string tied at two ends, shorten the length of the string, pluck it, shorten it more, pluck it again. At one point of time, the frequency goes so high that you won't be able to listen to it. Similarly, to our eyes, there are frequencies that are not, the eyes are not enough detector for that. It is deficient. So he goes about it this way. And in 1897 at the Royal Institution, he had said that I believe there are microwaves coming from the sun as well. Because of the atmosphere, it cannot reach us. That was only discovered in 1944. Here again, he is 60 years ahead. So, unpolarized light, he told kids how to understand unpolarized light. What is polarization? And he had this photograph
I actually made it, but there's a photograph in Objecto. If the bars are vertical, this aigrette can come through it, but this tortoise, flat and extended, cannot come through it. But even after coming through it, if the aigrette is confronted with another this grill with horizontal bars, it cannot go through it. So that is polarization. This is the simplest way to speak about polarization. So Jagadish Bose used it. We have all the knowledge at our hand, but we are not eager to use. People are not there to point their fingers, read this, try to develop on this. That's why science communication hasn't been so strong in our country. He told about invisible rays. Invisible rays, see this person holding a plastic or a polythene, his hands are hidden, but if you use infrared rays, his hands can be seen. So the invisible rays can pass through several objects, several hurdles that ordinary light cannot. Extended to our space research today, using infrared, you are looking at the very deep space. Think of these telescopes which use infrared. It has been improved over the years. The James Webb Space Telescope, the current one in space, using infrared. Adrishyalok, invisible ray, that's the title of his article. Now why, these are the last two slides, sir. Please be a little patient, sir. Yeah, take your time, sir. Why I said setting the trend? Because Jagadish Bose knew there should be people after me who should carry the torch. This is Jagadish Bose surrounded by his students. This is Satyen Bose. This is D.M. Bose, who became the director, his nephew, who became the director in 1938, 1 year after that. 1938, after the passing away of J.C. Bose. These are the people. Satyen Bose created an institution of his own, where he used Bangla to tell people about science, to popularize science. But do you know, stalwarts in the country actually ridiculed him. And what he did in 1960, I have that full volume with me. In 1960, he brought out a full journal in Bangla. Someone at Rajabaja Science College had challenged him that you can't write popular science in Bangla, but you cannot bring out a full journal, full issue in Bangla. He had proved how to do it. That is the thing. This is the institution, the Bongyo Bigyan Parishad. This is the building. Satyen Bose is of course the forerunner, but Meghna Shah had written a lot even in Bangla, and that is why I say Jagadish Bose had set the trend. Thank you for your patience. Thank you, sir. Sorry for taking a little more time. No, sir, thank you. And indeed, we were enjoying your lecture a lot, and we could have listened you more. But in very rightly, you have mentioned the importance of science communications. Science communication is important not only for communicating science, but it is also a great work of public understanding of science. And why public understanding of science is needed? For three reasons. One, because the science and technology are the greatest achievement of the modern mankind. So every man has a curiosity to know about the science and its achievements. Second, since science and technology is being funded by the public money, so public must know for what purpose their money is spent. So these are the importance of science communication. And sir, when I was looking toward your slides, I vividly remember during the 18th and 19th century, in the Europe, it is the scientists who came out from their laboratories, and then they went from county and county, but means that village after village, to demonstrate their experiments among the common public. And that led to emergence of scientific temperament in Europe, and ultimately a scientific revolution over there. So thank you very much. We need many, many more such people who can communicate science in easy and literate language. Thank you, sir, so much. In this session, we have three important papers, and I now invite Tanumita Misra. So please come and take around 7-8 minute times and your presentations. Yeah, 8 minute times.
कॉलर माइक होगा ना, कॉलर माइक दे दो ना। ओ मेरे पास है, यहाँ पे इट्स स्टिल विथ मी। कॉलर माइक है। See, we are so selfish. Am I audible now? Yeah. Okay. So, first of all, I would say that I am very much privileged to have got an opportunity to listen to Dr. Manas today, because I am in the very early stages of my career as a science communicator. So, I am working on this project which I am presenting today here on behalf of Dr. Meherwan, and I am working in collaboration with him on this project. So we have already heard enough from Dr. Manas, and I don't think after his insightful talk, I can really talk about Sir J.C. Bose as a science communicator. But yeah, since I have this opportunity, so I will try to present a few aspects of science communication which were brought up very efficiently and seamlessly by Acharya J.C. Bose. So I will not go into any details of his scientific contributions and his scholarly achievements because we have had enough of it. I will now come to Niruddeshya Kahini. So this has also been very told in good detail that how the story came up and what was the purpose of this story when it was written by Bose. That it was meant for a competition which was organized by a hair oil company, which specified that the story which has to be written must promote the hair oil Kuntal Keshari. So Bose won this story. The story consists of two parts. First part describes sudden arrival of a threatening cyclone which was about to hit Bengal and cause great devastation. The second part talks about how and what saved Bengal from this devastation that was just a mere bottle of hair oil. I will talk about what makes this story a wonderful piece of science fiction. The story has a very striking feature, which is that although the resolution, the method of saving people from such a cyclone is very scientific, that oil can calm the surface of water. So this is a very important scientific concept. But it was very seamlessly explained by Sir J.C. Bose. And apart from this concept being very scientific, the other aspect of the story is that it is completely imaginative and a sort of unrealistic story. So this feature of the story, I think, makes it a wonderful piece of science fiction, because we have seen in the modern day science fictions and the science fiction which we have seen from the Western countries that there is an unrealistic sort of thing which happens, and there is someone who comes and saves the world, and along with the understanding of a scientific phenomena. So I think when J.C. Bose has written this kind of story, in this story, the hero of the story is a very common, ordinary man who saves Bengal from a devastating cyclone, and not a foreigner or not a Western hero who comes and saves the world with the same conventional thing, which was actually at that time a fashion. Like fashion as in, that was the trend that westernization was connected with scientific fiction. So this was something which was initiated, I would say, by Dr. J.C. Bose when he did this. We also know about Palatak Tufan. Niruddeshya Kahini was later on elaborated in 1921 as in the form of Palatak Tufan. And again, I say this, that it is a wonderful science fiction because it has both the elements. First, the natural phenomena, that is cyclone, which is, and the chemical effects of oil on water, which is explained very beautifully and efficiently
in the form by adding some magical realist elements into it. Like, I will talk about it later. So, yeah. Now, from the perspective of science communication, what I would like to say is that J.C. Bose tried to shake the foundation of connection between science fiction and colonialism by promoting Indian philosophy. Because in this story, Palatak Tufan, he talks about the concept of oil which could calm the surface of water, while bringing into play the story that there is a person who there is a circus director who visited India from foreign, and he has a lion with him who is balding. The lion is balding, and then he goes to an Indian sannyasi, and the sannyasi offers him a bottle of Kuntal Keshari and asks him to use it, and because of which the lion recovers. You know, he gets his hair back. So that was a very interesting story, which also brings into play the Indian philosophy and Indian culture of magic, sannyasi, etc. So what I am trying to say here is that the takeaway from this presentation is that instead of bringing a lot of hi-fi things into our stories, science stories can be told in a way which the very general audience and general people understand. That is why I say that wonders of universe and scientific concepts can be explained to a wider audience who believe in myths, legends, and superstitions. Even those people can be explained science can be explained to even those people with the help of certain basic things which they practice or which happen to them in daily lives and in their general scenarios. So all of that can be brought into play, and science can be explained to such people. This is one of the important aspects of science communication, and this is how it can be done efficiently. Thank you. Thank you, Tanu. It was an interesting paper. If there are any questions from the audience side? So if there is no, yeah, please. Yeah, so this is the elaborated version of Niruddeshar Kahini in Palatak Tufan, and the English version of this story, the English translation of this story is Runaway Cyclone, about which earlier it has been talked. In that story, it has been mentioned that that this is another part of the story wherein there is an English circus director who comes to India, and the director has a lion with him, and the lion is balding. So what I am trying to say is that these are different kinds of scenarios can be brought together to present science in a very informative and engaging manner as well. Okay. Yeah. ओके, थैंक यू। अच्छा, ये तो कहानी रही। एक रियलिटी है, और रियलिटी अमेरिका से है। नॉर्थ कैरोलिना में 1980 में ये घटना घटी थी। ओरिजिनल घटना घटी ये कि वहाँ के रेडियो स्टेशन पर ही किसी ने फ़ोन करके न्यूज़पेपर ऑफिस में पूछा, क्या ऐसा कोई खबर है कि वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा तेल या कोई ऐसा केमिकल डिस्कवर किया है कि उसको अगर समुद्र की लहरों के ऊपर फेंक दिया जाए तो वो लहर की तूफान नहीं आएगा वहाँ पे।
तो उन्होंने कहा ये कहाँ आपको कैसे पता चला? कहा नहीं, ऐसे हमें पता चला कि कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार के केमिकल पर काम कर रहे हैं। वो भी बेसिकली वो फिक्शन था, लेकिन फिक्शन क्या होता है, कभी कभी पब्लिक के बीच में वो एक जो है रियलिटी के रूप में चला जाता है। दैट्स वाई वी रिक्वायर द प्रॉपर साइंस कम्युनिकेशन, व्हाट साइंस कैन डू एंड व्हाट साइंस कैन नॉट डू। सो दिस इज द बॉटम लाइन। थैंक यू। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पेपर, डॉक्टर रेमिया कृष्णन। Remia, take your time. Sir Bose, the pillars of radio science. Thank you. First slide this, no? Remia, you have 7 minute times. Please go quickly. Yes, sir. Yeah. Hello, good evening. I know everyone must have been tired after listening so many presentations. But okay, I'll try to include only the new things which you might not have heard today, because since morning I heard everybody was talking about radio science and his science fiction. Okay, so I am a biology teacher, so I'll tell you something about botany. Okay, so I'm sure everybody knows the story. He was born in Bangladesh. He graduated from St. Xavier College, and he was a professor at Presidency College, Calcutta. And he was a double degree, like he had a BA and a BSc degree, that too from Cambridge University. Actually, he went there to study medicine, but he couldn't stand the smell of the dead body, so he quit and he started studying physics. Okay, so for me, why he was important, because he was a botanist. Since I am also a botanist, so I found his, being a physics, he know the importance of transpiration. Ab transpiration kya hai? The push and the pull that it reaches the water, from which it reaches the air. Okay, transpiration क्यों important है? क्योंकि जो rain है वो उसका भी एक part है transpiration का. I'll tell you, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा जो इनका research लगा, that was in botany. That is, I just wanted to show this because it was not presented. There was an Indian postage stamp, because I used to love writing letters. तो ये जो stamp था वो मुझे अच्छा लगा, तो I picked it. And yes, this is Mimosa pudica. If you know, this belongs to the family Mimosa. And इसमें क्या होता है? इसको जैसे ही touch करो वो चला जाता है. तो that is what, it is touch me not, मुझे मत छुओ. So यही चीज़ जो JC बोस सर हैं, उन्होंने देखा कि भाई इसको जैसे ही टच करते हो वो तो वही प्लान्स आपको बताने की कोशिश करते हैं. अगर आप बाहर जाओ तो आपको प्लान्स बताएंगे कि व्हाट दे डिड. इफ यू सीइंग ड्राई एंड ड्रूपिंग लीव्स, तो आप कह सकते हो कि चलो दीज प्लान्स रिक्वायर वाटर. सो ही वाज द पायनियर जिन्होंने बोला था कि प्लान्स ऑल्सो हैव, दैट्स व्हाई ही डिस्कवर्ड क्रेस्कोग्राफ. तो प्लान्स ऑल्सो हैव देयर ओन इमोशंस. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज क्रेस्कोग्राफ, जहाँ पर एक प्लांट को उन्होंने पॉइजन दिया था और दूसरे प्लांट को उन्होंने जिंदा रखा था. तो जो पॉइजनस वाला प्लांट था वो मर गया, ठीक है. और इसमें भी इनके साथ धोखा हुआ, बिकॉज हम इंडियन हैं. तो जब वो अमेरिका में उन्होंने जाके प्रेजेंट किया तो उन्होंने पानी दे दिया. जो टाइटेनियम ऑक्साइड उन्होंने मांगा था वो नहीं दिया, उन्होंने पानी दे दिया और बोला ये देखिए पौधा तो नहीं मरा, आप तो झूठ बोल रहे हो. लेकिन इट वाज नॉट, ही प्रूव्ड. एंड PA जो वहाँ का था उसने अपोलोजाइज किया था. ही सेड कि नो, इट इज़ actually I gave you water. So this was one more. Why photosynthetic is synthesis? Because हम उसी की वजह से जिंदा हैं. अगर हमें खाना नहीं मिलता, पत्ते नहीं मिलते, तो obviously everybody, even if you're a non-vegetarian, you require leaves. ठीक है. So that photosynthesis is very important. So ये उन्होंने कैसे find out किया? Using hydrilla. Hydrilla क्या है? एक प्लांट है जो पानी के अंदर रहता है और वो ऑक्सीजन जब निकालता है तो वो एयर बबल्स के फॉर्म पे निकालता है. तो यू नो कि एयर बबल्स आती है, जैसे मछली पानी में जाती है तो बबल्स निकालती है, वैसे ही. ओके, सो यस, ये सब आई थिंक सर ने बताया था, मानस सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में. वायरलेस कम्युनिकेशन, ये मुझे मेंशन करना था क्योंकि ऑब्वियसली जो
सर ने इतनी अच्छा डिस्कवरी ढूंढा, आप लोगों का ये जो वाईफाई चलता है सब कुछ सर की वजह से था, लेकिन ये मार्कोनी ने क्रेडिट लिया विदाउट अ सिंगल मेंशन ऑफ बोस इन हिज पेटेंट. सो इट वाज वेरी sad to see this, and yes, these were his discoveries. Acha, so my theme was basically as a science educator. Since I am a teacher, so I need to communicate. तो अगर मैं किसी को बोलूँगी कि बच्चों आ जाओ मैं तुम्हें साइंस पढ़ाती हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. Everybody will say no, I don't want to. But अगर मैं बोलूँगी कि space time is like a trampoline, you know, तो they will be interested. What is a trampoline? Trampoline is जैसे आप जंप करते हो ना, वो वैसे पीछे जाता है और आपको आगे भेजता है. तो ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के जो सन है वो वैसे ही सिचुएटेड है. साइंटिस्ट बिलीव दैट, और उसके अराउंड हमारा अर्थ सब कुछ घूमता है. सो दैट इज़ वॉट, हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर. दिस आई पिक्ड अप फ्रॉम भागीरथी बिकॉज आई एम अ शिव भक्त. सो क्या होता है, भागीरथी को कहते हैं कि शिव जी के जड़ा में से निकलता है. तो अगर हम किसी को ये समझाएंगे तो वो एक आम इंसान समझ सकता है. लेकिन if a scientist like us, we know what is it. It is basically a water cycle जो mountain से आके गंगा के river में बह के आता है. तो this I am very short of time. I would have explained more with it, but yes, he obviously एक scientist को poet के form में भी सोचना पड़ेगा. So he had a close association with Rabindranath Tagore, had a very rich scientific cultural connection where he believed that science to be a living spirit that interpreted the laws of science. So everybody knows that हमारे मानस सर ने बहुत अच्छे से explain किया. I won't elaborate. He was known as a father of science fiction. और आपने सुबह भी सुना था कि science fi क्या होता है. It is like a science fiction के उन्होंने बहुत सारे books दिए थे. So अच्छा, why science communication is important for a general audience? Why is it so? Because अभी जो कोरोना था, अगर जैसे पल्स मीटर है, ये आप लोगों के घर में होगा. अगर ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में if you wouldn't know, how would you know it? So you should be able to communicate well in a scientist that कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. So that's why Sir J.C. Bose का बहुत अच्छा credit है कि he was the first communicator, first scientific communicator of India. So these all are the pictures which I could find interesting, so I just pasted. And this is the Sir Joe's Botanical Garden. Being a botanist, मेरे लिए botanical gardens बहुत ज़रूरी होते हैं. So this botanical garden was dedicated to Sir J.C. Bose. Thank you so much. Sir, ये बंगाल में Hello. है. Is there any question from audience? Yeah, please. Yes, nice presentation. Nobody has spoken about this Ganges, and then he said that, yeah. So where you come from? Then she replied that I come from Shivji's, hairs. So you just elaborate it, because I think people will be interested to know this. Utsav, ठीक है. I am not a Bengali, so please do not misinterpret. But I know the story. ये क्या करते थे, सर बैठते थे गंगा रिवर के बगल में, और रात को ना सिर्फ गंगा रिवर की ऐसी लहरों की आवाज़ आती थी. तो उसकी वजह से क्या होता था, ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव, ही हैड अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल. तो उन्होंने नोटिस किया ये कैसे आया. तो उन्होंने देखा कि जो भागीरथी रिवर है वहाँ की जड़ा, जो शिवजी की जड़ा है, वहाँ से गंगा को लाया गया है ना. इट इज़ ये माना जाता है. एंड देन इट वॉज पब्लिश्ड इन दिस जर्नल दासी, एंड इट वॉज एडिटेड. एंड मोरएवर, अगर आपको इफ़ यू नो, इनकी जो एसोसिएशन है विद सर रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी रिवर गंगा के बैंक साइड में बैठ के बातें करने से ही, मतलब दे हैड अ स्मॉल टॉक्स, दे यूज्ड टू हैव टॉक regarding that. It was there. So that was the story. And actually basically science के बच्चों के लिए ये है कि ये water cycle था, कि mountain से पानी आता था, ठीक है, it reaches the oceans, then used to be evaporated and then it used to come back. ये हमें scientist है, हमें पता है. लेकिन अगर आप किसी एक इंसान को समझाओगे तो आप कैसे समझाओगे कि mountain है, शिवजी किस जड़ों से आया है गंगा रिवर, एंड ओशन में गया, एंड देन वापस शिवजी के पास गया. दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन टू अ लेमैन. Okay. Thank you.
Okay, sir. I'll. Sorry to interrupt. Sir, actually, it was in but Bengali. This was a so- great presentation, but I would just like to add that it's called Bhagirathir Utsho Sandhane. Utsa Samman. Utsho Sandhane, tracing the origin of Bhagirathi. Riv- Now the point is what the style of J.C. Bose is like that. He chips in with mythological stories and then tells you the real science behind it. Yes. He didn't say that actually the river originated in that way from the of Shivji. But he attaches great importance to these stories Yes. because these stories can enrapture you, and then the position is created where you can deliver the scientific fact. That's the way it goes. Yes. Thank you. No. There is a book by Dr. Meherban Yes, sir. where he has translated this whole thing, including the Bhagirathi Okay, so story. I'll go. So, yeah. It's Prabhat Prakashan, book by Mr. Bagh and Dr. Meherban. Okay, sir. Okay. Now we have another good paper. Thank you, Ramya. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Now we have another very good paper. Dipta Saha. So, Dipta? Okay. Not available, so I think let us felicitate Dr. Manas, who delivered a very good lecture today and inspired many of us to understand the importance of science communication. So many those who are in the field of science, they can take this role in communicating science in simple languages. Yeah. थैंक यू सो मच. अब मैं आज के चेयरपर्सन डॉक्टर माधवन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के हमारे प्लेनरी स्पीकर डॉक्टर मानस प्रतन दास जी को मोमेंटो भेंट करें. सर ऊपर ही आ जाइए. और मैं डॉक्टर अंबिका प्रोफेसर माधव गोविंद जी को मोमेंटो भेंट करने की कृपा करूँ. नहीं पता नहीं राजीव सर को पूछ से आगे करना है मास्टर लोगों को तो कितना टाइम now it's a time for tea break. We'll meet here. Now we'll meet here at 4:15.
ये वाला राइट हमारे अतिथि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं एंड विल जस्ट स्टार्ट द वैलिडिक्टरी इन अ फ्यू मोमेंट्स. सभी को नमस्कार और इस समापन सत्र के आरंभ में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर एन.पी. शुक्ला, मेंबर CAQM इन दिल्ली NCR, चीफ गेस्ट श्रीमती प्रियंका चंद्रा, डायरेक्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सर एंड मैम, प्लीज come and have the seat on the dais. I also request Dr. N. Madhavan, Dr. Puneet Mishra and Professor Rajiv Singh to accompany them to the dais. मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि वे भारत माता व आचार्य जगदीश चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर आचार्य जगदीश चंद्र बोस तथा भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें. मंचासीन महानुभाव.
एक महान वैज्ञानिक व आचार्य को हम सब की पुष्पांजलि। आप सभी का बहुत आभार। अतिथि देवो भवः। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका चंद्रा जी के अभिनंदन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्री माधव गोविंद जी से, वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती, कि वे शॉल, मिमेंटो तथा एक पौधा भेंट कर हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी जी से कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर NP शुक्ला जी का स्वागत करें। डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी, सीनियर साइंटिस्ट, IUAC। मिमेंटो भी दिए। प्रोफेसर पुनीता वर्मा जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर N माधवन जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर इंदिरा सोलानिया जी से अनुरोध है कि वे डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी का अभिनंदन करें। प्रोफेसर राजीव सिंह के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर पंकज को। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। Lead us from ignorance to knowledge, lead us from darkness to light. We may no longer be tied by the bonds of death. Lead us to our eternal state of immortality. Om, peace, peace, peace.
इसी व्यापक संदेश के वाहक आचार्य जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। For the formal welcome of our guests, I invite Dr. N. Madhavan. He is Scientist H, Inter-University Accelerator Center. Dr. Madhavan, please. Sorry. Yeah, it gives me great pleasure on behalf of our director, Professor Avinash Chandra Pandey, who could not be here today, and all the staff of IUAC, to welcome our chief guest, Srimati Priyanka Chandra, Director, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ministry of Culture. Actually, because of her and her organization's support only, such events are held, and we are very happy that IUAC also got an opportunity to conduct such a grand event in our auditorium. I also invite the guest of honor, Dr. N.P. Shukla. He is member, Center for Air Quality Management in Delhi NCR, Government of India. Thank you, sir. And then we are also joined by Dr. Puneet Mishra, President, Indraprastha Vigyan Bharati, which is the pioneering institute which has done this massive scale arrangement along with IUAC with the backing of Ministry of Culture. And then also Professor Rajiv Singh, Secretary of Indraprastha Vigyan Bharati. Actually, the hall was filled up yesterday morning. We had a lot more students, and somehow I don't find many of them here. So it was a good event, and where the youngsters, who are the future of our country, they are getting to work with so many or listen to so many scientists, see a vibrant research organization like IUAC, and they also participated in several small experiments like using a telescope or making some small devices. So that must have enthused them to take up research and development as a thing, which is also the dream of our government of India in upskilling the people, students. And I'm sure they'll go with fond memories, all the students. It doesn't matter whether you have won a prize or not. Even participation is something great. If you put your hand up, you participating as such, as a mere participant itself is going to give you a lot of encouragement. And if you have participated in an event or a competition, it's even better. And if you win, then it's like cherry on top of the cake. So I wish all of you good luck and keep the innovation spirit and scientific spirit in you. Please. So I welcome you all for this function. Thanks a lot. Thank you, sir. We have amongst us Dr. Puneet Mishra, the president of Indraprastha Vigyan Bharati. He is a professor of community medicine at AIIMS, and he has over 20 years of experience as a physician, researcher, teacher, and public health professional. I invite Dr. Puneet Mishra to address the gathering and share his vision about the program. Sir, please. थैंक यू। मंच पर विराजमान हमारी मुख्य अतिथि प्रियंका जी, जो डायरेक्टर हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का, शुक्ला जी जो कि पॉल्यूशन बोर्ड में मेंबर हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, माधवन जी एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट IUAC, पांडे जी आज कहीं किसी कार्यवश दिल्ली से बाहर हैं, कल उनकी उपस्थित थी, आज वो यहाँ पर नहीं हो पाए। हमारे विज्ञान भारती के सचिव राजीव जी, इस हॉल में विराजमान डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डेलीगेट्स, स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल हमने मॉर्निंग में, आप में से बहुत लोग थे जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और इस जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संगोष्ठी हुई है, जो हमारा
आचार्य जी के ऊपर, जगदीश चंद्र बोस जी के ऊपर जो हमने एक भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जो कार्य हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भारत की प्रगति में उस समय जब हमारे देश में काफ़ी रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्थिति थी, उस समय उन्होंने क्या कार्य किए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पिछले 2 दिन से हमारे कई विशिष्ट मेहमान आए हैं जिन्होंने आपको अपने व्याख्यानों द्वारा इस बारे में जागृत किया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। तो बात उठती है कि आखिर हम ऐसे प्रयोजन क्यों कर रहे हैं, किस लिए हमारे इस प्रयोजन को करने की आवश्यकता रहती है। देखिए, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है भारतवर्ष का, अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा समृद्ध हमारी जो हेरिटेज है, बहुत कल्चरली बहुत समृद्ध विरासत रही है, सदियों से बहुत समृद्ध विरासत रही है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र रहा हो या कोई और क्षेत्र रहा हो। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, अगर चूँकि मैं चिकित्सा विज्ञान से आता हूँ, अगर मैं वहाँ पे साइंटिस्ट की बात करता हूँ तो सुश्रुत ने जो नियम बनाए थे सर्जरी के, वो आज के आधुनिक वैज्ञानिक यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे नाक को सुधारने की सर्जरी हो। आज भी वो सारे जो उन्होंने विधियाँ विकसित की थी वो आज के टाइम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अन्य विधाएं हैं विज्ञान की, उसमें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जीरो की खोज रही हो, चाहे आर्यभट्ट साहब की रही हो। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी साइंस की, उसमें क्या हुआ कि कुछ समय ऐसा रहा जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और उन्होंने हमारी बहुत सारी जो विरासत थी उससे हमें दूर किया। हमें कुछ ऐसा सिखलाया गया कि शायद हम बहुत पिछड़े लोग हैं, हमारे यहाँ विज्ञान का कोई कार्य ही नहीं होता, जबकि शायद ये एक पूरी तरीके से गलत चीज़ थी। और समय के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ दिमाग में आ गई कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, सिर्फ साइंस का काम वहीं पर हो रहा है। और जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने ये कोशिश की कि एक ऐसा वर्ग पैदा किया जाए जो सिर्फ उनके आदेश को या जो उनका राज्य चलाना है, कानून है, उसको पालन करवा पाए। और हम क्लर्क पैदा करें, शिक्षा पद्धति को हम इस प्रकार से बदलें कि हम ना तो सोच पाएँ, ना हमारा कोई इनोवेशन हो पाए। और उस समय कई सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमें उस समय भी दिशा दिखलाई। तो जो हमारे आचार्य जी का जब आपने जिक्र आता है तो आपने जाना होगा पिछले 2 दिन से जो हमारे व्याख्यान चल रहे हैं कि किस प्रकार से वो भारत से पढ़ के लंदन गए, इंग्लैंड में गए, उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश लिया, नहीं पसंद आया, फिर वो दूसरे क्षेत्र में गए, मास्टर्स की, उसके बाद अपने भारत देश लौट के आए। एक वो विद्वान व्यक्ति, आप सोचिए, एक वो विद्वान व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से कम नहीं था, भारत आके उसको जो वेतन दिया जा रहा था, जो ऑफ़र किया जा रहा था, वो कम था सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे। उन्होंने इसके ऊपर भी सत्याग्रह किया और अंत में उनकी विजय हुई कि बराबर वेतनमान पे उनको भारत में रखा गया। उसके बाद जो बात आती है, मुझे अगर हम आचार्य जी की देखते हैं, एक ऐसी प्रतिभा जो मल्टीडिसिप्लिनरी थी। हम कई बार बात करते हैं ना, हम फिजिक्स के आदमी हैं, हम केमिस्ट्री के आदमी हैं, हम बायोलॉजी के आदमी हैं। अगर आपने आचार्य जी का प्रतिभा का देखा तो उन्होंने बॉटनी में काम किया, उन्होंने फिजिक्स में काम किया, और जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए हैं वो आज भी मान्य हैं। जब हम 5G की बात करते हैं तब हमें बात मालूम होती है कि मिलीमीटर वेव की बात उन्होंने उस ज़माने में की थी जब हम वायरलेस के बारे में शायद जानते भी नहीं थे। दूसरी चीज़ जो हमें भारतीय परंपरा से सीखनी है, आज के युग में क्या होता है कि अगर हम कोई खोज करते हैं तो हमारा अधिकतर जो पश्चिमी देश हैं और भारत में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी चीज़ की खोज में लगते हैं पश्चिमी देश में तो हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि उससे कैसा पैसा कमाना है, जबकि भारतीय मनीषी जो रहे हैं, भारतीय विद्वान जो रहे हैं, उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हमें मानव कल्याण का कैसे उद्धार करना है, कैसे उनको आगे ले जाना है, कैसे उनको फ़ायदा देना है। तो उसी परंपरा के साथ हमारे आचार्य जी ने
कभी ये नहीं चाहा कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, हमारे पास बहुत ज़्यादा सम्मान हो। वो उन्होंने हमेशा एक, जैसे भारतवर्ष की परिपाटी रही है कि संत बन के और समाज को फ़ायदा पहुंचाना है, उसी प्रक्रिया में उन्होंने जो अपने सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित किया। आज जो हम वायरलेस देख रहे हैं, भले इसका जो पेटेंट है मार्कोनी को जाता है, लेकिन अब दुनिया जानती है कि सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे आचार्य जी ने किया था। अब ये सब चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं आप जानें? हर कंट्री की हिस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जितने भी आप देश देख लीजिए, जितनी भी आप चीज़ें देख लीजिए, भारत बहुत ऊपर था। एक काल ऐसा आया जब हमारे पास विदेशों से हमले हुए, ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारे ज्ञान को नष्ट किया, हमारी जो विश्वविद्यालय थे उनको जला डाला। ठीक है, हमारे पास ऐसा समय आया, लेकिन उस समय भी ऐसे वैज्ञानिक हमारे इसी धरती से निकले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हाँ, हम अचीव कर सकते हैं। और आज के समय जब हमारे पास कांस्टेंट उतने कम नहीं, हमारे पास जो चाहे साइंस का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हमारे और जो साधन हैं पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो नए विद्यार्थी, उनको जानना चाहिए। और जहाँ तक बात करते हैं हम भारत की, आप सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, स्पेस की आप बात कर लीजिए, इसरो की बात कर लीजिए, क्या हम दुनिया में किसी से कम हैं? हमारे पास संसाधन जरूर सीमित हैं, लेकिन हम आज किसी से दुनिया में कम नहीं है। स्पेस का प्रोग्राम हमारा दुनिया में शायद जो टॉप मोस्ट प्रोग्राम्स उसमें हैं। और कौन चला रहा है? क्या पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक चला रहे हैं? जी नहीं, हमारे वैज्ञानिक चला रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से सीखना होगा कि हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम अगर उस काबिलियत का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम को ऊपर ले जा सकते हैं। अभी बात करते हैं पश्चिमी देशों की। अगर हम नासा की बात करें, हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, हम सिलिकॉन वैली की बात करें, अगर उसमें से भारतीय प्रतिभा को निकाल दीजिए जो हमारे इंजीनियर्स गए हुए हैं, तो क्या नासा, क्या माइक्रोसॉफ्ट या क्या अमेरिका जैसे विकसित देश की चिकित्सा प्रणाली क्या काम कर सकती है? तो क्यों नहीं हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जब हमारे पास वो क्षमता है, तो हम क्यों नहीं अपने देश को और तरक्की के रास्ते पे लेके चले जाएं? अभी क्या चल रहा है कि एक देखा होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश में मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल की बात और कही है कि आने वाले 25 सालों में हम क्या देखना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं। हमें लगता है कि एक हमारे पास इस समय टाइड है जो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे शिप होता है ना, आपने देखा बच्चों ने कि कभी लहर आएगी तो पूरा शिप ऊपर उठ जाता है, लहर नीचे जाती है तो पूरा शिप नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से इस समय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो अमृत काल है, ये हमारे यहाँ वो टाइड आई हुई है कि इस टाइड को हम उपयोग करके अपने साइंस टेक्नोलॉजी को विश्व के पटल पे और ऊपर ले जाएं, और जो हमारी इमेज थी, जो हमारी प्रतिष्ठा सदियों पुरानी थी, उस प्रतिष्ठा को हम पुनर्स्थापित करें। हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो दो बातें, एक हमारा बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, दूसरी बात हमारे अंदर क्षमता रही है, और हमने जहाँ भी है प्रूव किया, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में हो, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वैक्सीन के। अभी देखिए, कोविड जितनी बड़ी महामारी आई थी, मैं कोविड वैक्सीन से जुड़ा हुआ था, उसका चाहे फेज़ 1 ट्रायल हो, चाहे फेज़ 2 ट्रायल हो, चाहे फेज़ 3 ट्रायल हो, और उस समय इतनी निगेटिव बातें आ रही थी कि भारत के लोग कहाँ कर सकते हैं, हम इतनी आबादी को कहाँ पे वैक्सीन दे पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 2 सालों के अंदर की बात है। लेकिन आज अगर आप विश्व के पटल पे देखेंगे, हमने न सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया है, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी वैक्सीन दी है जो वैक्सीन बनाने में समर्थ नहीं थे। तो ये हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा ही है। ये हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा है, और इसमें कहीं से अगर आप पढ़ें फाइजर वैक्सीन की, जो mRNA वैक्सीन बनाई गई अमेरिका में, जब उन्होंने दूसरे देशों को किया तो उनसे आप देखिए कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए, पैसे के कॉन्ट्रैक्ट किए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनकी पूरी इस तरीके से किया कि अगर वो पूरी वैक्सीन लेते हैं तो कई देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। एक ये भारत देश है जिसने अपनी प्राचीन परंपरा को मानते हुए
वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानते हुए पूरी दुनिया में उन देशों को भी वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया है जहां पर वो इतने समृद्ध नहीं है, इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हमने सिर्फ एक मानवता के नाते, तो मुझे लगता है जो हमारा साइंस में है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास यंग लोगों की पावर है, हमारे पास जो आज़ादी का अमृत महोत्सव और जो अमृत काल की बेला है, इसकी टाइड आई हुई है, इसको उपयोग करके हमें साइंस को ऊपर ले जाना है। लेकिन साइंस को ऊपर ले जाने के साथ साथ हमें भारतीय परंपरा को निभाते हुए कि हम इसे मानवता के कल्याण के लिए करेंगे, हम सिर्फ पैसा बनाने का साधन नहीं बनाएंगे। हम पेटेंट बना के क्यों एक मॉलिक्यूल भारत के अंदर अगर आप दवाई का देखें इतनी सस्ती आती हैं, लेकिन अगर विदेशों में जाएं वही मॉलिक्यूल करोड़ों लाखों करोड़ों में बिकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का पेटेंट कराने के बाद सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, जबकि भारत का उद्देश्य रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मानव जाति है उसका कल्याण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सुविधाएं मिल पाएँ। और ये हमारे संस्कृति हमें अपनी विरासत में मिली, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो उन्होंने हमें सिद्धांत दिए हैं, जो हमें परिकल्पनाएं दी हैं, और उसका एक नतीजा और है, जब आप मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं आप बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। आज आप में से बहुत लोग अमेरिका जाने की बात करते होंगे, बड़ा विकसित देश है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी वाले ड्रग्स पे हैं, तनाव में रहते हैं। अगर सिर्फ पैसा या वैज्ञानिक खोज से ही सब कुछ समृद्धि आती तो शायद वो सबसे खुशी देश होते। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं यहाँ पे, जो आपने 2 दिन में हमारे विद्वान जनों के विचार सुने, उन विचारों को अंगीकृत करते हुए साइंस के क्षेत्र में वो उपलब्धियाँ भारत को प्रदान कराएं, और उस धारणा के साथ जैसे हमारे बोस जी ने किया कि हमें भारत को आगे ले जाना है, उस तरीके से आप करें। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का टाइम है, हमें इस तरीके से कार्य करना है कि आजकल मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ, खास करके डॉक्टर, चूँकि चिकित्सक हूँ तो मुझे चिकित्सा जगत से ही ज़्यादा एग्जाम्पल समझ में आते हैं। जिस तरीके से सुपर स्पेशलाइजेशन होता चला जा रहा है, देखिए हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, अब शरीर तो नहीं जानता कि अच्छा ये किडनी का काम है, ये हार्ट का काम है, ये शरीर तो एक है। अभी क्या हो गया कि जहाँ जितना सुपर स्पेशलाइज होता चला जा रहा है, आप कहते हो कि अच्छा मैं किडनी जानता हूँ, किडनी में भी इतना जानता हूँ, मैंने कर दिया, अब आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। शरीर तो एक ही है ना, मुझे तकलीफ तो, अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मैं सिर्फ इससे चिंतित हूँ मुझे दर्द हो रहा है, किडनी से हो रहा है, हार्ट से हो रहा है, किससे हो रहा, या मैंने किडनी देख ली, लीवर के लिए दूसरे के पास जाइए। तो मुझे लगता है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो भी बहुत ही आवश्यक है, और हमारे जो यूथ हैं, जो युवा वर्ग हैं, उसको उस पर भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें सवाल पूछने की प्रवृत्ति जाननी चाहिए। साइंस में जहाँ हम सवाल करना शुरू करते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और वही एक्सपेरिमेंट है, आपने कल बनाया ना वो हमारे यहाँ एक था कि कैसे जो प्लांट हैं उनके ग्रोथ को हम कैसे मापेंगे। तो अमित जी के सहयोग से और हमारे सोनी जी के सहयोग से कार्यक्रम हुआ, तो आपने देखा, तो करके देखो, सवाल करो, करके देखो, किसी की बात नहीं मानो। साइंस क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करो, सवाल पूछो, आपके टीचर्स हैं, आपके आचार्य लोग हैं, उनसे सवाल पूछिए। और ये जो हमारा अमृतकाल है, आगे आने वाला 25 साल जिसमें आप लोग देश की कमान संभाल रहे होंगे, उस समय का पूरा सदुपयोग करके हमारे भारतवर्ष को आगे ले जाने का आप कार्य करेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारतीय इतिहास और क्षमता को विस्तृत जानकारी देने हेतु आपका बहुत बहुत आभार। We are privileged to have Dr. N.P. Shukla, Member Commission for Air Quality Management in Delhi NCR, Government of India, as guest of honor. आपको लगभग 35 वर्षों का एनवायरनमेंट व अन्य संबंधित विज्ञान के क्षेत्रों में प्रोफेशनल अनुभव है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अनुभव व विचार हम सब के साथ साझा करें। Madam Priyanka Chandra, chief guest of this function and director for Azadi Mahotsav.
Dr. Puneet Mishra, President, Indraprastha Vigyan Bharati, Dr. Madhavan ji, in charge director of this institute, Dr. Rajiv Singh, Secretary, Indraprastha Vigyan Bharati. I am thankful to organizer for inviting me here to talk on Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are thankful to Ministry of Culture and to Vigyan Bharati for organizing this Azadi Ka Amrit Mahotsav in all the parts of the country. I had privilege to participate in 2-3 functions of this Azadi Ka Amrit Mahotsav. I was there, and really it was a unique idea, and I congratulate Ministry of Agriculture and Vigyan Bharati for organizing this event. And as Dr. Mishra was telling, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ये टाइटल दिया है, इनफैक्ट ये थोड़ा आत्मविवेचना करने के लिए दिया गया है. Why this आज़ादी का अमृत महोत्सव? After 70 years of independence, we are assembled here to celebrate this occasion. साइंटिस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको कभी क्रेडिट नहीं दिया गया आज़ादी में. ये जो आज़ादी हमको मिली, पर साइंटिस्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिला. एंड इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और विज्ञान भारती ने इस चीज को सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया के सामने लेके आया कि साइंटिस्ट सफर्ड लॉट. उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत ह्यूमिलेशन झेला है इस आज़ादी के लिए. ऐसे ये आज़ादी सिंपल नहीं आ गई है. अभी बाहर बैनर देख रहा था मैं, सत्याग्रही वैज्ञानिक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, सत्याग्रही वैज्ञानिक. You know that the first satyagrah of the history was that credit goes to Jagdish Chandra Basu. पहला इतिहास का सत्याग्रह जगदीश चंद्र बसु ने किया था. आपने अभी 2 दिन के डेलिब्रेशन में ये बात आई होगी कि उन्होंने 3 साल तक सैलरी नहीं ली. प्रोफेसर, ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर, बट बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन he was selected for imperial services, where he has been demoted to provincial services. उनकी तनख्वाह 1/3 कम कर दी गई. काम उनको दूसरों के बराबर करना पड़ता था, पर उनकी सैलरी 1/3 थी. उनको बहुत अपमान झेलना पड़ा. And to protest that, for 3 years, he has not taken any remuneration from the British government. That was the first satyagraha of the history, not by any politician, it is by scientist. हम लोग बात करते हैं कि हमारे हिस्ट्री में हमको सुनने को आता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था. Yes, ये सोने की चिड़िया था. इन द ईयर 1700 प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ. उसके पहले 1700 अराउंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया in international GDP
was 27 to 30%. 27 to 30% contribution was alone from the India. इससे आप समझ सकते हैं सोने की चिड़िया. And जब अंग्रेजों ने 1947 में देश छोड़ा, उस समय हमारा कंट्रीब्यूशन घट के इट वॉज लेस देन 4%. तो ये अंग्रेजों ने जो हमें लूटा है और हमें सोने की चिड़िया से हटाकर नीचे धरातल पे बिठा दिया. एंड वो जो सफरिंग्स हुई हैं इस दौरान, उन सफरिंग्स को याद करने का ये मौका है आज़ादी का अमृत महोत्सव. यू नो दैट हमारे लोग बोलचाल में कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश को बहुत दिया है. एंड वन ऑफ द गिफ्ट, साइंटिफिक गिफ्ट, दे आर कोटिंग दैट इट इज अ रेलवे. बोले हिंदुस्तान को रेलवे दी है ब्रिटिश शासन ने. 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली है. रेल इसलिए नहीं चली टू फैसिलिटेट द पैसेंजर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. आप देखें जो शुरू में रेल लाइन डाली गई, वो सारी रेल लाइन रिमोट एरिया से लेके और वो बंदरगाह तक, या तो वो कलकत्ता बंदरगाह, या वो बॉम्बे का बंदरगाह, या फिर वो मद्रास का बंदरगाह, सारी रेल लाइन देश में जो बिछी हैं इनिशियली रिमोट एरिया. अब रिमोट एरिया, यू अंडरस्टैंड दैट छोटा नागपुर एट दैट टाइम, यू थिंक ऑफ छोटा नागपुर क्या रहा होगा. यू नो दैट शहडोल मध्य प्रदेश में इंटीरियर में, अभी तो अच्छा विकसित जगह है शहडोल, छोटी छोटी जगह. क्यों? यू नो दैट ये रेल लाइन क्यों डाली गई? रेल लाइन इसलिए डाली गई कि हमारी जो नेचुरल वेल्थ है, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, कोयला, आयरन, कॉपर, ये जो हमारे मिनरल रिसोर्सेस थे, उनको इकट्ठा करके उसको ट्रांसपोर्ट करके और बॉम्बे के बंदरगाह, कलकत्ता के बंदरगाह और मद्रास के बंदरगाह में पहुंचाकर और वहां से इंग्लैंड भेज दिया जाए. इंग्लैंड को, ब्रिटेन को फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन होने का गौरव प्राप्त है. पर वो किसकी कास्ट पे इंडस्ट्रियल नेशन बना? औद्योगिक देश किसकी कास्ट पे बना? हिंदुस्तान की कास्ट पे बना. इस रेल से उन्होंने हमारे सारे संसाधन, हमारी जितनी नेचुरल वेल्थ थी, हमारे जितने मिनरल्स, मेटल्स, वो सब इकट्ठा करके बंदरगाह ले जाकर और बंदरगाह से सीधा इन्होंने अपनी कंट्री भेजी. और ये जो मिनरल्स थे और मेटल्स थे, इंक्लूडिंग दिस टीक वुड, इन सब से उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ ब्रिटेन में, वो हिंदुस्तान की कॉस्ट पे हुआ. वो बन गए और हम बिगड़ गए. दैट वाज द हिस्ट्री. तो इस तरह उन्होंने हमारे देश को लूटा है. हमारे देश को बनाने में उनका कोई, उनको हमको जो रेल दे दी, वो रेल इसलिए नहीं दे दी टू फैसिलिटेट अस. वो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये किया. और इसकी वजह से अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने ये रेल डाली और ये इस तरह दिया. ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस. सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुई. सबसे पहला जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन था वो सर्वे ऑफ इंडिया था. एंड सर्वे ऑफ इंडिया क्यों था? क्योंकि हमारे इन संसाधनों की मैपिंग की जा सके, हमारे रिसोर्सेस की मैपिंग की जा सके, और मैपिंग करके और उनको इकट्ठा करके और उसको इंग्लैंड भेजा जा सके.
दैट वाज तो सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, विकास करना है विज्ञान के थ्रू। विज्ञान को उन्होंने एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। तो जैसा हमारे डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि उन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने, आज हर हाथ में मोबाइल है, पर ये मोबाइल, आप ये देखते हैं कि ये जो मोबाइल है, ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये देन जगदीश चंद्र बसु की है। जगदीश चंद्र बोस नहीं होते, द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मार्कोनी को इसकी क्रेडिट दी गई, पर उसके बहुत पहले कलकत्ता में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया वायरलेस कम्युनिकेशन। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस, जो नोबेल प्राइज मिली वो मार्कोनी को मिली। तो डोंट यू थिंक दैट इट वाज अ ग्रेट ह्यूमिलेशन एट दैट टाइम? उनके कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज किया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया, कम सैलरी दी गई, अपमान किया गया, उनको सेकंड ग्रेड टीचर बना के रखा गया। तो वो जो प्रताड़ना उन्होंने झेली है, एक हिंदुस्तानी होने के लिए वजह से, एक इंडियन होने की वजह से, तो आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इस देश में? हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसे लोगों की कुर्बानियों पर है, जिन लोगों ने उस समय में ये कुर्बानियां दी, इतना ह्यूमिलेशन सहा। तो इस अगर हम देखें तो ये एक, आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर conceptualization of this concept of आज़ादी का अमृत महोत्सव, कि हम कम से कम ऐसे लोगों को जिनको इतिहास ने कभी याद नहीं रखा, भुलाना तो छोड़िए, याद भी नहीं किया, तो ऐसे लोगों को कम से कम हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन में हम याद कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने प्रताड़ना झेली है, जिन्होंने ह्यूमिलेशन झेला है, उनको याद करने का समय है। और इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। ज्ञान परंपरा के हमारे देश को सपेरों का देश घोषित कर दिया गया था और हमारे ही वैज्ञानिकों के योगदान को हम भूलने लगे थे। आपने एक बार फिर हमारे समृद्ध इतिहास की हमें याद दिला दी। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु आज़ादी के अमृत महोत्सव में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने विज्ञान भारती व IUAC को सहयोग दिया। हम उनके आभारी हैं। विज्ञान व संस्कृति के इस अद्भुत संगम से, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से एक वृहद संदेश हमारे युवा वैज्ञानिकों और युवा विद्यार्थियों के बीच गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका चंद्रा हमारे बीच उपस्थित हैं। शी इज़ द डायरेक्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आई इन्वाइट यू मैम टू एड्रेस द ऑडियंस। Good evening, all the dignitaries and the audience present here. Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations mark 75 years of independence, highlighting the glorious history of the country. The ongoing celebrations under Azadi Ka Amrit Mahotsav brought light to India's achievement over the years, honoring those eminent names who made the nation proud with their dedication and enthusiasm. Ministry of Culture is also commemorating India's scientific achievements, master scientists, and remarkable progress in the field through Azadi Scientist Series. Science and technology have always been vital aspects of India's culture and history. Indian scientists made significant advancements during Indian Revolution, which coincided with our freedom struggle. Today we all are gathered here to celebrate one such luminary scientist, Sir Jagdish Chandra Bose, popularly known as J.C. Bose. He dedicated his life to serving science and has set a motivational example of nation above self.
in the modern history of Indian science, there is no other scientist that compares to his contributions in establishing the foundation of modern Western science in the country. What inspires the young scientist about his life is the endurance and dedication with which he performed his research work despite shortage of resources. J.C. Bose ji made a significant contribution by becoming the first person to ever do an interdisciplinary study by looking at plants from a physics perspective. This integrated biophysical perspective of life is currently very popular around the globe. There is so much the younger masses can learn from these forefathers of science and technology in India. Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the sense of national duty and pride, providing a platform to honor those who immortalized their name in history. On this occasion, I congratulate Vigyan Bharati and all the organizers for successful conduct of this event. Thank you. Thank you, ma'am, for your encouraging message. विष पौधों पर उसी गति से विष पौधों की उसी गति से हत्या कर सकता है जिस गति से दूसरे प्राणियों की। पौधे आधी रात को 12 बजे सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं। आज के अंतरिक्ष युग में शायद आम लोग ऐसे ही इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जीवधारियों और पौधों पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की एक सी प्रतिक्रिया होती है। यह तथ्य 1901 में भारत के विख्यात पुत्र आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया था। Based on the life and works of Acharya J.C. Bose, this two-day conference had few sub-themes like J.C. Bose as a Satyagrahi scientist, contemporary relevance of works of J.C. Bose, J.C. Bose vision for self-reliant India, 5mm 5G J.C. Bose contribution, and Bose as a science communicator. Besides that, we had 4 categories of competitions, and now it is the time to know the results of these competitions. For that, I invite Dr. Anu to announce the results of various competitions. Meanwhile, I also request our chief guest, Srimati Priyanka Chandra, and guest of honor, Dr. N.P. Shukla, to please come forward for prize distribution. And the prizes at present would be only the mementos. The cash prize and the certificates would be transferred online, digitally. Thank you, ma'am. जैसा कि मैम ने बताया, हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए। पोस्टर कंपटीशन, आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन एंड ओरल कंपटीशन। इसकी मुख्य बात ये थी सर, और मैम आपको बताना चाहूँगी कि ये हमने सभी विषयों के लिए ओपन रखे थे। किसी भी विषय को पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, फैकल्टीज़, टीचर्स इसमें प्रतिभागी हो सकते थे। इसलिए हमारे यहाँ पे जो प्रतिभागी आए हैं वो सिर्फ साइंस या विज्ञान विषय से जुड़े हुए नहीं हैं, वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशल साइंसेज, सभी सब्जेक्ट्स एरियाज से आए हैं। सो वील स्टार्ट विद पोस्टर कंपटीशन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। The third prize goes to Muskan Gautam and Amar University of Delhi. Muskan and Aman, दौड़ के आइए। They have presented as a team. So the third prize for the competition is 3,500 cash prize, and the certificate we will give online mode. I'll request Madhavan sir and Puneet sir to come forward on the stage. The second prize for poster competition goes to Rashi Fogart, ANDC College, University of Delhi. Do we have Rashi with us? No. So the first prize for poster competition goes to Hemant Singh Jeena, ARSD College, University of Delhi.
Let's move to our next competition. It was article writing competition organized for undergraduates, postgraduates, and research scholars. Okay, you are here. Rashi Fogart, second prize for poster competition. UG के बच्चे भी दौड़ के नहीं आ रहे हैं, बताइए. Rashi Fogart, ANDC College, University of Delhi. The prize money for second prize is 5,000 rupees and for the first prize is 7,500 rupees. So let's move to article writing competition. The third prize goes to Miss Surbhi Agarwal, undergrad, ARSD College, University of Delhi. And she is one of our volunteer also. The cash prize is same for all the competitions. The third prize is 3,500. The second prize goes to Mr. Atulya Rajvanshi, undergrad, Deshbandhu College, University of Delhi. Okay. So the first prize goes to Mr. Janvi Sanjay Sirshul, PhD, Pune University. I hope he is not with us in this hall. He is from Pune. It's Pune University. See, article writing and essay writing was online basically, so we received the entries online. It was not mandatory that people should come here. Anyways, congratulations to all the winners. Let's move to the next competition, essay writing competition, which was organized for the students of 9th class to 12th class. And we had a great participation over here. The third prize goes to Miss Anamika Bhattacharji, Vandana International School. The second prize goes to Miss Janvi Gupta, Vandana International School. The first prize goes to Miss Vaishnavi Magotra, Birla Vidya Niketan, Pushpa Vihar, New Delhi. ये स्कूल के बच्चे हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है इसलिए वो हमारे साथ नहीं हैं. तो हमारे ये जो उनके विनर्स की सभी अमाउंट है जो उनके प्राइज़ मनी है वो हम ऑनलाइन मोड से उनको ट्रांसफ़र करेंगे, सर्टिफिकेट्स भी और जो मोमेंटोज़ हैं वो भी उन तक पहुंचा दिए जाएंगे. अब मैं ओरल कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए डॉक्टर पंकज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आएँ. धन्यवाद अनु. सो अनु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये ओरल प्रेजेंटेशन में 19 पार्टिसिपेंट्स थे, 19 में एक एब्सेंट थे. और सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया और प्रस्तुति दी. और इट वाज ए टफ टास्क फॉर अस टू इवैल्यूएट देम. दे वर क्वाइट क्लोज. सो आई एम प्रेजेंटिंग अनाउंसिंग these results on behalf of my colleague who were part of evaluation process, Dr. Nidhi, Dr. Neeta, Dr. Indra Solania, and myself. So the third prize is tie between Ramya Krishnan and Dr. Anu Singh. Second prize is Dr. Smriti Bhatia. She is from Miranda House. She is professor of chemistry. And the first prize goes to
First prize goes to Dr. Trapti Kumari. I don't know college. Gargi College. Gargi College. She is from Gargi College. Delhi University, of course. That's it. Thank you. Thank you, sir. Please, for a moment more. I now request Dr. Puneet Mishra ji to please give a token of appreciation to Srimati Priyanka Chandra, our chief guest. A request to Dr. N. Madhavan to please give the token of appreciation to Dr. N.P. Shukla, please. Thank you, sir and madam, for doing the honors. Please. किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन व सफल आयोजन हेतु एक बड़ी टीम पर्दे के पीछे व आगे काम करती है और साथ ही अनेक लोगों का आशीर्वाद व सानिध्य प्राप्त होता है जो हमें प्रेरणा देता है. For formal vote of thanks, I invite Professor Rajiv Singh, Secretary, Indraprastha Vigyana Bharati. Professor Rajiv, please. Thank you, Namita ma'am. अरे बस करो यार, आप लोग ताली बजा रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी वाली स्पीच होती है जिसमें एक का भी नाम छूट जाए तो खुद को भी बुरा लगता है यार. इतनी मेहनत करी थी, मैं कैसे भूल गया. और ये वोट ऑफ थैंक्स वाला बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है. वो पूरे 5-6 पेज तैयार कर रखे मैंने. एंड वो किसी भी जब हम कोई म्यूचुअल फंड या शेयर लेते हैं ना तो उसमें एक स्टार का साइन होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है. तो मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मल में शुरू कर रहा हूँ लेकिन प्यार मेरा सभी को है. ठीक है, किसी का नाम भूल भी गया ना तो आई एम बिगनिंग विद अपॉलॉजी अगेन कि अगर मैं भूल गया तो प्लीज़ सॉरी. हो सकता है कि जल्दीबाजी में मैं भूल भी गया हूँ. राइट. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल आर पार्टिसिपेंट्स एंड being the means I'm supposed to give a formal vote of thanks, लेकिन before starting with the vote of thanks एक छोटा सा मैं एक रिपोर्ट भी, सिंस प्रियंका मैम इज़ ओवर हेयर, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी देना चाहूँगा. जैसे इन दिस कॉन्फ्रेंस वी हैड पार्टिसिपेशन, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. 12 स्टेट्स से अभी हमारे पास पार्टिसिपेशन आया था, वेरिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया के तो सारे ही स्टेट्स से आया और उसके अलावा बाकी जितने आप, मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा रिस्पांस था. सो वी हैड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट लाइक 12 डिफरेंट स्टेट्स. इसी के साथ साथ पहली बार एक एक्टिविटी जो अभी तक हम कहीं पे भी इनिशिएट नहीं की गई थी, दैट इज़ अ क्रेस्कोग्राफ असेंबलिंग एक्टिविटी done on the spot by 300 students. And it was a big activity. It was like, आज मैं घूम जैसे दौड़ भाग कर ही रहे थे तो एक बार गेट से बाहर निकल रहा था, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे और कुछ लड़कियां आपस में एक्साइटेड मोड में, अरे आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा, मज़ा आ गया हुआ. और तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके लेट्स टेक अ फीडबैक ऑफ देम. तो मेरे को वो चीज़ देख के तभी मैंने कुछ अपने ध्रुव प्रसाद जी एंड विष्णु कुमार जी से कहा कि भाई कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करो बिकॉज वी वांट अ रिस्पांस फ्रॉम देम. एंड मैम का भी हमेशा से ही ये डायरेक्टिव रहा है कि स्टूडेंट को और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े को हमें मैसेज पहुंचाना है, लेट्स हैव देयर पार्टिसिपेशन. तो वो जो पॉइंट इनका कहा हुआ है वो दिमाग में बैकग्राउंड में हमेशा चल रहा होता है और जब ऐसे प्रोग्राम करना होता है तो आपकी पॉइंट्स को ध्यान हमें बहुत ज़रूरी है रखना. इसी के साथ साथ अमित शर्मा जी का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा था, मैं बाद में बताऊंगा. इनका एक दूसरी एक्टिविटी भी रही, नाइट, ये अपना टेलीस्कोप वाला नाइट स्काई वॉच. ध्रुव प्रसाद जी ने उसमें बड़ा मदद किया.
ऐसे जो 2-3 एक्टिविटीज़ रही, इन्होंने आज हमारे पास थोड़ा फिर भी क्राउड कम है, लेकिन कल कितना ज़्यादा क्राउड था इस टाइम पे। आज कितने बच्चों को बेसिकली कल मैम आपको बताऊँ, कुछ बच्चे डिले हो गए थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत थे, एंड उनको यहाँ पे 9 बज गए, और कुछ के तो घर से भी फ़ोन आ गया। तो इसलिए हम लोगों ने आज काफ़ी बच्चों से कहा, गर्ल्स एटलीस्ट फीमेल कैंडिडेट्स को अगर आपको जाना है तो आप टाइमली निकल जाओ ना। तो इसीलिए आज मुझे पता है परसेंटेज भी कम है। इट्स बेटर दैट दे हैव गॉन, क्योंकि दूर दूर से लड़कियाँ थी, बल्लभगढ़ और आपके ये बहादुरगढ़ से भी एक लड़की थी, और वो 8:30 बजे कल यहाँ खड़ी थी। मैंने कहा तुम कैसे जाओगे भाई, बट शी हैड मैनेज्ड एनीवेज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माय थैंक्स गोज टू मैम प्रियंका चंद्रा जी। मैम हैं डायरेक्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपने सब देखा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, बट ये एक छोटी सी चीज़ है। एक होता है पर्सन की पर्सनालिटी, एंड दैट इज़ हर पर्सनालिटी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ डायनामिक पर्सन। मेरा जितना एक बार इनसे इंटरेक्शन हुआ है, मैंने अरविंद रानाडे जी के साथ में गया था, एंड मैंने तभी भाप लिया था दैट एनर्जेटिक पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू लीड सच अ प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल। उसमें एक थॉट प्रोसेस चाहिए। आपको अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए एक कहते हैं ना, एक एनर्जी चाहिए। कहाँ से किस किस सेक्टर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैम ने मुझे उस वक्त डिस्कशन में इतने सारे आइडियाज़ दिए थे कि आप इसके एडवर्टाइजिंग और एक जन भागीदारी वाला जो इनका कंसेप्ट था, कि जो आप जगदीश चंद्र बसु कर रहे हैं, आपने प्रफुल्ल चंद्र पहले किए, फिर जगदीश चंद्र बसु को अब आप हाईलाइट कर रहे हैं, बट द मैसेज शुड गो फ्रॉम द व्हाट कॉल द स्मॉलेस्ट किड, जो आपके जूनियर सेक्शन में स्कूल का बच्चा है, टू द एल्डेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। और इसी की हमने पूरी कोशिश करी, इसीलिए हमने जितने भी कॉम्पिटिशन्स रखे वो ऐसे रखे कि स्कूल का बच्चा भी इन्वॉल्व हो सके। और चाहे पीसी रे की कॉन्फ्रेंस रही या जगदीश चंद्र बसु वाली कॉन्फ्रेंस रही, 9th क्लास के बच्चे बहुत सारे अवार्ड्स जीत के लेके गए, इस बार भी आपने देखा। तो थैंक यू सो मच मैम, और आप ही के सपोर्ट एंड गाइडेंस में वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट, और आपका कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू विज्ञान भारती इज़ एवर रिक्वायर्ड। सो फिर आते हैं हमारे डॉक्टर NP शुक्ला सर। ही एज यू नो इज़ अ मेंबर ऑफ द व्हाट यू कॉल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली NCR। तो आप जितने भी ये देख रहे हो ना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, BS3 BS4 बंद है, वो सर ही करवा रहे हैं, ठीक है। और मेरी गाड़ी अभी भी बंद है BS3 डीजल आपने अलाउ नहीं करी है। सो एंड मैं बताऊँ, सर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट सपोर्टर फॉर आर इवेंट। जब PC रे का कॉन्फ्रेंस हुआ और अभी जगदीश चंद्र बसु वाला कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आप चाहते हैं कि एक पर्सन आपको गाइड करने के लिए प्रेजेंट रहे, एक आइडिया चीज़ चाहिए होती है, एंड सर्स व्हाट यू कॉल कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू अस। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर आपकी मदद चाहिए, एंड सर लाओ अभी आता हूँ मैं। सो और अभी भी सर हैड टू गो इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। मैंने कहा सर 2 मिनट रुक जाओ ना, कुछ नहीं होता। एंड व्हाट ही डिड वाज, इनको एक प्रेजेंटेशन या कुछ था, इन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया और कहते हैं आज मैं आपके साथ हूँ। ये अभी यहाँ पे बात हुई है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सपोर्ट आई बिलीव ऑर्गेनाइजर्स लाइक अस रिक्वायर, कि हम लोगों को एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप सपोर्ट करो, काम हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। देन माई थैंक्स गोज आउट टू डायरेक्टर IUAC डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे जी, अ कॉन्स्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट। जिस दिन से हमने पहली बार कॉन्फ्रेंस की विजनिंग की थी, डैट वॉज इन September, ही वॉज देयर इन दैट मीटिंग, एंड देन ही स्टार्टेड प्लानिंग आउट द थिंग्स, देन ही गेव अस द टीम। बीच में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद हमने स्पीड पकड़ा, एंड कोई भी मुझे मदद चाहिए थी, ही वॉज ऑलवेज देयर। Yesterday we heard his speech also, his vision also about this conference, what he wanted, and I hope we did, let's see what his response comes, but I think we did our level best. Then my thanks goes out to Dr. Arvind Ranade also, वो यहाँ नहीं है, आज महाराष्ट्र में है। वो मतलब he is a constant supporter, उनके बारे में तो जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। एक छोटे से वर्ड में अगर कहूँ तो हम ये जितना भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो अरविंद जी की ही लीड में कर रहे हैं। तो थैंक्स गोज आउट टू अरविंद रानाडे जी ऑल्सो। देन कम्स डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती के। मैं तो सचिव हूँ, लेकिन लीड करने वाले यही हैं। परमिशन इन्हीं की चाहिए होती है, सपोर्ट सर का चाहिए होता है, और जो सपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। हम जैसे यंगस्टर्स को काम, यंगस्टर्स तो पता नहीं अब कितने लोग मजाक उड़ाएंगे, स्टूडेंट मतलब मेरे जैसे लोगों को काम करने के लिए, ठीक है।
नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स खड़े ना, ये कितनी बार मजाक उड़ाया था मैं भूल गया, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी सर, आप थैंक यू सो मच, यू हैव बिन गाइडिंग सो मच। देन माय थैंक्स गोज आउट टू डॉक्टर एन माधवन ऑल्सो फॉर स्पेयरिंग योर इनवैल्यूएबल टाइम। सर आज इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, सर ने वहाँ से अपना समय निकाला है। इंटरव्यू बोर्ड में IUAC में बैठना इज़ नॉट स्मॉल थिंग, तो समय निकाल के आए सर, थैंक यू सो मच। देन किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, फ्लो करने के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अलग अलग सेक्शंस में हमारी जैसे भागीदारी है, वो भागीदारी हमारी रहती है, और हमारे पास देश भर से हमारे एक से चुने हुए इनवाइटेड स्पीकर्स, दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। और जैसा मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं कुछ को तो नहीं सुन पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं सच बोलूँगा कि मैं नहीं सुन पाया क्योंकि काम में लगा था, बट आई नो जो आप लोगों ने बोला दैट वाज परफेक्ट। मैंने कुछ लोगों को बाहर भी सुना। सो जिन्होंने कल की नोट स्पीकर दिया, डॉक्टर अर्चना शर्मा फ्रॉम CERN स्विट्ज़रलैंड, एंड मैंने उनको पहले भी सुना है, और मैं आपसे भी कहूँगा बिकॉज यू ऑल आर यंगस्टर्स, उनकी बहुत सारी टॉक्स हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। द वॉइस ऑफ द गैलेक्सीज ऐसे करके उनकी बहुत सारी टॉक्स हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड लिसन टू इट। और CERN के अंदर काम कर रही हैं, तो शी इज़ एन अथॉरिटी इन हर सेल्फ। माई थैंक्स गोज आउट टू हर। Then Professor Gautam Basu from Bose Institute, Professor Rajiv Tripathi from MNNIT Allahabad. He was here, I believe, just a moment ago. Yeah. Dr. Sibaji Raha, again from Bose Institute. Professor CM Nautiyal ji, Indian National Science Academy, he is over here. Thank you so much, sir. Then Dr. Manas Pritam Das, he was also here. I think he has to leave for Jaipur at 5:30. Okay, yeah, it's almost 6. He's from All India Radio, Kolkata. Then our chairpersons for all our sessions, Manish Kashyap ji, Ambu Sirpati sir from IUAC, Abhijit Sarkar ji from IUAC, Vibha Tandon ji from JNU, Madhav Govind sir, who is sitting over here, and our vice president also of Indraprasth. Thank you so much all. Then our reporters, thank you. The reporters are all our young students from various universities. Then a major thanks to our Vigyan Bharati Prant units. Ma'am, I would like to tell you, हमने इस प्रोग्राम की 4 आउटरीच प्रोग्राम्स किए थे। पहला दिल्ली के अंदर हुआ था IUAC के कैंपस में, दूसरा आउटरीच प्रोग्राम जम्मू में हुआ था जिसको विज्ञान भारती की जम्मू यूनिट एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने करवाया था। जो तीसरा हमारा आउटरीच प्रोग्राम हुआ था वो पुणे में हुआ था, पुणे यूनिट विज्ञान भारती एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फोर्थ जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम इस कॉन्फ्रेंस को लेके हमने किया था वो था विज्ञान भारती इंदौर यूनिट एंड स्कूल ऑफ फार्मेसी DAVV कॉलेज इंदौर। तो इन चारों यूनिट्स के मैं विज्ञान भारती प्रांत यूनिट के मेंबर्स एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, माय थैंक्स गोज आउट टू यू। देन एक मिनट, आई हैड एन ऑर्डर, या देन कम्स आर विभा लाइफ मेंबर्स, विभा volunteers from almost 6 to 7 institutions, ARSD कॉलेज, जरा ताली बजाओ। हाँ, दौड़ भाग करने वाले, डांट खाने वाले यही लोग होते हैं। अरे बस बस बस, ये सबसे तेज जो बता रहे फर्स्ट ईयर का है। तो ARSD कॉलेज, कालंदी कॉलेज कहाँ है? कम ऑन, जोर से। मैम ने पुनीता वर्मा मैम ने ही लीड किया है हमारी एंड में। जब हमने कहा रजिस्ट्रेशन काम पड़ा, मैम ने कहा रुको मैं बताती हूँ अभी देखो। बाद में हमें क्लोज करने पड़ गए, वो गुस्सा होने लगी कि यार तुमने मुझे कहा था बढ़ाने के, मैंने बढ़ाए तो अब आपने बंद कर दिए, लेकिन मेरी भी लिमिटेशन थी। तो देन वी हैड वॉलंटियर्स फ्रॉम मैत्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कितने मैत्री वाले यहाँ? चलो चली गई, अच्छा किया मैत्री के स्टूडेंट्स। बट आई कैन फाइंड वन गर्ल ओवर देयर। हाँ, मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। ठीक है। देन वॉलंटियर्स फ्रॉम ANDC कॉलेज, जोर से ताली बजाओ यार, यहाँ अंबिका नेगी जी लीड कर रही थी हमारी। देन वॉलंटियर्स फ्रॉम औरबिंदो कॉलेज एंड वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स वाले कहाँ हैं?
हाँ ये बैठे, वेरी नाइस। सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर चले ठीक है। देन कम्स आउट आर वॉलंटियर्स, जिन पे मैं बहुत गुस्सा भी होता था बीच में, मैंने क्या आराम से बैठे हो, बड़े हो गए हो। दैट इज़ फ्रॉम वॉलंटियर्स फ्रॉम JNU। उड़ा सर है, शाबाश। जितनी भी JNU की टीम थी, दे आर क्लोज बाय, दे आर ऑल यंग PhD स्टूडेंट्स, दे हैव रियली वर्कड हार्ड। आप स्टेज मैनेजमेंट जो देख रहे हो, JNU की टीम लेड बाय मनीष कश्यप जी के स्टूडेंट, राम सागर जी के, माधव सर के स्टूडेंट्स, दे वर ऑल देयर लीडिंग अस एंड हेल्पिंग अस आउट। सो थैंक यू ऑल। देन एक हमारे बीच में छूट गए, थैंक्स टू ऑल आर जजेस। जितने भी आप 4 कॉम्पिटिशन्स देख रहे हो, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, देन आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन, then comes out our essay competition and the oral competitions. Thanks to all our judges. I'm not disclosing your name. पता लगा कोई बाद में आप ही के ऊपर गुस्सा करे, मेरा नाम पढ़ा था फिर भी नंबर नहीं दिए। फिर ये शीट कंप्लीट हो गई, ये शीट भी हो गई। Then comes out our what you call the supporters from IUAC. That is Abhishek ji and Deepak ji, who has helped us out in the auditorium over here. And transport, we have Rajkumar ji. For reception, we had PM Bada ji, Vijay Patel sir, Ramcharan Meena ji, Indira ji, Mary and Mayank. Mayur, I'm sorry, Mayur, it's Mayur. Then in cultural, we had Abhijit Sarkar ji. In administration, we had support from Bishambar Dutt ji. And in accommodation, we had Usha ji. And हमारा खाना पीना पेट जो लंच आया वो राजेश जी, उन्होंने खाना पीना रहे। सबसे ज़्यादा ताली खाने पीने पे बजी है, और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वहीं से खुश हो रहे हैं। इससे पहले कि मेरी भी स्पीच से ओवर हो जाओ, बोर होने शुरू हो जाएंगे, बच्चे बहुत एनर्जेटिक वाले होते हैं। फिर आती है एक स्पेशल थैंक्स। सारे फॉर्मल थैंक्स हो गए, अब होती है स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने, मैं तो दौड़ रहा था और दौड़ने में जो फाइनली सपोर्ट करते हैं कि भाई आप दौड़ रहे हो हम भी दौड़ेंगे, और सामने वो मुस्कुरा भी रहे हैं सारे, उन सबको पता है कि कौन कौन है वो। ठीक है, सबसे पहले इंदिरा जी बैठी हैं यहाँ पे, अन्नू सिंह जी बैठी हैं, माधव सर बैठे हैं, अंबुज त्रिपाठी सर बैठे हैं, रात के 2:30-3 बजे भी मैसेज कर रहे थे। ठीक है, पुनीता वर्मा मैडम बैठी हैं, अभिजीत जी बैठे हैं, अत्री बैठे हैं, कपिल मोहन सैनी, मुकेश, नीचे अभी भी काउंटर पे रंजीत बैठा हुआ है। ठीक है, प्रियम बदा जी बैठी हुई है। मतलब इन लोगों ने, पंकज जी बैठे हमारे यहाँ पे, राजेश जी मेरा मन लगाने के लिए तो गप्पे मारने के लिए यही थे, और अंबिका नेगी जी। अब मुझे कंफ्यूज है, अंबिका जी को मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभा में काउंट करूँ या IUAC में, ये भी एक कन्फ्यूजन है। सो माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ध्रुव प्रसाद जी बैठे हैं, अमित शर्मा जी को तो थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोग्राम इन्हीं का करा धरा है। हिट, मैं बताऊँ, मुझे भी सजेशन कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी लोगों ने जब दिया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ इंक्लूड करो जिससे लोग खींचें। वो बोरिंग कॉन्फ्रेंस करवाते रहते, तो लोग सेशन अटेंड करते चले जाते हैं, कुछ तो नया ऐड करो। दैट वाज अ सजेशन दैट वाज गिवन टू मी, एंड द डे यू सेड कि ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, मैंने विदिन सेकेंड्स कहा था करेंगे, है ना। तो यही चीज़ का विजन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी हमारे जितनी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, हमारे प्रोग्राम्स होंगे, हम कुछ ना कुछ नया इवेंट और नया कोई एक्टिविटी, कोई पार्टिसिपेशन जिसमें मैक्सिमम पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें। अभी भी मैम सारा प्रोग्राम हमारा लाइव गया है 2 दिन का आपके YouTube चैनल और Facebook चैनल पे, और मैं देख रहा था कि एक हमारा जो लाइव था उसके ऑलमोस्ट 100+ शेयर्स हुए हैं। तो अभी मुझे उसका वो देखना है कि फाइनल काउंट कितना रहा व्यूअरशिप, दैट आई विल ट्रूली अपडेट यू। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सो फाइनली आई होप आई एम नॉट मिस्ड एनीवन, लेट मी स्कैन द ऑडिटोरियम। और एक नाम, हाँ वो पीछे खड़ा है, शुभम एंड आर सपोर्टर्स एट एवरी लेवल। शुभम एंड इस टीम, बबलू जी खड़े हैं और हमारे कैमरामैन टीम खड़ी है। इन लोगों के लिए तो मेरे को रात के 1 बजे भी अगर मुझे बुलाना होता था, देवर देयर, नो डाउट। ये पीछे नमिता मैम घर की हैं तो, कौन ये बच्चे खड़े हैं? ये बच्चे तो अपने ही हैं, ये बच्चे सारे, दे आर सपोज टू लर्न, दे आर सपोज टू वर्क हार्डर एट दिस मोमेंट। सो आई थिंक कोई बचा नहीं हो, एंड बच गया तो आई एम सो सॉरी। मेरी पूरी तरफ से कोशिश है टू कवर ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल, एंड इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम आई एम श्योर वी विल हैव मच मोर पार्टिसिपेशन। और हम कोशिश करेंगे
कि एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे हम पीसी रे से इस बार एक नेक्स्ट लेवल पे आए, नई एक्टिविटी लेके आए जो हमने पीसी रे में नहीं की थी, और आप कोशिश करेंगे कि हमारे बाकी जितने प्रोग्राम्स हों वो एक्टिविटी इन्वॉल्व हों। सो थैंक यू ऑल, नमस्कार। एक रह गया है। थैंक यू प्रोफेसर राजीव। थैंक यू ऑल। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य